and welcome everybody. My name's Inferno along with Edge, and it's gonna be Asia Bible chapter 3rd. And Edge, you're wearing the cap. It means that we are going to be witnessing chaotic matches today as well. But आप सभी लोगों का स्वागत है. Hope you guys are doing well. आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा हो. And आज ये जो Grand Finals का day number 2 है. Edge, you weren't at the desk yesterday. We were missing you because you know what happened yesterday? Team Secrets on the map of Rondo. They did a 39-pointer of a match. I mean, I wasn't on the desk, but I was definitely watching them perform out of their mind. I mean, we started off, the day number 1 started off with a double chicken dinner on the grand finals. And then Team Secret comes in and pulls off an absolute ridiculous of a match. Like, it's giving us hope. I mean, see, here's the thing. We have not really seen Rondo go in the favor of 4 Tribes or Team Secret in playoffs. And now coming into the grand finals, first game, 4 Tribes, well, the Tribe on that, and then Team Secret on the second one. Bonkers, man. That's all I'm going to say. It was a ridiculous performance coming in from them. So, overall, they now set the bar really high. But in terms of eliminations, I feel like everyone did a really good job on day number 1 of the grand finals. I mean, yeah, absolutely. That was the case scenario because पहले के 2 matches के अंदर 4 Tribes ने यहाँ पर chicken dinner लिया था and they were having good elimination points. But Edge, 4 Tribes, they were able to accumulate maybe 44 to 46 points in 2 matches. But Team Secret, they did that thing in 1 single match. Just imagine कि कितना ज़्यादा बड़ा एक threshold और benchmark यहाँ पर Team Secret अभी के लिए यहाँ पर set करके गई है. And I don't think so एशिया बारहवीं चैप्टर 2nd या फिर 3rd के फेज 1 में हम लोगों ने कुछ भी ऐसा विटनेस किया था. It is a record right now because having 29 freaking elimination, they needed just 1 more to do that 30 elimination point. It could have been a great number, an even number, but man, oh man, that was a hell of a match, and that was a great hell of a day as well on Grand Finals day number 1. So, हम लोग का start बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है. It's all about the consistency today, right, Edge? क्योंकि consistency रहेगा तभी आप लोग top 3 या फिर first जो आपका spot है वहाँ पर आप लोग maintain करके रख सकते हो. अभी के लिए यहाँ पर team 4 Tribes, they will be in the hype right now because they did take 2 chicken dinners. Then जो second team जो हमारे अंदर hype के अंदर रहेगी वो रहेगी Team Secrets. We wanna see देखिए Team Secrets आज कैसा खेलती है. देखिए Team Secrets का यहाँ पर जो गेम प्ले हम लोगों ने देखा है पिछले phases के अंदर, ग्रैंड फाइनल्स के अंदर या इस फेज के अंदर भी, वो शायद से सभी गेम्स अच्छा ना खेले बट एक ना एक गेम बहुत ज्यादा क्रेजी खेल के जाता है. Well, let's just see Edge, what's going to be the scenario because it's day number 2nd. The energy is high, the aura is electrifying. Let's see on the map of Rondo which team's going to be taking that chicken dinner. Yeah, I mean, as you said, after setting up a really high bar, the benchmark these players have already set for themselves, right? I mean, I'm not talking about other players or other teams. They've set this for themselves now. So Team Secret, the energy is definitely going to be high, and the expectations as well are going to be high now from us, for the audience as well. So the Team Secret, now they're under a little more pressure to perform the similar way. At least I don't want to say same. I mean, getting 29 every single time is a little harder, but maybe 20 eliminations is what we're expecting. But once again, we are in Grand Finals day number 2. It's been a long journey from here, and it's still a long journey from here on forward too. So why don't we take a quick look at the roadmap so you guys have a better understanding of how things turned out and how things will turn out from here. We started off with phase 1, started on 8th of January. That is the playoffs. 13th January is when we ended at grand finals. 14th to 17th of January. We have Flash be the one coming out on top. And now coming in, playoffs of phase 2. 18th January to 23rd of January. Well, today we're in grand finals, day number 2. 24th of January, that is yesterday, to 27th of January. That is day after tomorrow. That is when we will crown our new champion. Can Flash become a 2-time champion back-to-back? Or will BTR get a chance to do it, or will some other team come out on top? This time around, we'll wait and watch. Then, we're not done with the Chapter 3. It's Chapter 3 for a reason, which means we have 3 phases. 28th of January to 2nd of February, we'll have Phase 3 playoffs. And then, one last time in Chapter 3, we will have the Grand Finals from 3rd of Feb to 6th of February.
I mean, that's exactly the thing happening. Event drone map on our screens, and you did discuss about what we will be witnessing into the upcoming days and phases. So, top 16 teams, as we were talking about, two fan favorite teams in phase 2 and phase 3. That was the case scenario. But after this edge, I'm just super duper excited to see the overall standings. I want to have a recap with the audience as well कि कल के दिन के अंदर क्या हुआ था, कौन सी टीम्स टॉप 3 रहेंगी, कौन सी टीम्स अब पेज नंबर 1 पे है, या फिर कुछ टीम्स जो बॉटम पे है, सेकंड पेज पे और स्ट्रगल कर रही है. सो उन लोगों का कमबैक आज हम लोग देखने को बिल्कुल मिल सकता है. That is true. 4 days, 1 day is already done. You have 3 more days of action, so you will be expected to perform well, if not great, at least. But you need to have that consistency, right? It's not about being in the top 16 or top 18. No fan votes will be giving you an advantage anymore. It's all about being in that number 1 spot. As we have 18 teams that have qualified, we have 2K Esports, Team PANDUM, BLUG, BIGETRON by Vitality, the winners of Chapter 2, RQ, Team Flash, champions of Phase 1 Grand Finals, Team 52. Regardless of that winner chicken dinner yesterday, they're still at the bottom of the overall, which is kind of surprising if you ask me. SI Esports, T2K Esports, Alter Ego Ares. A lot of eyes because of Rosemary coming back into the squad. Alliance, the Xavier, Boom Esports, VOIN Esports, Team WARGAYE, Team Secret, DRS Gaming, and Fortress being the fan favorites. A lot of these, audience will be rooting for these 2 teams for sure. That's true, and these are the teams playing, and we do know that 2K Esports, Team Phantom, they play amazing, but especially I have to say Team WARGAYE, DRS and Team Secret, insane level of performance. But Edge, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं that Team BTR, Team Flash and Team RRQ, ये दो Indonesian team और एक Vietnamese team, they're struggling. In Asia Battle was chapter 2nd, and in phase number 1 we have seen Team BTR being the defending champions and Team Flash. So Edge, what do you think things are going wrong with those teams? Because we know that they are an amazing team and they are invincibly great, but right now the things are not bearing out good for them. It feels like day 1 it's fine. I think day 2 we will probably see a better performance coming in from them. Not just from them, from everyone as a matter of fact. I think day 1 they were still adapting and coming in with a game plan and how to take things forward. Now coming into day 2, day 3 and day 4, I think they're going to switch gears, and we will probably be witnessing some really good players coming in all of the maps, and from all of the players, as a matter of fact, I don't really think any team will be at a disadvantage this time. I think this grand finals is going to be much more chaotic than phase 1 grand finals. We've seen a couple of teams fall off towards the beginning of the grand finals last time, but this time it just feels like all of these teams they're ready to go, and they probably are not going to be coming down anytime soon. But that's exactly the case scenario we are witnessing, and after this, if I'm not wrong, we'll be witnessing overall MVP and overall rankings for one more time, and vote for your favorite team. अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर अपनी टीम को वोट नहीं किया है, so you guys can actually vote. But the thing is, Edge, ये वोटिंग्स का यहाँ पर भी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं है, right, Edge? So आप वोट जरूर कर सकते हो, बस but please make sure in your mind that the votings won't be compulsory in the grand finals. There's no real advantage here coming in the playoffs situation. You will help your team get promoted to the grand finals if they don't make it to the playoffs. If they don't make it to the grand finals, I'm sorry. But here, you don't really have that advantage going into this. But those numbers are already insane. 7,000 after day 1 is ridiculous. But yes, as we take a look at the overall rankings right now, we have 4 tribes on that top position at the moment with 63. 47 points for Team Secret, 45 for 2K Esports, 43 for Boom, along with DRS in 4th and 5th position respectively. BLUG on 39, Alliance on 38, 36 points for ASI 8 and Alter Ego Ares. Decent start, they're on 36 points. 30 of them are eliminations, by the way. Yeah, that's true, and these are going to be the old rankings of the first page, and Fortress and Team Secret, they are just totally dominating. I'd not say Team Secret dominating, they did dominate in one single match. After that, all of the matches, they were kind of a blunder thing, I'd say. But Team 4 Thrives,
the consistency, the patience, the strategy, they were everywhere, right? Everything was right for Team 4 Stripes yesterday. That's why they're having a great lead as well, Raj. They're having more than 15 points lead, which is really good, right? So 4 Stripes, the consistency is showing up, but the second page is going to be the where teams needs to be really careful. And second page is going to be the case जहां पर team सबसे ज़्यादा struggle कर रही है. देखिए अभी तक यहाँ पर VOIN esports, Team Flash, Team WARGAYE, Team RQ, Team PANDUM, Team Secret, not Team Secret, Team T2K esports, BTR and the Xaviers and Team 52. So especially Team BTR, the Xaviers, Team 52 and Team Flash, I don't accept them to be at the second page because they're struggling a lot. And Team Flash especially, they are the defending champions of phase number 1. They are. I mean, but here's the thing: 35 points, not that far away, if you ask me. So they probably can pick it up. Coming up. But as I said, the only thing that was surprising for me coming into yesterday's overall was 52 esports, even with Chicken Dinner being at the really bottom of the scoreboard. If they didn't get that, if they didn't really get those 10 points, they would probably be on like 18 points, which would have been a disaster for them. So in terms of points, they're doing well, but in terms of overall, 52 esports is still struggling. They need to pick up the pace and get more points coming into day number 2. Yeah. And VOIN, Flash, WARGAYE, RQ, PANDUM, TTK, PTR, Xavier, and 52 esports. This is the order of the overall rankings from 10 to 18. We'll be, witnessing some changes for sure here coming into this one. I think RQ might jump up a couple of players with the way that they were performing. Xavier definitely would not want to be in the 17th position at the end. And I mean, Team Flash, I think we are going to be looking at them make some moves with some flashy plays there for sure. I mean, that's right. They gotta be making some flashy moves, that is for sure. But Edge, we'll be having a look at the map rotation as well. And we gotta be starting off really strong on the map of Rondo. Which team it's gonna be? After वो क्या लगता है कि आज के दिन के अंदर Rondo के मुकाबले को पहले मैच में कौन सी टीम ऐसी रहेगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी? क्या वो रहेगी टीम 4 Stripes? क्या वो रहेगी टीम सीक्रेट? या फिर कोई एक ऐसी टीम जो सेकंड पेज पर स्ट्रगल कर रही है और आज के दिन के अंदर मे भी हो सकता है 20 से ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स और एक चिकन डिनर लेके जाए और पहले ही मैच के अंदर एक अच्छा किक स्टार्ट लेके जाए. बट एज इज जस्ट एन hypothetical situation. It's all words until unless it becomes a reality in the virtual world. So let's see what's going to be happening. First match, Rondo, what are your expectations and how you feeling today? Ooh, once again, expecting chaos. Rondo means chaos. To me, every time, that's what it means. Insane amount of eliminations coming up, some new strategies coming in, and I kind of want to see the teams are going to be adapting from that day 1 and also phase 1, right? Day 1, I mean, I get it. You don't really want to show all of your cards, but now coming up, you might want to be picking up the pace. You might want to get some numbers on the board and get the consistency going, right? It's not about having one good game once in a blue moon. It's always about getting that consistent performance, like how we've seen Flash in phase 1. They've been performing decently, top 3, top 4 every single time. Yes, they did have a couple of chicken dinners in the mix, but that's just the icing on the cake. The real dessert was the cake itself. That is the top 3 every single time. Yep. That's what Flash did. So any other team that can absolutely replicate that would probably be the one on top. If not, I mean, if someone can just perform like 4 Tribes, get a couple of chicken dinners, towards the start, and then perform decent on an average, I mean, that will work as well. I don't think anyone can, surpass you if you're getting a double chicken dinner pretty early into the game, especially one of them being Rondo, which means you have an insane amount of eliminations as well. And then you perform average, let's say 5 to 10 points every game. That's 60 as 4 Tribes did. And if someone's getting 60 per day, I think they'll get the number 1 spot there towards the end of the grand finals in the next 3 days. I mean, in brief, that's really true because we have seen Team Secrets taking, let's say, approximate of a 40-pointer, right? Let's just round off it. So, एक मैच के अंदर अगर आप लोग 40 points लेते हो और in an average मैं समझता हूँ कि एक टीम अगर कोई consistency से अच्छा खेल रही है, so they will be having maybe 15 plus points or maybe 10 plus points, right, Edge? And into the next one, they're choking. And they're not even able to capitalize a single point. So imagine those points will be get divided in 2 parts. I mean, if you were able to capitalize 40 points in single one, so just imagine that you were taking 2 chicken dinners in 2 matches, and I mean, it all got in vain. So
it did not work out. But let's just have a look on Rondo, because it's gonna be the first match, ladies and gentlemen. ये रहेगा Asia Battle Wars Chapter 3, Phase number 2, Grand Finals and Match number 7 अब तक का, but आज के दिन का सबसे पहला मैच. Will we see a similar domination coming in from Thrives and Team Secret? Or will it be a different game here? Will there be some other team stepping up and coming out on top? All of these questions will be answered in a bit. As we have the flight path coming down towards a long hole, there is a lot of opportunities for these teams to jump in. And there's 8. They're jumping in pretty quick. I actually thought they also might lean towards New York's factory, but that's not going to be the case. At the moment, no one really wants to go there. Danqing has been the other drop location for the side of Thrives at the moment. Let's see if that's where they also want to be headed towards Team Secret. Feels like Mehran could be on the cards here. BLUG going towards Minhun. So they're predicting the zone, I believe. But we already have a couple of eliminations coming in play immediately. A gunfight towards Ryan, top of the map. And well, top of the game at the moment is going to be ESA 8. 1 point for themselves. As they're facing BTR, is it? I believe it is BTR in the vicinity. And no, it's actually RQ. I see fire in there. So RQ will lose a player quick. But once again, it's Rondo, so you don't really need to worry about losing those players pretty early into the game. You can still go for that. Go for that recall. At the moment, towards the edge of the circle, TTK and DRS are fighting. Or is it BTR and DRS? Either way, DRS are going to be losing players. Player, maybe. Kilowite might get revived, and it is T2K and DRS. But also, look at the circle. Not a drastic change. There is still hope. Yeah. And DRS, they lost 2. Frag and Cyclone, they're gone. And now we can see a close range encounter की battle. Kilowite को भी यहाँ पे down किया जाएगा. XMPLZ is going to be the solo man standing edge. They are having 1 elimination. And यहाँ से best अपॉर्चुनिटी या फिर मैं बोलूँगा डिसीजन रहेगा. आई मीन अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलेगी या फिर नहीं, वो देखने वाली चीज रहेगी. बट द बेस्ट डिसीजन इज गोना बी रिकॉल. दैट्स ऑल. अपने यहाँ पे तीनों प्लेयर्स को जिंदा करें और दोबारा से यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर आए. बट देखिए पीछे से यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगी टीम Thrives, टीम फ्लैश, द डिफेंडिंग चैंपियंस. फाइनली हम लोगों को देखने को मिल रहा है आज के दिन के अंदर कि टीम Thrives अपने यहाँ पे डिजायर्ड ड्रॉप के ऊपर उतरेगी, जो रहेगी टेस्ट्रैक्ट और न्यूयॉर्क फैक्ट्री का रीजन. उससे पहले हम लोगों ने देखा है कि ड्रॉप क्लैश कर रहे थे टीम डीआरएस के साथ में. डीआरएस बात करते ही करते ये लोग हो गए एलिमिनेट. पता भी नहीं लगा. डीआरएस को द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैच. टीम पैंडम स्पॉट करेंगे यहाँ पर ज़्यूस को डाउन किया जाएगा एंड सीधा फिनिश ऑफ भी कर लिया जाएगा. बट आई गेस Thrives दिस इज द राइट पर्टिकुलर मूवमेंट टू स्ट्राइक इन. थर्ड पार्टी के यहाँ पर बादशाह और शहजादे माने जाते हैं टीम Thrives. ये देखिए जो चाह रहे हैं ग्रेनेड्स शायद से कनेक्ट बिल्कुल होंगे. बिल्कुल कनेक्शन लेकर जरूर जाएगा. बट इट्स नॉट इनफ टू गैदर द नॉकआउट. टीम पैंडम, यू गाइस डोंट नो राइट नाउ, अभी यहाँ पर आप लोग खेल रहे हो अगेंस्ट द न्यूयॉर्क फैक्ट्री किंग्स. एक और ग्रेनेड जाएगा उस पैनिक रूम के अंदर एंड आई गेस थोड़ा बहुत पीछे जाएगा. रिटेलिएट करेंगे टीम पैंडम. दे आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन. दे आर इन अ 4v2 सिनेरियो एंड आई गेस टीम पैंडम एक और प्लेयर डाउन हुआ तो शायद से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. बट नहीं, उस सिंगल प्लेयर ने एक प्लेयर को डाउन किया, 2 प्लेयर को शायद डाउन करने की दरकार रही थी. बट नहीं, टीम पैंडम दे आर गॉन. एंड नाउ फॉर दैट सोलो गाय, इट्स बेटर टू रन अवे फ्रॉम हियर गाय. You have to go and recall all the players. I guess he did that. That's a wise decision. That's the right play there as well. That's probably what you need to do, and that's exactly what they're gonna do. Get a lot of these recalls done, get your players back up, and then go for the fight again. I mean, you definitely can be coming up and take those, keep going for those engagements really early into the game, because you can get as many points as possible. You have 3 recalls, 4 recalls. I believe you can go for. If you time it right, that is, right? And also, if everything works out for you, if the one player that can still recall goes down, then unfortunately, you will not be able to go for that play. But at the moment, VOIN esports looks like they might be taking a bit of damage there. Potato is going to get taken down. VOIN immediately goes out. No eliminations at the moment, and DRS, unfortunate situation. I mean, I was going to talk about them, but yeah, I guess I have to put that thought on hold at the moment. We have Alliance and TTK. That's true, and TTK, one more Nepali team. Yeah, against Nepalis. These Nepali team,
और they're going to be playing alliances spot. यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा अजय, the solo man standing. 17 टीम्स और अभी तक यहाँ पर शायद से मैं बोलूंगा 60 प्लेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि रिकॉल 1-2 हो जाएंगे तो 60 प्लेयर्स की हम लोग की लॉबी दोबारा से देखने को मिलेगी. एक ही टीम यहाँ से एलिमिनेट हुई है जो है TRS from 18 to 17. But right now, alliances, they actually performed amazing into the qualifiers edge. I have to say, this team, they played really less matches, but no, that was so unfortunate. Team BTR, यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा जेटा, पीछे से यहाँ पर एक रिटेलिएशन नॉकआउट लेंगे BTR के ऊपर, बट BTR स्पॉट करेंगे जेटा को, बट वोइन esports के उस अकेले खिलाड़ी ने रिकॉल कर दिया अपने सभी के सभी प्लेयर्स को. सो शायद से कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उस टीम के लिए, यहाँ पर फाइट ले सकते हैं, रिकॉल उनके पास भी रहेगा. एंड ये जो ग्रेनेड है बिल्कुल मुंह पे जाके फटेगा, शायद से बहुत ज्यादा लोगों ने स्पीक करेगा प्लेयर को. फेडलेस आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते फियरलेस माइंडसेट के साथ में पुश करेंगे. जेटा इज स्टैंडिंग, बट ही गॉट बी रियली केयरफुल मैन, बिकॉज़ जेटा, oh, he gets one. BTR, the defending champions, क्या VOIN esports के अगेंस्ट इस टकराव में वो अपना स्पॉट लूज कर रहे हैं. बिल्कुल यहाँ पर जेटा, he was a solo man standing, रिकॉल अपने प्लेयर को किया था और वहां पे 3 प्लेयर्स को डाउन किया BTR के. SI8. Pritam will be getting one more. That's 4 eliminations now. Not done yet. Yeah, the fight between SI and BLUG probably might be coming into the favor of ASI8, and that is exactly how it's going to turn around. BLUG, on the other hand, there's just one player standing, and as you said, BTR also just have one. How long can he survive for? As we take a look at the players on the side of Boom and Alter Ego areas going against each other, both these teams in decent position on the overall at the moment. Alter Ego with 3 eliminations, Boom just 1 and 2 players standing. Can they go for the recall? You can see one of the players already going away there. Rhapsody, I think he's going to go for that recall immediately, but Maul is still holding on. Rosemary is here as well. Gotta be careful. Anytime Rosemary is in the vicinity, you gotta be a little cautious, because that's what he can do. That's another point. But Rhapsody survives, which means the recall should be coming into play. Yeah, and Boom esports, Rhapsody, the solo man standing, क्या यहाँ पर अपनी टीम को दोबारा से रिकॉल कर पाएंगे या अपनी जोन से यहाँ पर अलग जाते हैं, जोन से यहाँ पर अपोजिट जाते हैं, बिकॉज ही नोज यहाँ पर रिकॉल टावर जितने भी जोन के अंदर रहेंगे वो कैपिटलाइज हो चुके हैं प्लेयर्स के अगेंस्ट. सो Boom esports, can they actually come back in this game is got to be the question it. But Boom esports बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, एक भी छोटा सा गलती या फिर डिसीजन उनकी पूरी टीम को बाहर कर सकता है. पहले मैच के अंदर देखिए Boom esports का गेम प्ले जहां तक हम लोगों ने एनालाइज किया है, शुरुआती इनिशियल बैटल के अंदर बहुत ज्यादा पैसिव खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, ट्राई करते हैं चिकन डिनर लेने का. सो वही यहाँ पर उन लोगों का गेम प्ले एंड प्ले स्टाइल रहेगा एज, व्हिच इज रियली गुड, राइट? आई मीन नथिंग रॉन्ग विद दैट. इफ यू गाइस आर चेंजिंग योर इनिशियल बैटल गेम प्ले, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? क्योंकि Boom esports हम लोग को पता है बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टीम है. यहाँ पर एग्रेशन भी दिखाते हैं, एग्रेस भी करते हैं, और अगर वहां पर उन लोग को स्लो भी खेलना है तो वो भी खेलेंगे. बट 4 tries on our screen with 3 elimination points heading towards to the zone. Really quickly as well. They're gonna be feeling really confident at the moment. Hand them on 2. WARGAYE, I mean, in terms of eliminations, they're also doing good. But in terms of position placement, they need to survive a little longer, and they try to accumulate those points as well. Because once again, it's not just about the elimination points, or not just about the position placement. It's about the balance that you need to find between both of them. And at the moment, as we talk about them, they actually do get taken down on the kill feed. You could have seen that. WARGAYE did lose a player, unfortunately. 2K Esports were the one dropping them down to a 3-man squad at the moment. Still pretty early with just under 10 minutes, and WARGAYE might be taking a fight against 2K. I'm not really a big fan of this. They're split up, right? That's exactly why. Here's the thing. If that's split up, you might go for 1, maybe 2, but you're giving away free elimination points to the other team. Yeah, and Team WARGAYE कल के दिन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस थी. टीम 52 यहाँ पर टीम 52 esports एंड टीम WARGAYE, इन लोगों की जो रिटेलिएशन बैटल है, इन लोगों का जो रिवेंज है, हमेशा चलता रहता है. इन दोनों ही टीम्स के बीच में जो टकराव है कभी रुकने का नाम नहीं लेगी एज. एंड नाउ वी कैन सी द 10-minute pointer, the 10-minute marker
we're about to hit, and we still lost one single team, which was DRS, but team WARGAYE, it's going to be in the next team. Maybe we are going to lose, क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन के अंदर ऐसे ही इनकी गाड़ी घूमती रही तो शाका बिल्कुल डाउन होंगे, उनको भी डाउन किया जाएगा. एंड डाकू, he is the solo man standing. अगर यहाँ पर इनको रिकॉल भी करना है तो आसपास यहाँ पे रिकॉल टावर नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो उन लोगों को टीम सीक्रेट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड टीम सीक्रेट्स हम लोग को पता है अभी यहाँ पे सेकंड स्पॉट में ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर. कल के वन के अंदर रोंडो का मुकाबला क्या ही कहना था. एंड एज anything to predict here is really hard because these teams, all of them, they're giving their best. We saw there were 59 players into the lobby into the previous one. Now we can witness 63 because they're going for the recalls. But जो ये जो रिकॉल का फीचर है, बस एक ही बार प्लेयर्स एंड टीम्स यूज कर सकते हैं अपने एक प्लेयर के ऊपर. जल्दी जल्दी से ये रिकॉल भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे. उसके बाद में क्या रहेंगे? उसके बाद में तो सिर्फ गन पावर, रोटेशन, कंपाउंड होल्डिंग एंड रॉ गन पावर की बात आएगी. बट टीम सीक्रेट्स राइट नाउ दे स्पॉटेड द टीम ऑफ द ज़ेवियर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या that is indeed the true strength of the Xavier. That's where their strength lies, and that's what they need to focus as well. But at the moment, 52 esports, 6 eliminations. Team Secret, on the other hand, after an amazing performance yesterday on the map of Rondo, hoping to see more of those domination. BTR, on the other hand, didn't really get a chance to perform in Phase 1 Grand Finals, but here they have a really good chance to get that title back from Flash. And maybe take us into Phase 3 and win there too. But at the moment, we have the side of the Xavier on the verge of getting eliminated. 2 players really low. Russell's already gone. And they're feeling the heat. Alliance might just take these 2 players down, and then they have to go for the recall. It's not looking good for the Xavier here, and that's not something I was hoping to see at the start of the day, especially towards the grand finals. As they do lose John Torres, it's only oh no, now it's even scarier because both of those players were really low, and they were between Alliance players. And WARGAYE, in the meanwhile, will not be accumulating even a single point on the map of Rondo. That is a disaster. That is a disaster indeed. Because Edge, I was talking about the same thing. WARGAYE might be the next team getting eliminated, and वही चीज हम लोग को देखते हुए मिली, क्योंकि आगे यहाँ पर टीम सीक्रेट्स गेट कीप कर रही थी. उसके बाद में यहाँ पर रिकॉल करने के लिए कुछ टावर्स नहीं थे आसपास. उन लोगों का लास्ट सिनेरियो हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालाइज किया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड. बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बारी 2K esports को, एक और इंडोनेशियन टीम, क्योंकि पिछले फेज के अंदर यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. बट नेक्स्ट फेज के अंदर, फेज नंबर 2 के अंदर, फाइनली यहाँ पे प्लेऑफ्स के अंदर कोई भी गलती यहाँ पर इन लोगों ने नहीं करी. एंड उसके बाद में वी हैव सीन देम रियली गुड. एंड हम लोग यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं उन लोगों को आते हुए एक ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. बट यहाँ पर टीम फ्लैश spotted the team, the Xaviers का भी यहाँ पर शायद से आगमन हो जाएगा, और देखने वाली चीज रहेंगे. That is such a flying car right there. That was such a funny POV to watch from side of Zeus. And अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 elimination points हम लोग के पास में रहेंगे. That's all. But Team Flash, Dobbs, शायद से उन लोगों का रिकॉल नहीं है यहाँ पे. Edge, they are down to 3 man now. Tops, unfortunately, getting taken down pretty early into the game. Flash, with only 2 eliminations, you will be expecting a lot more. I mean, you can't really take this team out of the equation until they're actually out of the equation. So we'll be hoping to see more of them. At the moment, they are circling the perimeter, just holding on to their positions towards the edge of the circle, as they are up to 4 now, as Vika drops another. Team Secret, on the other hand, 1 elimination. That's it. This game, it feels like once again they're starting the day on a much more passive note before they actually get their engines warmed up, and then they might become the war machine that we know them as 52 esports. Even after the chicken dinner, their position on the overall is not really that good, and they definitely need to have some good games here and have a jump to that towards that top 10, top 12 at least, before making to the top 1. Because once again, remember folks, this is the grand finals. Now, the only thing that matters
is #1 spot. At the moment, 4 thrives. And well, they will lose a player there, unfortunately. By RIQ, but 52 Esports holding on to their ground. Still, that could be a fight breaking out. ASI 6 eliminations. They're up to 42 now on the overall. Exactly, and now we can see SIT Sports 7 एलिमिनेशन के बाद में ये एक और पाकिस्तानी टीम आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए, बट यहाँ पे टीम ब्लू को स्पॉट किया है, एंड आई गेस ब्लू के कुछ और प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा। बिल्कुल, टीम ब्लू ब्लग ई-स्पोर्ट्स दे लॉस्ट 3, एंड इसके बाद में यहाँ पर उन लोगों का क्या सिनेरियो रहेगा और कैसे कमबैक करेंगे इस वाले मैच के अंदर। उनको रिकॉल का सिस्टम भले ही है, बट क्या उन लोगों के पास पे रिकॉल है या फिर नहीं है? देखिए, सोलो मैन स्टैंडिंग बचे थे टीम ब्लू ई-स्पोर्ट्स के। मौला को यहाँ पे डाउन कराया जाएगा एंड ही जस्ट गॉट एलिमिनेटेड एंड दे आर गॉन फ्रॉम दिस मैच। एक बार हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे टीम 52 ई-स्पोर्ट्स आज शायद से यहाँ पर कहर मचाते हुए, बट टीम अल्टर ईगोस एंड शायद से वो टीम लोग ये सामने रोज़मेरी एंड क्रिप्टोन की जो जोड़ी है क्या कर पाएगी या फिर नहीं? एंड आई गेस टीम अल्टर ईगोस दे आर गॉन। टीम एई दे गॉट caught in off guard एंड ओपन सिनेरियो, बट यहाँ से जो क्रॉस फायर की सिचुएशन है, जो कंडीशन है, बनते हुए बूम ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर रैप्चर सोलमन स्टैंडिंग थे सक्सेसफुली अपनी टीम को यहाँ पर इस मैच के अंदर दोबारा से लेके आएंगे और चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा रहेंगे। टीम T2 के ई-स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे एज यहाँ से टीम्स एलिमिनेट होती हुई इस मैच की जो स्टोरी लाइन है अब और भी ज्यादा क्योटिक रहेगी, क्योंकि रह गई शबाल चैप्टर 3 एंड दिस इज ग्रैंड फाइनल्स। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने जा रहा है। इस मैच का आगमन बहुत ज्यादा अच्छा, बट कौन यहाँ पर इस चिकन डिनर को लेके जाएगा? मजीद प्लेयर्स यहाँ पर अभी तक जिंदा है। देखिए 49 प्लेयर्स, क्या यहाँ पर कुछ और रिकॉल्स आ सकते हैं? टॉप 13 टीम्स एंड 1 विनर। Boom surviving with 4 yet again, now holding on. But those were some quick eliminations. Squad wipes, if you may, coming in. T2K, Alter Ego, both of them getting taken out. Didn't really expect Alter Ego to go down this early into the game, to be really honest. Coming in. Once again, he's not done. He's not done with the domination. He's dealing a lot of damage. The confirmations and finishes are getting into the hands of K2. But wait a second, the retaliation is not from 52. It's from Flash, who will be joining the party, and they might be able to get some more elimination. Look at that. The grenade is not going to be connecting onto anyone, but the zone might be enough to take down. Oh, maybe not. Maybe not. Maybe not. Z9. He gets taken out, and Crypto is the only one standing right now. He will be good for those two there as well. He doesn't really need to make any play, but Paku will survive at the moment. Does he have the recall? That we need to wait and watch. But ASI are down to 1 player now as Alliance and Team Secret. Both of these teams are targeting Xavier at the moment, and they are struggling. Xavier, they will lose another one in the meanwhile. Boom, Rhapsody, and Maul trying to maybe 4th party the fight, but they're in the center. They're in the open stage 5 circle coming into play. These uneven grounds, they're using that as cover at the moment. But once they get spotted out, those grenades can actually rain on them, and they might just get buried in the same pit that they're in right now. Exactly, बूम ई-स्पोर्ट्स 2 एलिमिनेशन लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन टीम 4 स्ट्राइप्स का भी आ रहा है। किल फीड के अंदर नॉके ने यहाँ पर डाला गया एक प्लेयर को डाउन, एंड शायद से नॉकआउट भी यहाँ पर डाला गया है 4 स्ट्राइप्स की तरफ से, बट नहीं, बात करते ही करते शायद से टीम एलिमिनेट हो जाएगी। टीम 4 स्ट्राइप्स यहाँ पर बार स्पॉट पे लेके जाएगी, एंड एसआईटी स्पोर्ट्स 2 पाकिस्तानी टीम्स एक साथ यहाँ से एलिमिनेट होती हुई। और आज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम सीक्रेट्स उन लोग के लिए सबसे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी इस मैच के अंदर चिकन डिनर ले और पहला स्पॉट ले टीम 4 ट्राइब्स को यहाँ पे डिथ्रोन कर सकते हैं। टीम 4 ट्राइब्स दे आर इन द डेंजरस स्पॉट राइट नाउ। कोसा से एलिमिनेशन आ चुका है फर्स्ट मैच के अंदर। टीम सीक्रेट्स जो टीम सेकंड स्पॉट पे है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर वो अभी भी जिंदा है। सो टीम सीक्रेट्स, इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम, इट इज येट अनदर मैच टू गैदर maybe 25 plus elimination points. Now, I'm not talking about the chicken dinner. I'm not talking about the total points. I'm talking about 25 elimination. Let's see Team Secrets. Can they do it again? 25, it's a bit hard if you ask me. 20, maybe yes. Because if for 25 they need 19 more out of what? 29. That's a tough ask if you ask me. But for the next 14, I think it's doable. Once again, it's not impossible. 25
it's gonna be a little harder because now all of these teams are actually are trying their best to go for as many eliminations as possible. Once again, everyone's main focus is being on that #1 spot, being at the top of the scoreboard. As we have PANDUM Hull 2K on the side of 2K Esports taking down another player on the side of RIQ. They're not having a good time here. They're dropping down players like flies. As RIQ is down to just one more player standing. He's not gonna be out for long. He's gonna get taken down. 10th position, 2 eliminations. RIQ gone. 20 minutes, 9 teams and 29 players here. Now, Team Secret still on 6. That's exactly what I'm talking about. They can't really get it up to 25. Maybe 20, but let's see. 20 is still a decent number, and if they get the chicken dinner, that's another 30 bomber, and Team Secret might just surpass 4 tries as they're already gone out of the picture. This is a really good opportunity. 13 points away, and this is the time for them to do it, because once 4 tribes get that pace, get that momentum, I don't think you can stop them. जी बिल्कुल एंड अभी ऑडियंस आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड देख सकते हो तो जाइए जल्दी से आके स्कैन करिए एंड यहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो गिव अवे के अंदर। चलिए मैच के ऊपर दोबारा से बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम फ्लैश द डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रॉम फेज नंबर 1 एक प्यारा ग्रेनेड यहाँ पर जियोस ने किया एंड टीम पीटीआर के ऊपर कहर मचाते हुए 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन किए तो गए थे बट टीम फ्लैश क्या यहाँ से टीम अलायंस इसको नॉक ऑफ करके फिनिश ऑफ कर सकते हैं या फिर नहीं वो देखने वाली चीज रहेगी। एंड नाउ वी कैन सी दैट टीम 2K Esports 3 एलिमिनेशन ही है बस इन लोगों के पास में है। ये जो इंडोनेशियन टीम है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई डोमिनेशन यहां पर आता हुआ एंड फ्लैश बोस की तरफ से टीम फ्लैश द डिफेंडिंग चैंपियंस दे आर बैक। यू गाइस वर मिसिंग टीम फ्लैश राइट? दे आर हियर विद द डोमिनेशन। 17 numbers are insane. They were what, 7 minutes ago I believe, and now they're up to 7 freaking teams. We gotta be careful though. Bose is bleeding. Rika on 8. Every time in the grand finals, Rika steps up. And this is one of those games that once again, Zeus is on 6, Bose is on 3. Tops unfortunately did not get anything done this time around, but they're still holding on to their position as Dimsy will take down one of the players inside of VOIN as PANDUM. They get up to 3 now, and Bose is back on his feet. So now Flash are going to be as scary as ever with those 3 players. Alliance, on the other hand, will be eliminated on 9th position with 5 elimination points. Not a great start, but not a terrible one either. Wika hits the deck. Leleboy is gonna get taken down. He's gonna burn. I believe to a crisp. He is gonna get taken out, and there you have it. BTR on con. Flash, they're not done. 18 is what they're at right now, and BC, that is VOIN. They are holding on to their ground at the moment, putting the screws to the players inside of 2K. But these grenades are going to be raining in. 23 minutes almost into the game. 16 players still here. I'm sorry, VOIN Esports. Will they be able to capitalize is the question. There, with just 1 player standing, as Zeta also hits the deck. This is going to be scary for VOIN Esports. Ooh. Exactly. टीम सीक्रेट्स यूके यहाँ पे डाउन हो चुके हैं शायद से उनको रिवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन टाइम अभी हो सकता है क्योंकि बूम ई स्पोर्ट्स के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यमी बहुत ज्यादा अच्छे कुछ ग्रेनेड्स और यूटिलिटीज का यूज करते हो बट बूम ई स्पोर्ट्स के ऊपर अगर एक सिंगल ग्रेनेड आया सो आई विल से दे आर जस्ट गॉन। बूम Esports they gotta be really careful क्योंकि यहाँ पे जिस लो रिच के ऊपर जिंदा है यहाँ पे बहुत सारा स्प्रेज आ सकते हैं थर्ड पार्टीज यहाँ पर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा रहेंगे। ये जो इंडोनेशियन टीम है यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ टाइम को डील करते हुए देखिए बूम Esports एलिमिनेशन भले ही ले ली है टीम सीक्रेट्स के ऊपर यहाँ पर नजर बिल्कुल रहेगी। VOIN Esports एक और इंडोनेशियन टीम यहाँ से बाहर होती हुई या डाउन टू ऑफ टीम्स यमी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। सोलमन स्टैंडिंग बॉल इनको भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा इनको भी यहाँ से बाहर किया जाएगा। द इंडोनेशियन टीम्स आर रेनिंग सुप्रीम एंड एक और इंडोनेशियन टीम को बाहर किया इस वाले मैच से down to top 4 team secrets they are having 10 elimination points but team flash you guys know audience team flash के पास कितने elimination points है they are having I guess 20 or maybe 18 they'll touch 20 for sure I saw it क्योंकि last time उन लोग के पास में 18 elimination points थे। we'll be having a look on team flash as well edge but they're surviving with 2 team secret they are having a better advantage I'd say so उन लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा unstoppable बनते हुए team secrets के जेरस क्योंकि पता है रोंडो का मुकाबला है तो शायद से कुछ और नए शहजादे इस मैप के ऊपर जुड़ते हुए देखिए 4 ट्राइब्स यहाँ पर रोंडो के मुकाबले पे भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट जिस तरीके से कल यहाँ पर टीम सीक्रेट्स ने खेला वो कंसिस्टेंसी दोबारा से यहाँ पे टीम सीक्रेट्स दिखा रही है। यही कंसिस्टेंसी तो चाहिए थी टीम सीक्रेट्स को और शायद से
एक बार हम लोग जरूर नजर डालेंगे टीम फ्लैश के ऊपर, क्योंकि एज दे आर हैविंग ग्रेट नंबर ऑफ एलिमिनेशन पॉइंट्स एज वेल माय फ्रेंड. The number of eliminations coming in from all of these teams and all of these players is ridiculous right now, and it's already a great start to the match, great start to the day. And as I was talking about, you know, Flash with their consistency, they're in the top 4 already. Insane amount of damage dealt by Vika, insane amount of damage dealt by Flash as a team, and the number of eliminations that they have, well, it speaks for itself. For now, we'll be taking a look at Team Pandum, who might be in trouble because trying one of the MVPs on the side of Team Secret will be putting the screws to them, and Pandum is the only real struggle that they do have. It's a real competition at the moment. It's a 3-man squad. Everyone else is 2 and 1. Team Secret, their advantage, might be able to get another one if they do take down Dimsy there. Team Secret might just be on a roll at the moment. Team Flash holding on to their ground, making their way into the circle. Stage 7 coming in with 1 minute on the clock. Everyone's got to be careful. Exactly, Team Secrets. क्या यहाँ पर दरकार रहेगी इस वाले मैच के अंदर, और अभी हम लोग को पता है इन लोगों की जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहेगा वो रहेगी टीम पैंडम. देखिए यहाँ पर टीम पैंडम के तीनों प्लेयर्स अपने पैरों पर कदमों पर दोबारा से खड़े होते हुए, ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर. ये मैच टीम पैंडम के लिए देखने के लिए अच्छा तो हो सकता है, बट मैं बोलूँगा डिसेंट मैच रहेगा अभी के लिए. यहाँ पर टीम सीक्रेट्स एंड टीम फ्लैश, इन दोनों टीम्स को यहाँ पर एलिमिनेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये टीम्स रहेंगी टेबल टॉपर्स. टॉप 3 टीम्स के अंदर यहाँ पर ये लोग आती है. एंड यहाँ पर हम लोगों ने देखा टीम सीक्रेट एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर आता हुआ, एंड दिस इज जस्ट इनसेन. 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स लिए, और देखिए टीम पैंडम को दोबारा से यहाँ पर प्लेयर्स को स्प्रे लिया जाएगा. एज 1 ग्रेनेड ऑन टीम पैंडम. आई गेस दे आर गॉन, बट दे आर फार अवे. They are far away from the proximity. I just want to have a look on Team Flash, what they are doing right now. They are kind of far. They need to make their way back in. But it's stage 8 circle as well. Keep that in mind. Which means this is the last stage. After this, there will not be any more circles left. Everyone will have to come out in the open with 10 players still standing. ESPORTS are going to be at the meta disadvantage here, but that player can actually capitalize. He's already done a great job surviving up until now, getting some more extra points, crucial points for the side in terms of placement. Can he get a couple elimination points is the question. Pakyu, I believe, is the player standing at the moment, and we all know from where he was alive. He did survive that fight against VOIN, I believe. No, it was ASI 8. Yes, it was ASI 8, and ever since then he's still surviving, holding on to his dear life. At the moment, Trang, I believe, he's still holding, you know, the angle towards the Pandum players. And stage 8 is coming into play, and I don't think anyone's making a move. So stage 9 it is, the final circle. In the next 40 seconds, and we will have a fight to the death in the next few. That's true. Team Pandum. देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लेने के बाद में यहाँ पर उनके पास में कुछ नहीं है. एंड थैंक यू प्रोडक्शन फॉर लिसनिंग मी, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि टीम फ्लैश यहाँ पर क्या कर रही है. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उन लोग के पास में 20 एलिमिनेशन पॉइंट्स रहेंगे. अगर चिकन डिनर निकाला तो 30 पॉइंटर का ये मैच हो सकता है, बट देयर इज इफ एंड बट्स. वहाँ पर वो जो अगर वर्ड ज्वाइन कर सके तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है अभी के लिए, क्योंकि उन लोग के पास में नंबर्स नहीं है. टीम 52 का वो जो अकेला प्लेयर जिंदा है अभी भी तक एज, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशंस ला सकता है टीम फ्लैश के ऊपर, क्योंकि आई डोंट थिंक सो टीम फ्लैश को यहाँ पर अभी तक इंफॉर्मेशन है या फिर इंटेल है कि टीम 52 का प्लेयर उनके बैकएंड्स में सर्वाइव कर रहा है. सो कभी भी स्प्रेज आ सकते हैं. ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट पर्टिकुलर मोमेंट टू स्ट्राइक इन. कभी भी यहाँ पर प्लेयर्स को देखेगा अपने वल्नरेबल टाइम में स्प्रेज लेना स्टार्ट कर देंगे टीम 52. सो दे गॉट बी रियली कॉशियस, क्योंकि उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. टीम पैंडम के प्लेयर्स को स्पॉट किया, एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन किया जाएगा, बट टीम 52 दैट सोलो मैन स्टैंडिंग, ही विल बी द मेन person, the main character in this fight between Team Flash and Team Pandum. He definitely is, and he's gonna get taken down. There you go, the stage 9 circle, dealing a lot of damage. 58 was gone, Pandum's gone as well. It all comes down to a 2v3 situation between Flash and Team Secret. The monsters on the map of Rondo. What is the monsters in every map, to be really honest here, Flash, with the last 2 players, Zeus and Bose. Can they capitalize and convert this 2v3 into a chicken dinner? Team Secret are gonna be
they're going to be careful for sure, but they do have a lot of utilities to work with none on the side of Flash. Team Secret clearly have the advantage in terms of manpower, clearly have the advantage in terms of utilities, but I do see a grenade being cooked. Jaiki is going to get taken down. All of a sudden, Team Flash now equalizing the scenario with a 2-2 situation. एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन कर दिया टीम फ्लैश. व्हाट यू गाइस आर अप टू? मैंने स्पेकुलेट किया था कि चिकन डिनर शायद से टीम फ्लैश के हित में आ सकता है, बट ये जो फाइट है इस 2v4 को यहाँ पे 2v2 के अंदर कन्वर्ट किया. उसके बाद में एक 2v1 फाइट बन चुकी है. देखिए अगर टीम फ्लैश यहाँ पर 4 प्लेयर्स को डाउन कर सकते हैं तो एक प्लेयर को क्यों नहीं कर सकते. और इसी के साथ में टीम फ्लैश लेके जाएगी चिकन डिनर. They are back. You guys were missing Team Flash. You guys were missing their domination. You guys were missing tops, verse, everyone. They are here, back again with a bang. Edge. Team Flash, I told you, you can never take them out of the equation until they take themselves out of the equation. 2 players surviving till the end. Those 2, I mean, they were enough to take down everyone there. They were on 3 elimination with 3 players standing, and then towards the end 20 plus eliminations. Ridiculous performance coming in. Flash to start off the day. What a start and what a confidence boost this is going to be for them going into a few games. We have 5 left after this, but Flash, well, congratulations, winner chicken dinner it is. I mean, indeed, there we have it, Edge. Let's just have a look at the match highlights as well after this, because Team Flash, they are back in circuit. Because I was missing that team, because I know they're having a great command, I'd say. They're having a great flow throughout the whole Asia Battlegrounds chapters here, and it's just yet another match for them. And they were having 22 plus elimination points, and they're having 33 or plus 33 points. We'll be having a look in the match rankings as well. Let's just have a look on Team BTR and match highlights, because they started off really strong. SIT Sports CB fight में बोलूँगा बहुत ही बखूबी तरीके से और लास्ट में तरीके से ली थी. यहाँ पर ग्रेनेड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे थे, यानी स्पेशली मैं बात करूँ प्रीतम की, दाद देनी पड़ेगी इस प्लेयर की. यहाँ पर एस्ट्रल के जिस तरीके से यहाँ आजकल चला रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और यहाँ पर कहर मचाते हुए. यहाँ पर टीम 52 they caught off guard Team Ultra Egos in the open scenario. They were trying to rotate, but that wasn't the case scenario. Team SIT Esports 7 eliminations यहाँ पे लोगों ने लिए थे, but it wasn't enough, man. क्योंकि उसके बाद में उनका elimination भी आया. क्लस्टर के अंदर यहाँ पे स्पॉट हो गए थे. Team Flash, this fight against Team BTR, I just सबसे ज़्यादा important थी, क्योंकि जो गेट कीपिंग सिनेरियोस इनके अगेंस्ट है वो यहाँ पे खत्म ही हो गए थे. फिर उसके बाद में all they had to do it was just to gather that zonal advantage, right? Prioritize करना था. Team Flash, it was just a beautiful play. And यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर Team Secrets के अगेंस्ट फाइट लिया, but Team Secrets मैं बोलूँगी यहाँ पर ओपन के अंदर आया वो जो 1v1 फाइट थी वहां पर शायद से बहुत ज्यादा बड़ी गलती रही उन लोगों की तरफ से. एंड टीम सीक्रेट्स दे मेड श्योर, आई मीन सॉरी टीम फ्लैश, दे मेड श्योर टू टेक दैट चिकन डिनर एंड उस अपॉर्चुनिटी को, उस ओपनिंग को यहाँ पर कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट किया. सो एज यू कैन सी the immense level of elimination points they are having. It is just insane, man. They are just beast unleashed. 23 points, and in total they are having 33 freaking points in the in the match rankings and overall rankings. If I'm not wrong, they're taking the 2nd spot. What do you think, Hedge? They might as well. I mean, with these numbers, they're definitely going to be making a very insane jump on the overall. And well, the MVP is not going to be anyone from their squad. It's going to be Xeros with 10 eliminations on Team Secret, which is quite impressive. Wait, how many eliminations did the entire team have? Did it have like around 10? So you're telling me Xeros is the only one single-handedly carrying the team at the moment? This is ridiculous. No, 13, 23. They were having, I guess, 14. So Xeros did most of the job, I'd say. That is still, yeah, exactly. That is still an insane number if the team's not having 20. But yeah, 1300 damage. Once again, 30 minutes of survival time, 6 knocks, 361 heal, and well, he was leaning towards those body shots. But regardless, he is going to be the MVP with 10 eliminations coming in from the side of Team Secret. But other names will be there, and I'm pretty sure it's all Flash. There you have it, 887. You can't really beat them. Zeus with 1329 damage. Rika with 1250 damage and 8 eliminations as well. Bose towards the end, 862 damage and 7 eliminations. It was just about Flash towards the end. They were the ones coming out on top, and it was kind of inevitable to have them here in the top 4 players, which means they're definitely going to be one of the teams
to watch along with Team Secret, which is not very surprising because it is Rondo. Exactly, and these are the top four players into the previous one. Insane level of performance, I'd say, and especially Zeris, he just totally owned the lobby. Zeus, Vika, Flash, Bose, they played amazing, man. I mean, insane. But now we can see three of the players from the single team, which is Team Flash. Isn't it just amazing? It's amazing indeed. Team Flash. This is the kind of gameplay that helped them get the Phase One championship. This is the kind of gameplay that helped them, perform the way that they do. Not just in this tournament, but in all the tournaments. Globally, one of the scariest team. And well, if they keep playing like this, they might just be the scariest in no time. At the moment, Team Flash, 23 eliminations. I mean, they're one of the teams to watch for sure. Team Secret, 13 eliminations as well. So 10 of them belonging to Zeros is insane. 52 Esports on 11. Great performance by 52. If you ask me, compared to their yesterday's performance, they ended up with 17 eliminations, starting off the day on with 11. That is impressive. VOIN, on the other hand, 8 eliminations as well. But in the midst of all this, there's one more team that has absolutely, caught my attention and has improved immensely from phase one playoffs. It is Team WARGAYE. That's true. I mean, टीम वॉर गए. I have to say उन लोगों की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक रिमार्केबल रिकवरी और कमबैक दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा उमदा. बट एक बार हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे हमारी मैच समरी के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा 101 टोटल एलिमिनेशन, 7 grenade elimination, 3 airdrops were looted, and longest elimination coming in from the side of Team Flash. So isn't it just a deja vu, because we can see Team Flash players just reigning supreme everywhere. Yeah, here there's Vika once again with the longest elimination. 101 total eliminations coming in. Just an amazing matchup here. Not ridiculously high numbers in terms of eliminations, but it's still decent. So almost 14,000 here and down there as well. But yeah, I mean, this is the match summary for you, and we will be taking a look at the match standings. Now coming up, we will see Flash, of course, with a 30 bomber. They're 33 points for them. As Team Secret, they have 19. 52 Esports, good start. If you ask me, 15 points for them, as PANDUM are going to be happy with the 10 that they get. VOIN on 9 along with ASI 8. Could have got more, to be honest. 6 for Boom. 2K Esports on 6 as well. BTR on 5 along with the Lions. Alter Ego, unfortunate situation for them on the map of Rondo with only 4 T2K Esports. 4 tribes this time with only 3 eliminations. No position placement points. Will not be as happy as yesterday. They did get 2 chicken dinners back to back at the start of the grand finals. RIQ with 2, 1 point for BLUG, DZB, DRS. WARGAYE, I mean, I was just praising them, but I was talking about their overall performance, right, in the phase 2. But yes, this is a 0 point game for them, but I'm expecting better performance coming into the next one. As we talk about the overall rankings, I was scared that might happen, and well, 4 tribes are dethroned once again by the Kings. Yeah, this is gonna be the overall rankings, and now we can see Team Flash taking and decimating everywhere. They were at the 3rd spot, and now we can see them just ranking up on the 1st position of the overall ranking. Edge, these are the matches. This is the intense level I just talked about in Asia Battle with Chapter 3rd, and finally we can see it happening. So Team 4 Tribes and Team Secrets, they are gone. They are not having that spot anymore. Team 4 Tribes, can they reclaim the 1st spot again? It's going to be the question. But Team Secrets, Team 2K Esports, Boom Esports, ASI Esports, VOIN Esports, DRS, and Team 52 Esports, the match is not over yet for you all. What you guys are waiting for? Make that comeback happen into the next upcoming one. But let's just have a look on the second one. PANDUM on 43, Alliance on 43 as well, BLUG on 40, along with Alter Ego on 42. 42, by the way, that is, not 42. But yeah, RIQ on 36. WARGAYE, if they would have gotten any point, they would have actually equalized the score with RIQ. But regardless, they're on 35 right now. BTR, we're still waiting, 34 points. T2K on 34 too. Xavier on 30. So you can see it's not a lot of difference between these teams at the bottom. But the teams at the top, they are running away with the lead. But these teams here, they still have a really good chance to capitalize and maybe catch up to those top contenders.
Yeah, the overall MVP right now, it's gonna be Team Flash Win, gonna be joining the spot. Already goes Rosemary, Team Secret Zedis. I mean, he has to be there because one single match and 10 elimination points. First stripes Noki, and WARGAYE Rage gonna be joining the spot on the 4th and 6th, I mean 5th spot. But let's just have a look on the fan favorite team right now. Audience, you guys there, you can vote for your favorite team. But now we can see 4 stripes and DRS there. They're totally dominating. I mean, we know they are the universal teams in the overall, I'd say, fan favorite team. But let's just have a look on the winner. Congratulations to the person making that royal pass yours. जाइए जल्दी से जाके आप भी अपने यहाँ पर PUBG मोबाइल आईडी को खोलिए और देखिए रॉयल पास आपके पास में रहेगा. सो जाइए जल्दी से जाके उस elite रॉयल पास गिव अवे, I mean रॉयल पास को अपना बनाइए. एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि आप लोग रॉयल पास गिव अवे के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देखिए, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे चैट सेक्शन के अंदर. नाइट बॉट आपको यहाँ पर एक लिंक देगा, आप उस लिंक के ऊपर टैप करना. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट. वहां पर एक इमेज रहेगी और उसी इमेज के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से. ठीक है, उस इमेज के ऊपर टैप करना एंड आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वहां पर लिख देना. एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पोस्ट इट. उसके बाद में यहाँ पर अपना रियल नेम और PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी अपने आंसर्स के साथ में बहुत बिल्कुल प्रिसाइसली लिखा. कोई भी यहाँ पर गलती नहीं रहनी चाहिए इन सारे स्टेप्स के अंदर. एंड दैट्स इट. जस्ट वहां पर आप लोग जैसे अपना कमेंट पोस्ट करेंगे, देन बूम, यू जस्ट मेक योरसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द गिव अवे. एंड आप लोगों को लग रहा तो फॉर श्योर आप लोग यहाँ पर इस गिव अवे के अंदर जीत पाएंगे. एंड एज हमारे पास में यहाँ पर हमारा पहला गिव अवे का विनर है. 5 और मैचेस बाकी है, सो 5 और नए यहाँ पर विनर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे आज के दिन के अंदर. सो एज, what the audience are waiting for, go and participate yourself for the giveaway right now. That is true. Every matchup, every chicken dinner, we will have one new winner for the Royal Pass. So that is something for the audience, and thanks for voting in as well. Once again, keep in mind, no real advantage for the teams and the players that will have the the highest number of votes. So it all comes down to the gameplay. It all comes down to the number of points that they can accumulate going into this one. As we take a look at the map rotations, Rondo, this was an unfortunate turn of events for a lot of these teams, especially if you ask me. I mean, Team Secret, they were alive with 4 players towards the top 3, top 4, as a matter of fact. And then they were they were alive with 3 players. And then, Flash, doesn't matter. Even if they have 1 or 2 players surviving, they always have a chance to get that chicken dinner. And with those 2 players, they convert that disadvantage into a tasty chicken dinner. Well, can they capitalize? Can they keep the consistency going? Can they hold on to that number 1 spot, or will it be 4 tribes once again stealing and getting that number 1 position back to themselves? Or can it be Team Secret, because they're not that far away either? जी हाँ, बिल्कुल. और ये रहेगा हमारे दिन का आज दूसरा मैचअप. एंड आप सभी लोगों को एक बार मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जाइए जल्दी से आके मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. क्योंकि टीम one for one esports का यहाँ पर ये जो चैनल है बहुत ही ज्यादा क्लोज है 42K सब्सक्राइबर्स के. सो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट वन. बट एक बार हम लोग मैच के ऊपर दोबारा से वापस आते हैं, क्योंकि देखिए इरांगल है, वो जो नॉस्टैल्जिया रहता है ब्लड लाइन के अंदर हमारे, वो दोबारा से फ्लो करता हुआ. सो हम लोग को पता है जो फ्लाइट पाथ है लिपोव से स्टार्ट रहेगी, लिपोव से, और कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस आइलैंड फेरीफेयर प्रोमोस के रीजन से यहाँ पे पास थ्रू करके यहाँ पे वाटर बॉडीज के अंदर खत्म हो जाएगी. देखिए, जिस भी टीम को यहाँ पे मिलिट्री बेस नो बोर्डर में जाना होगा, सो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी. बट ये जो फाइट है यहाँ पर फेरीफेयर क्वेरी और प्रोमोस के रीजन के अंदर, ये जो यहाँ पर एक क्लस्टर बनता है टीम्स का, वो देखने वाली बात रहेगी. बट लिपो के अंदर वी कैन सी 2 teams just making that 4v4 fight happening edge. So एक बारी टीम में प्लेयर्स गई, so they won't be having any sort of things because the recalls are not here. It's not Rondo. The recalls are not going to be coming in, of course. You're definitely right about that. And the circle is going to be interesting as well, centering towards the Yesnaya region, and we will be taking a look at that region. But unfortunately, we will not be having a Phase 1 Classic this time around. We will be taking a look at Alt Vigo and T2K towards Lipovka. I mean, I really love how Alt Vigo sometimes just drop in really early into the map. They've already lost Krypton here, so they got to be careful. And now, no Maona here as well. This is going to be a little scary for Alter Ego. It's turning out to be a little too scary, if you ask me. Now there's only 1 player left, Snape, against 2 players though, so he can actually capitalize and put it off. But can he be able to go for that revival? That is the question. He can't afford to drag this fight out
and let them take those players down. And Rosemary is the most important one and is gonna get taken out. And Alter Ego is now on the verge of losing another player. Maharani might go for the revival. Smart play coming in from T2K. And well, Snape's position at the moment is unfortunate. I think he's also gonna be able to go for the revival, but I think Mimi understands this and he's going in immediately. That will not be letting him have a good time or an easy time. At least at the moment, the revival will be coming in. Grenades not available, which means the revival will come up, but he has to go out now. He has to go back. There you go. He understands that he's been spotted. His position's been compromised. TDK still with the advantage. S1686 in the hand against the DPS in the hands of Snape. Gotta be careful for the jumping shot. The amount of time you've seen that at this point is ridiculous. As it all comes down to the last 7 players inside of all 3 areas. He's gonna get taken down as well. Mimi! Beautiful plays coming in, and T2K, they take down the big ones. All 3 go, they're gone. Pretty early into the game too. हाँ बिल्कुल एंड यहाँ से नेपाल से एक और पहली टीम जो रहेगी DRS गेमिंग की यहाँ पर RQ के अगेंस्ट टकराव में आती हुई यहाँ पे मुश्किलात से इन लोगों को भरना पड़ रहा है और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम RQ हालांकि यहाँ पे इन लोगों का एक प्लेयर डाउन तो हुआ है बट DRS के यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को डाउन किया मैं कुछ तो नहीं बोलूंगा एक्चुअली यहाँ पे 3 प्लेयर्स को डाउन किया साइक्लोन सोलो मैन प्लेयर रहेंगे मैं जानता हूँ कि DRS यहाँ पे क्या गलती रही है वो 1v1 करके फाइट्स लेना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया टीम RQ उस चीज का एडवांटेज यहाँ पे उन लोग के पास में रहेगा एंड DRS दे लॉस्ट देयर स्पॉट यहाँ से DRS के यहाँ पे जिंदा रह पाएगी या फिर नहीं यहाँ पे साइक्लोन क्या इस एस्ट्रल के को लेके कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स ले पाएंगे या फिर नहीं एस्ट्रल की स्काल रहेगी हाथ में प्रैग्नोस एंड पता है प्लेयर्स यहाँ पर आगे की तरफ आ तो रहे हैं बट साइक्लोन एक भी छोटा सा गलत मूव एंड ही इज गॉन स्पॉट यहाँ पर शायद से कर लिया जाएगा स्पॉट बिल्कुल किया एंड देयर वी हैव इट कोई भी यहाँ पर गलती नहीं की जाएगी एंड DRS गेमिंग एक और रहेगी टीम जो होती हुई एलिमिनेट अल्ट्रा ईगोस के साथ में We started with 18 teams edge and now we are down to 16 and I guess Erangel के ऊपर जितने भी यहाँ पर 4v4 फाइट्स के अर्ली कमोशंस होते थे वो सब खत्म हो चुके हैं अब इसके बाद में जोन जैसे ही चेंज होगा जो रोटेशंस होगी तब हम लोगों को शायद से कुछ फाइट्स देखने को मिलेंगी बट अभी के लिए एवरीथिंग इज जस्ट लुकिंग डेड साइलेंट टू मी I also do feel a little sad that DRS is having 2 bad games now in a row. This is not a great start for them, not just in the map but also in the day. It is just turning out to be a disastrous of a start for the side. I mean, yesterday they did good, they did decent, but today it just feels like DRS is not having a really good time. But yes, their counterparts from the same region, T2K, they're picking up the pace. They're taking down some big names and they're picking up the pace for sure. So holding on to, the dreams, they're coming in for the Nepali region, now carrying the weight on their shoulders. Let's see if they can get any more points. They already got 4. That's a really important 4 too. Flash at the top, 40 at the top, Team Secret at the top. 68, 66. Not a lot of difference between those two, and they gotta be careful. All 3, as a matter of fact. It will come down to 1-2 points towards the end, and you definitely don't want to be, anywhere at a disadvantage. You don't want to be the team that almost won phase 2. Especially with 1-2 points difference. BIGETRON by Vitality. Their chance to defend their Chapter 2 title. By winning phase 2 and phase 3, that is, of course. Then they can say, yes, we won, 2/3 of the Chapter 3. At the moment, phase 1, champions, Flash. They're at the top. But it's still pretty early to call anything. It's still very, very early. We're still in day 2. Game 1 is done. That's it. We still have 2 more days of action after this. And today's action still left. So around 17 matches still. I mean, including this one, of course. So a lot of opportunities, a lot of these teams are going to be having. A lot of changes we will be witnessing on the overall. But if someone's playing consistently well, they might secure the #1 spot and keep it that way. I mean, that's true. So it's all about the consistency. We always do talk about that thing because consistency is just not a word. It is just a class now. It is an art.
So देखते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर कौन सी टीम परफॉर्म करती है। एंड आज के दिन के अंदर यहाँ पर मैचेस बहुत ज़्यादा शानदार, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुकाबला देखा रोंडो के ऊपर। एंड टीम बीटीआर एक और इंडोनेशियन टीम्स की यहाँ पर अगेंस्ट शायद से फाइट के अंदर आ सकती है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जेवियर्स की भी टीम आ चुकी है। सो मल्टीपल टीम इस रीजन के अंदर हुई, जो फाइट्स यहाँ पर कन्वर्ट होंगी बहुत ही ज़्यादा इंसेन। आई एम जस्ट सुपर डुपर डिलाइट टू सी द फाइट्स कमिंग अप इन। But Edge, let's see which team is coming on top and taking that chicken dinner happened. But Team Flash, the defending winners from the previous phase and the previous match as well. Let's see if they can actually, get more points going into this one. As Russell is out in the open and bleeding, the Xavier will be retreating. They will lose another player in the meanwhile. Zantaran gets taken out as well. So BTR, they've lost one. Then they want revenge. They don't want to give this up at all. The Xavier will survive with just one player. BTR showing exactly what will happen if you mess with them and don't take them down completely. Boom, though, on the other hand, might be going in for this fight. Yemi, I think, has scouted the players of BTR. They're ready for this immediately, going for the retaliation. They're immediately going for the fights. As the Xavier, the last surviving player, I believe is just going to be playing for the position points. Is surviving for as long as possible now. जी हाँ बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक दफ़ा वॉइन ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी, क्योंकि एक बार अगर हम लोग यहाँ पे नज़र डालें वॉइन ई स्पोर्ट्स के ऊपर, सो कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पे इन लोगों के पास में नहीं रहेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इन लोगों की प्रॉक्सिमिटी और इन लोगों के जस्ट सामने हम लोग देख सकते हैं टीम सीक्रेट्स को। सो एज हम लोग को पता है टीम सीक्रेट्स दे आर जस्ट परफॉर्मिंग आउट ऑफ देयर माइंड। सो अभी भी यहाँ पर अगर टीम सीक्रेट्स का अगेंस्ट फाइट्स लेना चाह रहे हैं, सो देखिए ईजी नहीं होगा, क्योंकि जो टीम है बहुत ही ज़्यादा इंसेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दिखा रही है कुछ अच्छे मैचेस से, या फिर कुछ मैं बोलूंगा दिनों से। सो टीम सीक्रेट्स व्हाट दीस गाइस आर अप टू, देखते हैं ये जो 4v4 की बैटल है कब कन्वर्ट होती है। बट सोंदारा के ई स्पोर्ट्स के यहाँ पर नॉकआउट लेंगे टीम फ्लैश के ऊपर, सोंदारा के ऊपर भी यहाँ पर नॉकआउट हो चुका टीम 52 ई स्पोर्ट्स की तरफ से। सो द थर्ड पार्टी सिनेरियो इट हैज बीन देयर। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी स्टार्ट हो गई, क्या यहाँ पे वीका का रिवाइवल हो पाएगा या फिर नहीं, एंड मुझे नहीं लगता। टीम फ्लैश का वो जो खिलाड़ी है वो ओपन के अंदर नॉकआउट पड़ा हुआ है, शायद से बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, बट ये जो रिवाइवल है इट इज पॉसिबल। It is possible they can revive that single player of Team Flash. What do you think, Edge? Can they go for it? Yeah, I guess they're going for that one. I think they want to keep those numbers up as much as possible, and I think the revival will be coming in immediately. Do they have a smoke to work with is a question, and looks like the answer is gonna be no. As Vika will be taken down. Hulk 2K coming in with the Scar will take him down. Unfortunate situation, but Flash, they will be a little disappointed with that, but they'll take it. It's okay. They still have 3 players standing, and they did pull off a beautiful match last time with 3 players standing with no recalls there too. And yet again, we will be taking a look at the rest of the players. Let's see how they perform, as Team Secret is up to 67, 66 points for 4 tribes. So these numbers are getting closer and closer and scarier for all of these teams. But 4 tribes, the one good thing is they do have an extra player. Yeah. And to the audience watching right there, देखिए अभी यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है, इस मैच में भी यहाँ पर हमारे गिव अवे का विनर पुल आउट होगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक गिव अवे के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल इजी स्टेप्स रहेंगे। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। और यू हैव टू डू इट, जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे, या फिर आप लोग पिन कमेंट देख सकते हो चैट सेक्शन के अंदर। टैप ऑन द लिंक, आप लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट करोगे एक ब्राउजर के ऊपर, वहाँ पर एक इमेज रहेगी और उसी इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर करना है और यू हैव टू डू जस्ट टैप ऑन द इमेज। फिर उसके बाद में आप लोगों को अपना रियल नेम और इन गेम करेक्ट आईडी, पबजी करेक्ट आईडी बिल्कुल सही तरीके से लिखना, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं चाहिए। एंड देन जस्ट सबमिटेड, एंड वहाँ पर जो अपना कॉमेंट है पोस्ट कर देना, एंड बूम, बाय दोज इजी स्टेप आप लोग यहाँ पर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे। सो प्लीज जल्दी से जाइए अभी आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, गो राइट एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे एंड अभी जाकर पार्टिसिपेट करिए। So let's just come back to the matches. You can see Team Flash यहाँ पर उन लोगों के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, उन लोगों के पास में यहाँ पर 2 प्लेयर्स और भी रहेंगे, बोज एंड टॉप्स। व्हाट डू यू थिंक एज, क्या यहाँ पर टीम फ्लैश चिकन डिनर ले पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि वी नो अगर यहाँ पर टीम फ्लैश का एक भी प्लेयर जिंदा रहता है, सो वहाँ पे एक सटल चांस रहता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है टीम फ्लैश जिस तरीके से आराम से कामली यहाँ पर सोलो प्लेयर्स या फिर डुओ प्लेयर्स के साथ में खेलती हो, जिस तरीके से चिकन डिनर लगाती है, इट्स जस्ट ऑल आर्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, आई एम आस्किंग यू, कैन टीम फ्लैश पुल द चिकन डिनर विद डुओ वुमन स्टैंडिंग? I mean, the answer is yes, with 2 players standing.
but the chances are looking, grim at the moment. देखिए जैसे आपने बोला कि फ्लैश दे कैन पुट इट ऑफ, 2 प्लेयर हो या 3 प्लेयर हो या 1 भी प्लेयर हो, देयर इज ऑलवेज अ रियली गुड चांस. बट जिस तरीके से बाकी टीम खेल रहे हैं ना, आई हैव अ रियली bad feeling that maybe टीम फ्लैश उनका चांसेस अभी थोड़ा it's going down the drain at the moment. But at the moment, once again, key word is at the moment. If other teams fight off against each other and they're down to, let's say, a 2-man, 3-man squad, then probably Team Flash might have a good chance. At the moment, boom, VOIN, ASI 852, 4 Tribes, PANDUM, BLUG, WARGAYE. There's so many teams with 4 players standing. And as good as Flash is, if one of these teams take a fight with Flash at the same time, वो 2 player शायद कम पड़ सकते हैं. And that's true. They might get actually overwhelmed because of those numbers, right? So बहुत सारी teams यहाँ पर आज के दिन के अंदर अच्छा perform कर रही है, as you were talking about. That's true, right? And team WARGAYE, I have to say this पाकिस्तानी team, इनका भी यहाँ पर बहुत ही प्यारा एक recovery आया है. Elimination यहाँ पर आता होगा Alliance का, और देखिए जो zone है, ये जो zone है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेल के जाएगा feelings के साथ, क्योंकि जो players और ये जो यहाँ पर IGL से इनके सर दर्द हो जाता है ऐसे zones देख के. जो hardships आते हैं शुरुआत में, ये जो बेटा है zone का बहुत ही इंसेन अभी के लिए हमको हम लोग को देखने को मिलेगा. मेंशन के आसपास यहाँ पर हम लोग को जो जोन देखने को मिल रहा है, एक बार हम लोग जरूर मिनी मैप के ऊपर दफा एक बार आप नजर डाल देंगे. बट टीम आ रहा क्यों, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पर डालते हुए लॉकआउट होते हैं. टीम 4 ट्राइब्स यहाँ पर पहला एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन यहाँ पर मिलेगा. नॉकिंग लेके जाएंगे एक एलिमिनेशन IQ के साथ में, और यहाँ पर पैंडम को स्पॉट किया. पैंडम एक और टीम जिनका एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मैच था रोंडो के मुकाबले के ऊपर. टीम 4 ट्राइब्स यहाँ पर पिछले मैच के अंदर यहाँ पर एलिमिनेट हो गई थी बहुत ही जल्द. क्या यहाँ पर टॉप 3 या फिर चिकन डिनर की दरकार लेके रहेंगे या फिर नहीं? देखिए टीम 4 ट्राइब्स उनके पास में हवर कार भी है, सो एडवांटेज है, अच्छे व्हीकल्स है, रोटेट करना इजी रह सकता है. सो टीम 4 ट्राइब्स एंड एवरी अदर टीम इन द लॉबी, दे आर फुल एंड पैक्ड विद द रिसोर्सेज. इट्स ऑल अबाउट द माइंड प्लेस, इट्स ऑल अबाउट द गेम प्ले इनकमिंग. वो जो रॉ गन पावर है वो कैसी रहेगी. टीम WARGAYE ने स्पॉट किया टीम ब्लू esports को, यहाँ से जो रोटेशन चल रही है दोनों के टीम्स के बीच में, दरकार तो आनी है टीम ब्लू esports व्हाट्स गोइंग टू बी, क्योंकि ब्लू यहाँ पर स्पॉट करेंगे. एंड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिटालिएशन स्प्रे यहाँ पर आता हुआ लियोन की तरफ से. डाकू मेरे को लगा था वो एक जो खिलाड़ी है WARGAYE का डाउन कर सकता है, बट शाका बहुत ज्यादा लो है HP के ऊपर. एंड आई डोंट थिंक सो ही कैन एक्चुअली मेक इट हैपन. वो जो मॉली है शायद से कनेक्ट जरूर नहीं करेगी, बट ये जो सोलो मैन प्लेयर है इनकी HP बहुत ज्यादा कम. एक भी बुलेट मैं बोल रहा हूँ M416 की तो बहुत दूर, शायद से पिस्टल की भी लग जाती तो डाउन हो जाते हैं. वही चीज हम लोग को देखने को मिला है. There's one more team gonna be saying bye bye from the lobby. The Xaviers, they're surviving with single Solomon standing. Yes, Naya के पास ये जो zone में shift होता हुआ. This is getting more and more intense now. Ooh, insane spray. Ooh. Chances though for the side of Flash now. Okay. Maybe I shouldn't talk. I shouldn't talk about them. Divert, guys. Please, give us some other team. They're taking damage, boss. One elimination. That's about it at the moment. They're on 69. 4 tribes on the other hand. They are with 68, and we're leaning towards Yasnaya Poliana. So zone is now coming in to where usually Flash drops in and where they usually get a really quick fight. Unfortunately, we don't see that anymore. But at the moment, it feels like 4 tribes might just be able to get that number 1 spot back in their favor, as VOIN, on the other hand, might be capitalizing on the last 2 surviving players instead of Flash, and they might get taken down here. They might. Team Flash, oh no, Team BT, the defending champions from Asia which after second they are gone. इन लोगों का जहाँ पर ये जो फासला है यही पे खत्म होता हुआ. मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर, और यहाँ पर टीम फ्लैश जिस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे यहाँ पर बरकत कर रहे हैं. यहाँ पर हो सकता है शायद से चिकन डिनर आए, बट T24 OP यहाँ पर डाउन होंगे. नॉकी की तरफ से रिटालिएशन आता हुआ टीम 42 के अगेंस्ट ये जो फाइट चल रही है, जो भिड़न चल रही है उस टीम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट यहाँ पर रहेगी. टीम 4 ट्राइब्स का हालांकि एक प्लेयर डाउन, और शायद से उन लोगों ने एलिमिनेट किया यहाँ पर टीम 52 को. डोमिनेशन यहाँ पे नॉकी लेते हुए, और फाइनली यहाँ पर वो जो 2 पॉइंट्स का गैप था उसको फिल किया,
और वो लोग लेंगे पहला स्पॉट और अपना स्पॉट दोबारा से रिक्लेम करेंगे। टीम फोर्स ट्राइब्स, देखिए गेम अभी तक ओवर नहीं है क्योंकि हमारी जो टॉप 5 टीम्स है वो अभी भी अलाइव है और ये जो गेम है ये सिर्फ और सिर्फ अभी टॉप 3 टीम्स के बीच में बना हुआ। 2K esports और टीम सीक्रेट्स के बीच में जो 10 पॉइंट का गैप है ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप रहेगा। बट देखिए टीम 2K esports, उन लोगों के पास में टीम सीक्रेट्स से ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स है। क्या टीम 2K esports इस मैच के अंदर चिकन डिनर ले पाएंगे? क्या वो टॉप 3 के अंदर आ पाएंगे? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट टीम फ्लैश फोर्स, ये स्प्रे, इट वाज एन अमेजिंग वन। हैट्स ऑफ, मेरे को दाद देनी पड़ेगी टीम फ्लैश के बारे में। भले ही यहाँ पे 2 प्लेयर जिंदा हो, इनका जो सर्वाइवल गेम होता है, इनके जो सर्वाइवल इंस्टेंस होते हैं, दे आर टॉप नॉच। Surviving right now is not gonna, be enough for them because at one point they might just get taken down. They're dealing damage, good, but the knocks, the finishes are still not in their favor yet. They will still take some time as PANDUM. Oh no, it's actually Boom and PANDUM. Both of them tag team in with the help of Flash there as well. They will take down VOIN. So now Flash have made it to the top 10. Top 9, in fact. As Force Drives are up to first position now once again with those 6 eliminations coming in. D2K, D Xavier, PANDUM, SIA, Boom, 2K, Team Secret, Flash, and Force Drives are the only ones standing. D Xavier, with only one player, we've seen that escape that fight and then just survive. I believe the fight was against BTR, who, by the way, have been eliminated. So that one player is going to be happy with the position that he has, but he needs more. He still is not going to be getting any elimination points or any position points, and 4 tribes का player यहाँ पे down हो जाएंगे unfortunately. Maharani will be able to, we'll be forcing him to stay out and we'll play zone. एक प्लेयर को डाउन कर देंगे यहाँ पे 4 ट्राइब्स, शायद वो प्लेयर को रिवाइवल भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो एक प्लेयर और खो जाएंगे। 4 ट्राइब्स अप डाउन टू 2 प्लेयर्स नाउ, 6 एलिमिनेशन और मिलट कर सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर टीम सीक्रेट्स के ज़रिए से यहाँ पे डाउन हुए थे टीम पैंडम के अगेंस्ट जो फाइट है टीम सीक्रेट्स की यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। और देखते ही देखते यहाँ पे जो थर्ड स्पॉट पे टीम है यहाँ से एलिमिनेट होती हुई देखिए। और इस जो भी अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये जो फाइट्स है वो थोड़ी बहुत स्लो डाउन होंगी। सो मैं आप लोगों को एक बारी दोबारा से रिकैप पर रिमाइंड करता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है सो जाइए जल्दी से आके एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिखिए, चैट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। पिन कमेंट के अंदर से जाइए जल्दी से आके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। लेट्स जस्ट कम बैक टू द मैचेस। टीम पैंडम, इन लोगों ने यहाँ पे टीम सीक्रेट्स को एलिमिनेट किया था एंड अभी के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं टीम सीक्रेट्स को जिस टीम ने एलिमिनेट किया था वही एलिमिनेट हो चुकी है। टीम पैंडम दे आर गॉन फ्रॉम द मैच, वी आर डाउन टू टॉप 7 एज। 18 प्लेयर्स यहाँ पर अभी तक जिंदा। सब कुछ यहाँ पर शायद से स्ट्रॉन्ग लग रहा है टीम बूम esports के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को 4 प्लेयर जिंदा रहेंगे। जसनाया का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा, मैं बोलूँ तो जोनल एडवांटेज उन लोगों के पास में रहेगा, बट बूम जमी के ऊपर बहुत अच्छे खासे शॉट्स आएंगे। एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में इतने ज्यादा नहीं है, सो एलिमिनेशन पॉइंट्स दे गॉट टू फाइंड दोस एलिमिनेशन पॉइंट्स। नहीं तो मेरे को लगता है एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो मुश्किल इन लोगों के बहुत सारा बन सकती है। That is true. If they don't have elimination points, मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है यहाँ पे। 7 teams, 18 players. That one surviving player on the side of D Xavier. I want to see where he is. One young. Okay, I see him. He's hiding. And here's the thing. अभी उनका नाम ले लिया हमने। अगर उनको टेक डाउन करेंगे यहाँ पे तो Castuscus is real. That's all I'm saying. that is all I'm saying. He survived. He survived for like 10 minutes. He cannot be going down right now. But we'll see. 21-minute mark now coming in. Zone closing in the next 15 seconds. T2K esports are looking really good to make a jump on the overall as well. Maybe get a couple more points and make their way up to 50. Maybe that'll be a good point. But these two surviving players on the side of Flash, they've been alive for quite a bit, so they will be getting a couple more position points for themselves. But can they get any elimination points? They got one, but can they get any more? More. That is true. How can they find more and more? That has got to be the question. And now we can see Team Force Tribes, दो ही प्लेयर्स जिंदा, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर टीम फोर्स ट्राइब्स ने ले लिए हैं। नौखे एंड हुज़ैफा, ये जो 2 शहर है पाकिस्तान से, क्या यहाँ पर इस
मैच के अंदर अपने खिताबी चिकन डिनर ले पाएंगे या फिर देखिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये टीम रहेगी। मोलोटॉव यहाँ पर टू के ई स्पोर्ट्स के इस खिलाड़ी को जरूर लगेगी, स्मोक अपने आगे किया जाएगा, फर्स्ट एड यहाँ पे अप्लाई करी जाएगी। बट अभी हम लोग देखेंगे जोन के ऊपर। देखिए जोन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंसेन जोन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट जोन इन पबजी मोबाइल एरा। ये जो यसनाया का जोन है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गेट कीपिंग सिनेरियोज बन रहे हैं, द जेवियर्स को वो जो आखिरी खिलाड़ी है, टच वुड यहाँ पे कोई भी कासिस उनको ना लगे लेके जाए सेकंड डिनर को, बट वो बी रियली हार्ड मैन, क्योंकि सोलमन स्टैंडिंग है, आप लोग को यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। एक ग्रेनेड आया, एक मॉली आई, शायद से यहाँ पे प्लेयर्स ने उनको स्पॉट भी किया तो डाउन हो जाएंगे, बट टीम फ्लैश दे आर आल्सो सर्वाइविंग। यहाँ पे जो मैच है बहुत ही ज्यादा इंसेन और इंटेंस लेवल की तरफ बढ़ता हुआ है। फोर्थ ट्राइब्स के प्लेयर्स यहाँ पर एक गेट कीपिंग सिनेरियो के ऊपर देखिए जोन से बाहर है, जोन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। स्विच दे आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क विद जस्ट 2 मिनट्स एंड उन्हीं मिनट्स के अंदर, उन्हीं सेकंड्स के अंदर, उन्हीं कुछ चंद मिनट्स के अंदर उन लोग को अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा कैसे वो लोग जोन देंगे, कैसे वो रोटेट करेंगे एंड शायद से व्हीकल का यूज करेंगे या फिर नहीं। वो सब कुछ उन लोग को यहाँ पर एक पूरा डिसीजन बनाना पड़ेगा, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा एंड देन ओनली दे विल बी कमिंग इनटू द जोन एंड टीम फोर्थ स्टार्टिंग में एक मूव इन लोग जो सामने रहेगी 2K ई स्पोर्ट यहाँ पे प्लेयर कुछ किया जाएगा। एक प्लेयर को शायद से उतारा गया है या फिर नहीं अभी तक नहीं उतारा गया, बट टीम फोर्थ ट्राइब्स के दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा लो बट सक्सेसफुली यहाँ पे जोन के अंदर आए, इजीली रोटेट किया हुज़ैफा एंड नॉके। ये जो डेडली डुओ का कॉम्बिनेशन है अभी भी यहाँ पे बचता हुआ। Let's see Edge, what's going to be happening in this one. If Flash can actually capitalize and get 3 more points, they've already gotten 3. Boom, 2. With 4 players standing. So now, you know, we were talking about how Flash and their chances were looking grim. At the moment, it feels like they might actually have a better chance now to close things off and get another chicken dinner, even without a lot of elimination points. Because now there's only 2 teams that have a really big advantage. That's A side and Boom. Everyone else is pretty easy. What do you think? What do you think? Stream Flash? Is there a chance for another chicken dinner? I mean, yes. Why not? Because it's Team Flash, man. Team Flash, if they are surviving, so still there are some chances. But I'd say Team Flash, I don't feel the vibe, man. Team Flash वो जो instant आता है मेरे को यहाँ पर अभी तक मेरे को feel नहीं हो रहा. बट साइड esports यहाँ पर एक और पाकिस्तानी टीम, यहाँ पर शायद से लोग भी 2 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे. बूम esports, यहाँ पर बूम esports से जो सर्वाइवल गेम इनका चलता हुआ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा. एंड यहाँ पर द जेवियर्स, यहाँ पर जीवन दान रहेगा उस सोलमैन प्लेयर के लिए, क्योंकि यसनाया के अंदर जोन है, बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे घर है, बहुत सारे पैनिक रूम है, तो वहां पे जाके रह सकते हैं. द जेवियर्स को सोलो मैन प्लेयर ने फ्लैश के बोस को यहाँ पे डाउन किया, बोस को यहाँ पे सीधा फिनिश ऑफ कर भी दिया जाएगा. सो यहाँ पर अब 2 टीम्स रहेंगी जो यहाँ पर डुओ आई मीन सोलो मैन प्लेयर के साथ में रहेंगी. बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. जो द जेवियर्स का प्लेयर है, ग्रेनेड बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता था बट शायद से कोई भी कनेक्शन नहीं लेके जाएगा आगे तरफ. यहाँ पे बढ़ते हुए वोंग योंग क्या यहाँ पे उस प्लेयर को डाउन करेंगे. डीवीएस की तरफ से आगे बढ़ते हुए शायद से वीका एक अच्छे सिचुएशन के अंदर रहेंगे. लो यहाँ पे प्लेयर को किया गया है, दोबारा आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए ग्रेनेड्स आए, मोलोटॉव आए, मोलोटॉव यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी बट वीका आई गेस ही एक्चुअली टॉप्स ही थॉट कि वहां पे जो मॉली डाली थी उस प्लेयर को पीछे रख सकते थे बट नो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस. एंड यहाँ पर हमारे पास रहेंगी हमारी टॉप 4 टीम्स, 2 पाकिस्तानी टीम, 2 इंडोनेशियन टीम. लेट्स सी चिकन डिनर के खिताब में कौन सी टीम का झंडा यहाँ पर लहराएगा और यहाँ पर ये जो गेम है और भी ज्यादा रोमांचक मोड की तरफ बढ़ता हुआ. क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 3 टीम्स रहेंगी उनके पास में 2 ही प्लेयर्स हैं. टीम बूम esports एक ऐसी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, एक ऐसी सबसे बड़ी दीवार जो खड़ी हुई है इन प्लेयर्स के आगे चिकन डिनर की. क्योंकि अगर आपके पास में 4 प्लेयर्स एंड जोन तक जिंदा है, सो यू गाइस आर हैविंग द बिगेस्ट एडवांटेज इन द हिस्ट्री ऑफ PUBG. सो लेट्स सी हाउ दे गोइंग टू बी कैपिटलाइजिंग दिस वन. बूम esports हैविंग एन इमेंस लेवल ऑफ एडवांटेज. यहाँ से कोई भी मेस अप नहीं करना है. That's one thing that we've seen that consistently, right? Coming in from Boom, especially. I mean, even if they don't have a lot of elimination to work with, even if they don't have insane amount of elimination points going in to any of the games at any point of time, the one thing they're really good at is surviving with 4 players towards the end, and that's when that's when the numbers come into play. As we are entering stage 7, we will be entering stage 8. Actually, they have a clear advantage over every other team. It's a 2-2-2 split, and boom, well, they have 4 alive, so they can capitalize and take everyone down and get the chicken dinner. Once again, map of Rondo. I understand chicken dinner is not your main focus. It's not your biggest priority at the start, towards the end as well.
if you're surviving, yes. If you get it, well and good. As I said, icing on top. That's it. That is the that's what it is on Erangel and Miramar. Chicken dinner, getting those extra 10 points is pretty much everyone's main focus. And I feel like that is what's going to be the case here in terms of for the side of Boom as well. With 3 eliminations, they're looking good to get more, and well, probably get the chicken dinner here as well. So if they get a couple more elimination points, they're looking good for let's say 15, and which is a good number here on the map of Rangel, if you ask me. But more on the other hand, it will be dropping the one players, but that grenade might be good enough, and the ASI 8 might be able to get themselves another finish, might steal one from the hands of Boom Esports at the moment. Alcra trying his best to maybe go for the revival. It's got to be sneaky though. 4 players inside of Boom holding on to their position, and Lele Boy will be going for that revival. Will be getting that revival, I'm sorry, as Arco is there to save his teammate. जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर ही जो 10 प्लेयर जिंदा है इस लॉबी के अंदर, एक पूरा ट्राई करेंगे चिकन डिनर लेने के लिए। और ये जो जोन है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो यसनाया का जोन बनता है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है एंड बहुत ही ज्यादा स्पाइसी रहता है। बट अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक टीम यहाँ से एलिमिनेट होती हुई, जो रहेगी 2K esports की। तो पाकिस्तानी टीम, एक इंडोनेशियन टीम बूम esports, अपने उस एडवांटेज को आखिर तक बचाते हुए आखिर तक लेके जाएंगे। और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर आता हुआ, उन्ना ग्रेनेड यहाँ पर डाउन करेंगे नॉकी को। नॉकी को शायद से फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, बट नहीं, क्रिप्टो अपने यहाँ पर दूसरे भाई को नॉक ऑफ करके सीधा फिनिश ऑफ करेंगे। टीम 4 थ्राइव्स यहाँ से होती हुई एलिमिनेट। बट एसआईटी esports, अब ये जो 4v2 की बैटल है, जो 4v2 की दरकार है, कौन सी इस टीम के कौन सी टीम यहाँ पर एलिमिनेट करती है किसको? क्योंकि बूम esports, देखिए एच, कोई भी चिकन डिनर आज के दिन के अंदर नहीं आया था। सो दूसरे गेम के अंदर वही पैसिव गेम प्ले, कोई भी फाइट अभी तक इन लोगों ने ज्यादा नहीं ली है। यूटिलिटीज यहाँ पर बहुत सारी रहेंगी, बट बूम esports उस एडवांटेज को आखिर तक बरकरार रखना, ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कला है जो बूम esports यहाँ से दिखाते हुए। That is true, and Boom is on the words of getting that chicken dinner. Now with 4 players standing against ASI 8, we're hitting that final stage. ASI 8 will be really happy with this performance. You know, they've gotten themselves a few elimination points. They're here in the top 2 as well, and Boom. Now, there is still a chance that ASI can actually convert this into a chicken dinner, but getting a 2v4 is pretty much close to impossible. And yeah, well, with that one player down, it's a 1v4, and Kito, he's on the words of getting eliminated as well. The grenade might be the end of him, but no, it is the grenade actually. It is the grenade there, putting the final nail in the coffin. It is Boom Esports with the winner chicken dinner. Not a lot of eliminations to show for, but a lot of points to get a move on that overall standings. I mean, that's true. Boom esports, ये कुछ नेशनल है उन लोगों का। यहाँ पे इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इनिशियल डेज या फिर इनिशियल बैटल्स के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसिव खेलते हुए और जस्ट उन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो लोग चिकन डिनर लेंगे, और वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। सो दिस इज इट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन विद 2 मैचेस। इसके बाद यहाँ पर हम लोग विटनेस करेंगे मिरामार, एंड आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर मैच बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कुछ स्क्रीन्स को देखेंगे, जैसे मैच हाइलाइट्स, ओवरऑल रैंकिंग्स, ओवरऑल एमवीपी। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा मैच है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा। सो आप लोगों के पास में अभी टाइम है गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड यहाँ पर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करें। लिंक आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है चैट सेक्शन के पिन कमेंट के अंदर। सो जाइए जल्दी से आके यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। बट एच, what an insane level of battle it was into the previous one. We'll be witnessing everything, because we know that Team 4 Thrives, they are back on the first spot of the overall rankings. I mean, this match is definitely going to be giving us some changes on the overall, but this was an unfortunate start for the side of all 3 Guerreros. I mean, you expected them to come out on top, but then this play coming in from me, maybe the S1686, the jumping shotgun there was ridiculous coming up, and then taking on the last player on the side of Altrigo as well, pretty comfortably. TTK, they started off well, but they didn't end on a better note. They could have ended on a better note, if you ask me. And towards the end as well, you can see, you know, everyone just held on to their grounds. As we went towards Yasna Poliana's region, there was a lot of buildings, a lot of compounds to work with, a lot of cover for all of these teams. And there was a really good champ, but this fight coming in, One Young played it very, very well. And you're right, I think he did
believes that the Molotov will actually be putting him at bay. But unfortunately, One Young, a little bit of fire will not be able to stop him. He is the fire, and you can see towards the end that man advantage, that manpower that they had, overwhelmed the rest of the teams there in the final circle. So boom, once again, congratulations. Keeping on those four players alive towards the end was the key for them. And Maul, Belt 3, Rhapsody 1, Yummy 3, and Kibo. Unfortunately, no eliminations or knocks, but 154 damage still contributed something to the squad, and they'll be happy with the 7 points here in terms of elimination and the 10 chicken points. That's true, and good matchup at वर्शन to the previous one team बूम esports। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा उन लोगों ने खेला। एक बार हम लोग जरूर नजर डालेंगे यहाँ पर हमारे MVP के ऊपर, बिकॉज वॉन योंग लेके जाएंगे इस वाले MVP की किताब को 4 एलिमिनेशंस के साथ में 2 नॉकआउट, 25 मिनट का सर्वाइवल टाइम और 600 तक का ज़्यादा डैमेज एंड एज। इज दैट राइट? क्योंकि उनका 0 हीलिंग्स है। He did not even patch up a single digit of the healings, I guess, into the previous one. Damn. That's actually pretty insane. Not gonna lie, that is ridiculous play coming in from One Young. I mean, he's gonna be happy with the performance, and he is the MVP here as well. Xavier, although didn't have a really good game, didn't have a game at all, to be honest. They got wrecked by BTR down to one player, and then One Young scrappy plays towards the end, but he'll be happy with the end result. Dimsey on the side of Pandum with 4 eliminations. Noki with 3, a good amount of damage dealt. Ridiculous, to be really honest. 874, but only 3 eliminations. Crypto, on the other hand, ASI 8 did make us believe that towards the end maybe can actually pull off a 1v4, at least deal a bit more damage. 678 damage, 3 eliminations were your top 4 players, ladies and gentlemen. But teams to watch, well, definitely going to be Boom to keep an eye out for, and Flash, I mean, they always are going to be there. Yep, and let's just have a look on the teams to watch out into the upcoming one, because we can see T2K Esports, Team 4 Stripes, Team 2K Esports, and ASI Esports are the teams to watch out into the upcoming one. And look at the utility usage coming in from the side of Team 4 Stripes. 27 smokes. 27 freaking smokes. They did not use a lot of grenades, but smokes, they were just smoking throughout the whole game. I mean, not smoking, but smoking. You feel me? That is true. But I'm kind of surprised not to see Flash or Boom, as a matter of fact, here. But it is what it is. These are the teams we think are going to be, someone you need to keep an eye out for. But I also think Boom and Flash must be in the fix. But anyway, these are the teams. And as we take a look at the match summary now, we will get an understanding of, what did we just witness before we head down to match standings and overall, where we will be witnessing some changes. I think Boom will probably be up to 57, 58 points, which is really good. Yeah, let's just have a look on the match summary as well, Edge, because we can see total number of eliminations was 67, 5 grenade elimination, 4 airdrops were looted, and 0 elimination whatsoever. No vehicles were run down. And now we can see the longest elimination coming in from the side of Team Pandum Hulk. I mean, this is just a typical match summary we always do look about after the matches, because it just gives us a brief what happened into the previous match. Hulk with the longest elimination there as well. 343 meters and 8,000 healing done. None of them was from One Young. Keep that in mind. He had 0. Just a fun little fact there coming in. But yes, we'll be taking a look at the match standings now coming up. We will be probably witnessing... I don't think anyone is going to surpass Boom there, especially since this is Erangel, right? We didn't really see a lot of these teams get a ridiculous amount of eliminations. So Boom might be the ones coming out on top. Still, yes, there you go. 17 total. 4 tribes make it up to 12. ASI 8, 11 points along with 2K Esports. Xavier on 8. Pandum on 7. 7 for T2K. Flash on 5. 4 for RQ. BLUG on 4, Wargaye on 4, BTR on 3, 52 Esports on 2, along with VOIN. All 3 goes. Unfortunate situation along with the Team Secret, both of them with just 1 point each. DRS and Alliance. I
I don't know, man. I'm not really sure what's up with DRS, but those 0 points are hurting. Yeah, that will hurt. That will stink as well. But let's just have a look on the overall rankings as well, because we do know कि फोर स्ट्राइप्स यहाँ पर शायद से अपने जो फर्स्ट स्पॉट है, जो फर्स्ट पोजीशन है, उसको यहाँ पर दोबारा से अपने नाम करते हुए और शहजादों के जैसे यहाँ पर ओवरऑल एमवीपी के फर्स्ट स्पॉट पर बैठे रहेंगे एंड शायद से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल स्पॉट पे है। बिल्कुल, हालांकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम फोर स्ट्राइक्स 78 पॉइंट्स के साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ती हुई, बट देखिए विन इज द विन। टीम फ्लैश यहाँ पर लेगी 73 पॉइंट्स एंड दे आर जस्ट लैकिंग बिहाइंड। 5 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप रहेगा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में, बट टीम सीक्रेट यहाँ पे ये जो गैप है बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पे ये जो गैप है 12 पॉइंट्स का हो चुका है। सो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और डिसेंट मैच में बोलूंगा यहाँ पर टीम सीक्रेट को लेना पड़ेगा, जैसे रोंडो के मुकाबले पे लिया था। बट एज उनके लिए यहाँ पर क्या एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि टीम फोर स्ट्राइक्स और टीम फ्लैश का एलिमिनेशन आना चाहिए आगे आने वाले मैचेस के अंदर, राइट? तभी शायद से मैं बोलूंगा टीम सीक्रेट्स यहाँ पर एक अच्छे तरीके से इजाफा कर पाएगी यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर और फर्स्ट स्पॉट ले पाएगी। जो फाइट है यहाँ पर टॉप 3 के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती हुई। और देखिए बूम esports 2 के esports ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके बीच में ये जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। सो आई से टॉप 5 टीम्स वहां पर ये जो रोमांचक मूवी देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। आगे वाले मैचेस के देखते क्या सिनेरियोस हम लोग को देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल रैंकिंग्स का ये रहेगा सेकंड पेज जहां पर ये टीम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती हुई। और ये जो सेकंड पेज पर स्ट्रीम्स होती है ना, मैं उनको बोलूंगा ये पार्टी स्पॉयलर्स होते हैं। ये पहले पेज के टीम्स के लिए गेम खराब करती है। सो DRS टीम ब्लू अलायंसेस, अल्ट्रा ईगोस, T2 के esports, RQ, वारगाय टीम, द ज़ेवियर्स एंड टीम BTR, ये बनेंगी पारी स्पॉयलर्स अपकमिंग मैच के अंदर आके एंड पहली टॉप 5 टीम्स के लिए यहाँ पर परेशानियां सबसे ज्यादा लेके आएंगे। That is true. I mean, the teams at the bottom, they not just have you know, the opportunity to make it to the top. They also have an opportunity to ruin the game, as you said. You know, disrupt the flow towards the for the players at the top and the teams at the top, of course. And Xavier, BTR, Wargaye are under 40 now. RQ, not a great lead that they have as well. Nothing really that can't be changed in one game. I mean, even if you ask me, if a BTR can get a, let's say, 35, 30, 40-point game, they probably will be on 77, almost the same points as four tribes. So it's just a matter of one game still. As long as that is the case, it's all okay. As long as it is a matter of one game. And 40 is a big ask, I understand, but it's still a matter of one game. As we've seen Team Secret with 39 points yesterday, and we're talking about overall MVP. Match number 2, after match number 2, that is. WIN is still on top with 21 eliminations, 17 knocks. Nocky now on 15 eliminations, 17 knocks too. Rosemary would have gotten more if he would have survived a little longer. Look at the survival time. He's on 11 minutes and 27 on average. 19 knocks, 13 knocks for Leleboy 2K, 12 for Boom Yummy. So everyone's from a different team, which is kind of interesting to watch. But yeah, at the moment, Nocky and WIN probably are going to be the contenders, the most important contenders, along with Rosemary. But he needs to survive a little longer. Both of the games, he didn't really get to perform or get to showcase his skills. I mean, exactly. And after this, if I'm not wrong, we'll be having a look on the giveaway winner and fan favorite teams and giveaways. We shall, guys. We'll be telling you about everything. How you guys can participate in the giveaway. हम लोग emphasize करते रहते हैं आप लोग giveaway के अंदर participate करिए, क्योंकि यहाँ पर free roll pass giveaway चल रहे हैं. So why not अपना यहाँ पर एक बारी luck जरूर आप लोग आजमा सकते हो, and क्या पता आप लोग यहाँ पर winner बन जाओ कोई भी. So let's just have a look on the fan favorite teams as well, because I mean grand finals के अंदर यहाँ पे ज़्यादा मैं बोलूँगा काम नहीं आएंगे ये votes, but still you guys can support your team while just typing hashtag 4tries or maybe hashtag DRS to support their team into the comment section. But right now 4tries and DRS, they're having great level of votes. But let's just have a look on the giveaway winner. Congratulations guy, that PUBG mobile player winning on that giveaway. And आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए हम लोग यहाँ पे हर मैच में एक गिव अवे विनर अनाउंस करते हैं, एंड यहाँ पर गिव अवे के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे इनटू द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग यहाँ पर पिन कमेंट देख सकते हैं यूट्यूब चैट के अंदर. 141 esports का एक जो कमेंट है वो वहां पर पिन किया गया है, वहां पर एक लिंक होगा, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर टैप करना, फिर वहां पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक इमेज होगी, उसी के ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, और उस क्वेश्चन का आप लोग को सवाल का जवाब देना है while tapping on that link. जैसे आप लोग यहाँ पे उस इमेज के ऊपर टैप करोगे, आप लोगों के जस्ट सामने एक दूसरी
पेज पॉपअप होगी जहां पर आप लोगों को अपना रियल नेम एंड उसके बाद में PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी लिखना है एंड देन दैट्स इट। आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर अपने आप को पार्टिसिपेट कर लोगे इस गिव अवे के अंदर। एंड अगर आप लोग लकी रहे तो एक रॉयल पास आप लोग के नाम हो सकता है। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट करिए, दैट विल बी द ग्रेट थिंग, बट वी जस्ट कैन नॉट गारंटी दैट यू विल बी विनिंग, क्योंकि सब कुछ रैंडमाइज होगा एंड रैंडमली एक विनर को हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे। I mean, obviously, it is basically life, right? I mean, you can control your actions. That is participating in the giveaway. Now, you win or not, that's not something you can control. So, well, sit back, relax, hope for the best. Simple as that. You don't win this game, maybe the next match you will get yourself another. I mean, you'll get yourself a better chance because we are done with 2 maps. We're done with 4, which means 4 more of you guys will be getting your hands on 4 free royal passes. So you have 4 opportunities, nothing to worry about. If not today, tomorrow. If not tomorrow, day after. But for that, you need to subscribe. Make sure you tune in. Hit that bell icon so you do not miss out on any of the action from your favorite teams, from your favorite players, or from your favorite casters, that is us. But at the same time, do not miss out on the free royal passes given away by 141 Esports. So, I mean, as a support, all I'm asking is subscribe to them and maybe follow them on Instagram as well. Links down in the description to keep yourself updated with all things Asia Battleverse Chapter 3 and more later on. That's right, and the next upcoming match is going to be Miramar, and देखते हैं मिरामार की इन वादियों में कौन सी एक ऐसी टीम आएगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी। देखिए इट्स डेजर्टेड आइलैंड, यहाँ पे रेगिस्तान रहेगा, मिरामार का ये जो मुकाबला है एंड चिकन डिनर लेना इतना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा क्योंकि मिरामार कुछ यहाँ पे टीम्स के लिए घर है एंड यहाँ पर कुछ टीम्स का यहाँ पर एक बेटर मैं बोलूँगा मैप भी रहेगा, जैसी रहेगी हमारी टीम फ्लैश। दे ऑल्सो प्ले रियली गुड ऑन द मैप ऑफ मिरामार। अलायंसेस जैसी भी टीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है। बट ladies and gentlemen and boys and girls watching the stream and broadcast right now, it is Asia Battleverse Chapter 3rd, and there we have it. This is going to be the match number 3rd of Grand Finals Day number 2nd, day of comeback. It's going to be Edge. Let's just have a look on the flight path. It's starting up north, right in the center, and ending pretty much towards the center, towards the south as well. We will have to wait and watch and see where the teams are going to be jumping in, where the circle's going to be coming up. San Martin, Graveyard, Power Grid, Picado, Hacienda del Petron, usually the ones where we go. We've seen some amazing circles towards Impala, towards the islands there as well. Puerto Paraíso has been a hotspot for a couple of these teams. Patona, we didn't really see a lot of these players go towards that. But El Pozo there, I believe VOIN might be taking a fight against WARGAYE, but they got to be careful. Are they actually going towards La Cabrera? I think Potato might just go for the scout pretty early, but WARGAYE are actually going in there. Torea Muda is where Boom are going to be dropping in, and RQ might be leaning towards Patona at the moment. Yeah, and look at the zone, man. I mean, the zones बिल्कुल नॉर्थ की तरफ यहाँ पे जो जोन है शिफ्ट हो जाएगा एंड स्पेशली जो टीम्स यहाँ पे डिसाइड करती है कि सदर्न साइड ऑफ द मैप पे जाएंगे, उनको एक बहुत ही ज्यादा लंबा रोटेशन शुरुआत से ही डालना पड़ेगा एज। सो दिक्कत है यहाँ पर बनती हुई और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम ओल्ट्रीगो वर्सेस DRS गेमिंग। ये टीम्स, ये दोनों की दोनों टीम्स हम फाइट के अंदर आती हुई और यहाँ पर शायद से जो फाइट है बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल की होगी एंड बिल्कुल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ओल्ट्रीगो पहला एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम और खिताब में लेके जाती हुई। All 3 go Ares. Get the first one and they'll be happy. Did I see a DMR there for a second? Unfortunately dropped. I thought we will be probably looking at some long range fights. Maybe even pick up a sniper rifle in the mix of all that. But that is not going to be the case. Towards Picado though, well, we have 4 tribes at the moment. We've always known that is where they usually lean towards. They don't really need to, go for those fights pretty early into the game. Right now, they're at the top of the scoreboard, and they kind of want to stay in that position for a bit. So they will be playing this a bit more caution. As you can see, players here on the side of Team Secret, T2K, they've been looking scary, especially towards the start. So they got to be very, very cautious here, whoever it is facing off against T2K.
But that's true. They got to be really cautious. And DRS Gaming against Team Alter Egos. They're down to 2. And now we can see they're losing players really rapidly. So DRS, क्या यहाँ पर रिटेलिएशन रह सकता है, क्या यहाँ पर दरकार रहेगी इस वाले मैच के अंदर. देखिए यहाँ पर एक भी गलती है, उन लोगों का एलिमिनेशन आएगा. ब्लू स्पोर्ट्स टीम 52 के ऊपर एक बढ़िया एलिमिनेशन आता हुआ और आई गेस यहाँ पर डाउन भी किया जाएगा. There we have some celebratory shots they are using now. DRS, how did they manage to still lose a player this early? And 52 Esports also getting taken down once again. They started off really strong on day number 2. This game, once again, not going really well for them at the start. At least, Alter Ego Ares, they'll be happy with that one. But those two players need to get back on their feet. Otherwise, things will look bad. TTK and Team Secret still was Minas Generalis, and that's exactly how it's going to be for a bit. They will have to go into the zone. Stage 1 circle coming into a close in the next 4 minutes. So after that, maybe stage 2 coming into play. That is when they probably will, probably go for the rotations. Maybe exit the proximity then. But for now, things are going to be a little quiet. This Miramar, I don't think we'll be witnessing a lot of the fights. But Cyclone actually does manage to get a confirmation. And Rin also is going to get taken out. So 2 points for DRS. That's true. I mean, they're having 2 points, right? So, that's good. Alter Ego. यहाँ पर एक एलिमिनेशन लेने के बाद में शायद से 2 प्लेयर्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, which is really bad. देखते हैं यहाँ पर क्या रिटेलिएशन आ पाएगा. एंड नाउ वी कैन सी यहाँ पर शायद से टीम्स का पुश आता हुआ. DRS गेमिंग, दे वोंट लेट देम गो. उन लोग को पता है अगर यहाँ पर अभी जाने दिया इन प्लेयर्स को तो मुश्किल बात बन सकती है आगे आने वाले मैच के अंदर. समय के अंदर देखिए ग्रेनेड्स यहाँ पर जाते हो. Alter Ego वर्सेस DRS. ये जो टकराव है, ये जो टकराव चल रही है 2v2 की, बहुत ही ज्यादा इंसेन. एंड पीछे से एक और टीम यहाँ पर ट्रेड करती है. Alter Ego Ares यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे सिनेरियो में मैं बोलूंगा लगती हुई, बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेनेड्स से यहाँ पर डैमेज लेते हुए Alter Egos शायद से पुशिंग करेंगे. बिल्कुल यहाँ पर हाथ में रहेंगे SMGs, बहुत ज्यादा अच्छा डैमेज यहाँ पर लेते हुए. और एक अच्छा ग्रेनेड मैं बोलूंगा शायद से अंत कर सकता है DRS को. रिटेलिएट करने का ट्राई कर रहे, शायद से उनकी गाड़ी लिए उड़ाने का ट्राई कर रहे थे. बट क्रिप्टन डाउन करेंगे प्लेयर को. किलर White, he is also surviving. Killer White को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा, बट नहीं. बैकएंड से ये 2v2 की फाइट नहीं थी, ये 2v3 की फाइट थी. Alter Egos ऐसे होती हुई एलिमिनेट एंड दे आर गॉन एज. इसी के साथ में DRS, they are surviving. Really barely, but they are surviving. Well, let's just have a look on Team BTR versus Alliances. As BTR, they are going to be feeling the heat coming in from the side of Alliance. They want some points. They don't have a lot to work with going into this one. There's only 43. BTR on the other hand as well. At the very bottom of the overall, BTR will get the knock, but immediately gets traded out. Federals will be down, will be going for the revival. But Nara is coming in, is capitalizing. Too easy for men. Will be able to get one more trade-off. BTR now on the verge of getting a point for themselves as Alliance on the verge of getting eliminated. With only one player standing. FIO, and well, FII is gone. He is going to be taken down as well. That's FID actually, I believe, not FIO, but regardless, Alliance are going to be taken out. And BTR, they'll be happy. Once again, I told you, this happened last time as well. You cannot mess with them and expect not to take them down or expect not to retaliate. If you do not take them down, they will make you pay. You make them lose one player, they make you lose multiple. That's right. They will do it for sure. And now we can see Team Secrets. यहाँ पर इन लोग के 2 players down हो चुके हैं. Zeres, JKMJ, they're gone. They're not here in the match right now. Rondo का मुकाबला नहीं है, so recall यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. जोन देखिए एक बार यहाँ पे. मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स भले ही जोन के अंदर हो, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम RRQ, क्योंकि esports, टीम ब्लू, टीम फ्लैश, उन लोग को जोन के अंदर आना पड़ेगा. टीम पैंडम भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जोन के अंदर अभी एंटर करी है. टीम 4 थ्राइव्स, देखिए टीम 4 थ्राइव्स के पास में एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा, क्योंकि गेट कीप कर सकते हैं 2K esports के अगेंस्ट, RRQ के अगेंस्ट. जो भी टीम यहाँ पे जोन के अंदर आने का ट्राई करेगी उनके अगेंस्ट गेट कीपिंग सिनेरियोस बना सकती है. और मेरे को लगता है एज ये जो 4 थ्राइव्स वर्सेस टीम पैंडम वर्सेस टीम 2K esports है, कुछ अपकमिंग मिनट्स के अंदर हम लोग को जरूर देखने को मिलेगी. और शायद से टीम 4 थ्राइव्स अगर उन लोगों ने अभी एल्पोस के अंदर कोई कंपाउंड नहीं पकड़े तो मैं बोलूंगा एज कि कुछ यहाँ पर
सैंडविच सिचुएशन टीम फोर ट्राइब्स के अगेंस्ट हो सकती है. व्हाट डू यू थिंक? Probably. You're definitely right about that. They can actually be in a tough spot if they don't, make a move themselves. They cannot let others make a play. They gotta do it themselves. Sometimes it's all about making the first move. You can't be expecting everything to just fall in place. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Most often than not, you gotta be willing to put in the efforts. Feels like I'm giving life lessons at this point. But yeah, 2K Esports, as we once again jump back into the game. One elimination at the moment will be in a safer position. Thondara will be taking the high road. With a beautiful SUV going in, chilling. Ooh, revving it as well. 2K will be, trying to get themselves back into the zone. Will be able to get them back into the circle. Will not be worried about any commotions at the moment. As ASI 8, they're a little cautious and skeptical about taking the fight towards a BTR. We'll wait and see if things are gonna be coming in handy for them. That's right. And team ASI esports कुछ शॉट्स यहाँ पर इस पाकिस्तानी टीम के ऊपर आते हुए एंड कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में नहीं आएगा. सो ना ही फाइट्स यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं, ना ही कुछ कमोशन स्टार्ट हुए. आसपास यहाँ पर टीम ASI esports के बहुत सारी टीम्स रहेंगी एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ASI esports दे आर होल्डिंग अ कंपाउंड. एंड इन द मीन टाइम देखिए अभी तक यहाँ पे कुछ फाइट्स नहीं चल रही, तो क्यों ना हम एक बार अपनी ऑडियंस को दोबारा से रिमाइंड कर दे. देखिए चैट के अंदर अभी भी गिव अवे चल रहा है एंड इस मिरामार मैच के गिव अवे विनर भी हम लोग बहुत ही जल्द अनाउंस करने जा रहे हैं जैसे मैच खत्म होगा. सो आप लोगों के पास में चंद कुछ मिनट्स और समय है, सो जाइए जल्दी से आके एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिखिए. एक लिंक आप लोगों को मिलेगा, टैप ऑन द लिंक. उसके आगे आप लोगों को एक इमेज मिलेगी, जस्ट टैप ऑन द लिंक. उसी इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, राइट? एंड उस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है. जब जैसे आप इमेज के ऊपर टैप करोगे उसके बाद में आप लोगों के सामने स्क्रीन आएगी जहाँ पे आप लोग को कमेंट पोस्ट करना है, जहाँ पे आप लोगों को अपना रियल नेम एंड PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी लिखनी है. बिल्कुल सारे स्टेप सही तरीके से लिखना एंड क्या पता आप लोग आने वाले समय के अंदर एक विनर बन सको, रॉयल पास ले सको एंड गिव अवे के विजेता बन सको. सो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे राइट नाउ एंड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. बट लेट्स जस्ट कम बैक टू द मैच. व्हाई नॉट? बिकॉज़ वी कैन सी टीम 4 ट्राइब्स ऑन द स्क्रीन एंड शायद से रोटेशन यहां पर स्टार्ट हो चुकी है. ये जो H2 एज यहां पर गेम खेलने का ट्रायल कर रही है टीम 4 ट्राइब्स, ये बहुत सही स्ट्रैटेजी मैं बोलूंगा. देखिए गेट कीप करने का सिनेरियो हम लोग यहां पे बिल्ड कर सकते हैं. जो टीम जोन के अंदर आएगी उनको यहां पर जोन के बाहर पुश कर सकती है, बट यही सेम चीज इन लोगों के अगेंस्ट भी हो सकती है. So they gotta be really careful. But Team 2K Esports versus the Xaviers, the fight has been started and initiated. The Saviors, they've not been having a good performances recent times. And things are just looking, unfortunate again. They've already lost a player, no eliminations coming in, 3-man squad at the moment. As the zone comes into play now, stage 3 circle will be coming into play in the next minute. Team PANDUM on the other hand, no eliminations. This Miramar is turning out to be a slow-paced game. Yes, we did have a couple of eliminations coming in. Alliance, all 3 go Ares, 3 esports. But in the playoff situation, we did see a lot of these Miramars go really aggressive, really quickly as well. But we're already 12 minutes into the game, and we still have 52 players here. It tells you how passive these teams are going in. And meanwhile, Zantares does manage to pick one player off of the squad of 4 tribes. So Xavier will be happy with that one elimination, but they got to be careful because 4 tribes are the ones at the top and Xavier are the ones at the bottom. If 4 tribes start to pick that fight up, Xavier might be in trouble with how things are going right now. That's right. So they got to be really careful and cautious. यहाँ से कोई भी गलती कोई भी टीम नहीं कर सकती. टीम 4 ट्राइब्स नॉकी यहाँ पर डाउन हुए और शायद से उनको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा. कोई भी यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं मिले. स्प्रेज यहाँ पर लिया हुज़ैफा, साथ देनी पड़ेगी. मैन ओ मैन, दिस गाय ही इज अ बीस्ट. QBZ विद रेड डॉट. एंड आप एक बार देखिए वो जो ट्रेसिंग थी कितनी ज्यादा इंसेन थी. दैट इज जस्ट इंसेन. ही इज अ बीस्ट अनलीश्ड. हुज़ैफा, kudos for his gun power.
He is an absolute monster in situations like this, and the damage he outputs is ridiculous. And well, he was the MVP last time in the grand finals. Let's see this time how long it'll take before he actually shows up on the overall MVP. I'm pretty sure it's going to be one of the contenders again, but Wargaye retaliates, and they will take down VOIN. Although they did lose Daku, but now they might be meeting new faces here at 2K. They want to join the party. We were talking about how D-Sabia might be in trouble, that they're going to get taken down. RRQ will be the one putting the food to them, and Wargaye on the words of getting eliminated right now, as the players inside of 2K are bombarding into the buildings that they are in, and they are losing players. Unfortunately, Mola gets taken down. I believe Shaka is also gone. There's only one more player standing on side of Wargaye, but where is he? I don't see him anywhere at the moment. I think he's in a different building. There he is, Rage. Gonna be surviving at the moment with just how many? What, 5 eliminations? Getting taken down in 13th position is not something they would love. But with as the last man standing, there's not a lot that he can do. As Rage gets taken down, PANDUM will be capitalizing on that situation. Beautiful play that is actually 2K ESPORTS coming in there along with PANDUM. Oh, They're 2K gone. ESPORTS. Yeah, they're gone, man. Just like that, 2K ESPORTS का भी यहाँ से एलिमिनेशन होना तो हुआ. 11 टीम्स यहाँ पर इजाफा करेंगे इस मैच के अंदर, एंड देखते हैं कि नजाकत से इस मैच के अंदर कौन विजेता बन के जाएगा और कौन अपना खिताब लेके जाएगा. देखिए, मुश्किलात के अंदर यहाँ पर बहुत सारी टीम्स रहेंगी और किस तरीके से बयां करेंगे इस वाले मैच के अंदर, देखने वाली चीज रहेगी. एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम सीक्रेट्स, बूम ईस्पोर्ट्स, इन लोगों के सामने मजीद प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी लॉबी के अंदर रहेंगे, एंड टीम्स भी बहुत ज्यादा है. देखिए, दूर दराज से कुछ यहाँ पे शायद शॉट्स आ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. कोई भी गलती, कोई भी एक गलत डिसीजन, एज दैट विल बी द फेट ऑफ देम. दैट्स इट. अगर कोई भी यहाँ पर गलत डिसीजन लिया, एलिमिनेशन आएगा. Indeed, can't really afford to make any mistakes anymore. You gotta survive for as long as possible, get as many points as possible. Any risk or any aggressive plays you want to make, well, guess what? The next map is going to be Rondo, so you will have that chance later on. But for now, all these teams need to be a little more cautious than they would love to. For sure, 4 tries surviving with 3, Flash with 3, Seeker with 2, Boom with 4 once again, and Boom. They love keeping those numbers up. They love keeping those 4 players up till the end, and that's exactly what they're trying to do here again. As the RIQ on the other hand, 2 players standing, 4 eliminations already. Decent number of eliminations for the 2 players. They might get taken down here. They gotta be careful. 10% Lappa. They are in a really tough position, and both of them are gonna be taken down immediately. PANDUM taking down, I believe they did take down Wargaye there, and now they took down RIQ as well. But what a shot coming in from Juke with the mini 14 will be able to disrupt the game plan for Boom. As Yemi, his deck, he's gone immediately. Boom down to 3-man squad now. That's right, and Team Secrets, देखिए टॉप 10 टीम्स यहाँ पर अभी भी लाइव रहेंगे, एंड ज़्यादा मैं बोलूँगा प्लेयर्स नहीं रहे हैं. अब लॉबी के अंदर इजाफा करना इस वाले मैच में थोड़ा बहुत ईजी रह सकता है, क्योंकि जो ब्रीदिंग स्पेस होती है, जो डिस्टेंस रहता है टीम्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा बना रहेगा. थर्ड पार्टी के लिए जो सिनेरियोज है, जब ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस रहता है, जब ज़्यादा डिस्टेंस रहता है टीम्स में, तो बहुत ज़्यादा कम रह जाता है. सो जब आप फाइट लेते हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा ही रहता है कि आप फाइट एक ही टीम्स के अगेंस्ट ले रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी. आई मीन दैट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल थिंग, जस्ट एन एनालिसिस. सो देखते हैं यहाँ पर वो चीज़ सही रहेगी या फिर नहीं. बट बूम ईस्पोर्ट्स देख सकते हैं यहाँ पर यमी डाउन हो चुके हैं. टीम सीक्रेट्स, इन लोगों के सामने गेट कीपिंग के सिनेरियोज रहेंगे. देखिए, मैं वही बात कर रहा था अभी. बूम ईस्पोर्ट्स अगर टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट फाइट लेगी, तो आसपास कोई टीम नहीं है. लॉन्ग रेंज से भले शॉट्स आ जाए, बट आसपास में यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत जल्द नहीं हो सकती इन लोगों के ऊपर. But let's just see. Boom Esports, they're trying to gather some intel. The Team Secrets बिल्कुल आराम से बैठी हुई हैं. बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा. एंड अभी भी यहाँ पर हमारी जो टॉप 4 टीम्स हैं जिंदा रहेंगी इस वाले मैच के अंदर. कोई भी यहाँ पे शॉट्स नहीं आते हैं, कोई भी यहाँ पे फाइट्स नहीं हो रही है. एंड T2K Esports एंड टीम VTR, ये कुछ 2 ऐसी टीम्स रहेंगी जो सेकंड पेज पे जिंदा है. एज, आपको क्या लगता है कि T2K Esports या VTR में से कोई ऐसी टीम रहेगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी, क्योंकि वो सेकंड पेज पर हैं अभी? Will they take it? I don't know. But do they need to? Yes, definitely.
because they definitely need to make some moves here on the overall. Otherwise, they will have a really tough time going in to day number 3 and day number 4. As we're almost halfway through day 2. This is the last game here in the first cycle of the map rotations that we have here: Rondo, Angle, Miramar, and then once again we will head down to Rondo, Angle, Miramar. But BTR, if they don't have that momentum going into the next few games, they will not have that coming in. It's not that easy to pick up, especially with the way things are going on for them and also other teams. They are picking up the pace slowly but steadily, as Glumatic is going to get taken down. That's the end of BLUG. 4 elimination for them, 10th position finish. Stage 5 coming into play. Hacienda del Petron is where we are at the moment, and Force Drive still surviving with 3 players, with 2 eliminations. They will be happy with their position at the moment. Huzaifa still alive, so there is still hope for the side of Force Drive to actually close things off. ASI 8, T2K, the only 2 teams with 4 players standing. They are going to be the favorites going into this one, as Boom finally goes in and takes a fight. They will be taking down the players on the side of Pandum, and they might be able to go for a squad fight. That's right, Boom esports यहाँ पर अभी भी जिंदा है, यहाँ पर देख सकते हैं शायद से एलिमिनेशन करेंगे टीम पैंडम का. Yes, there we have it, टीम पैंडम esports 5 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ से होती हुई बाहर इस गेम से. टॉप 8 टीम्स यहाँ पर जिंदा. देखिए चिकन डिनर आने में अभी भी समय है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके करिए. और you guys are waiting for Barrage. यही समय है, यही मैच है, और शायद से यही समय है T2K esports और BTR के लिए चिकन डिनर निकालने का. और else they might actually lose this spot. ASI esports team Force Tribes, ये 2 पाकिस्तानी टीम्स इन द स्ट्रीज. यहाँ पर टीम फ्लैश के ऊपर आते हुए Zeus, he's just barely surviving. DRS पीछे से यहाँ पर ट्राई करेगी शायद से थर्ड पार्टी करने का. Let's see if Team Secret can actually pick up a couple more, because they're at the moment they're one of the top 4 teams. As Boom did surpass them with that finish previously, but ASI 8, look at them, they gotta be careful. BTR will lose Kent immediately in no time, but Iron is gonna get dropped in the midst of all this. Crypto will be healing himself up again. ASI 8, they will need to go for the revival. BTR with the 2v3 situation at the moment. ASI 8, and they get that player back up. Yes, they can, and they will at the same time take down one of the players out of BTR. 2v4, and it's gone. Now it all comes down to the last surviving player, and I think with the end of Federals, it is the end for BTR. We were hoping to see them get a chicken dinner, but unfortunately, we will have to wait a little longer. That's right, Team Force Tribes यहाँ से सिर्फ एक ही player down हुआ है, and now he's here. Everyone is here. Team Force Tribes, can they actually make the chicken dinner happen? Edge, everything is just looking so good, but Team DRS Gaming Edge, what do you think? क्या DRS यहाँ पर इस वाले मैच के अंदर चिकन डिनर ले पाएगी? बट देखते ही देखते हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और भी ज्यादा फाइट्स यहाँ पे स्ट्राइकिंग होती हुई. बूम esports टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट है. तरन सोलोमन स्टैंडिंग, ये जो ग्रेनेड है बिल्कुल टच करेगा. ये जो ग्रेनेड है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. रैप्चोरी, बट नो, ट्रेजेक्टरी थी उस ग्रेनेड की वो बिल्कुल नहीं सही, बट तरन को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा. एंड ही इज गॉन. टीम सीक्रेट्स, दे गॉट एलिमिनेटेड एंड दे आर हैविंग 5 points, but टीम बूम esports उनके ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स आते हुए, मजीद प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा और बहुत सारा शॉट्स उनके ऊपर आता हुआ. ASI esports उनके अंदर जाना पड़ेगा. ज़ाइफा के ऊपर ग्रेनेड आया. टीम फ्लैश, द डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड दे आर ऑन द सेकंड स्पॉट. ये जो फाइट है, ये जो टकराव है टीम फोर्स ट्राइब्स और टीम फ्लैश के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा इंसेन, बट हेल्प कर रही है ASI esports की टीम. फोर्स ट्राइब्स की यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद होती हुई इनके ऊपर थर्ड पार्टी आ जाएगी. सो टीम फ्लैश यहाँ से बहुत ज्यादा टफ टाइम को डील करते हुए, बट द थिंग इज टीम फोर्स ट्राइब्स उनके लिए जीवन दान उनको मिलता हुआ. अभी भी यहाँ पर एक प्लेयर डाउन है, 2 प्लेयर्स यहाँ पे जा सकते हैं, बट वो रिवाइव हो जाए तो शायद से बेटर के सिनेरियो के अंदर टीम फोर्स ट्राइब्स आ सकती है. बट एज ये जो मैच है ये एक और बहुत ही ज्यादा रोमांचक मोड की तरफ चलता हुआ. वी कैन सी टॉप 3 टीम्स स्टिल अलाइव. विनेज यहाँ पर आईक्यू की तरफ से आते हुए 224 ओपी अपने शायद से M416 के साथ तैनात, और टॉप्स के ऊपर एक वेल कुक्ड ग्रेनेड एंड ही इज गॉन. Flash is now only 1 player standing. Things are looking unfortunate for them, and things are looking really good for the side of Force Tribes at the moment. With 3 eliminations, they're still at the top. They're still building up the lead, but boom, they're picking up the pace as well with 5 eliminations now. 3 players standing, same as Force Tribes. But ASI 8 on the other hand, 4 players standing, 5 eliminations. And as did say 4, Crypto, he will hit the deck. They will have to go for the revival. It's still gonna be a 4-man squad for them. Zeus is the only one standing outside of Flash. But what can he do? How long can he survive? These are the questions everyone
probably is going to be thinking about. But there you have it. The answer is right there. 6th position, 2 eliminations, as he's not going to be alive for any longer. A side with 4, T2K with 4, Boom with 3, 4 tries with 3, DRS with 3 as well. Good game for the side of DRS. And once again, this is Miramar. DRS and Flash are usually the most consistent ones. Unfortunately for Flash, they did manage to survive till top 6, but in terms of elimination, they don't really have a lot to show for. And now going into the next matchup, they will be feeling confident here on the map of Rondo, but we'll have to wait for that to come into play. We are not done with Miramar yet. 17 players, 5 teams, 24 minutes about to come into play. Stage 6. 1 minute before we close in that circle. So the teams now, we knew this was going to happen, right? We knew as soon as Miramar went towards a slower start, we immediately understood that towards the later half of the game, towards the final circles, we will be witnessing much more aggressive and chaotic circles. टॉप 5 टीम्स हमारी स्क्रीन पर एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिर से एसाइट ई-स्पोर्ट्स एंड टीम फोर्स ड्राइव्स आती हुई फाइनल के अंदर. देखिए पिछले मैच के अंदर हालांकि यहाँ पर टॉप 5 के अंदर आ तो पाए थे एंड मैं बोलूँगा टॉप 2 के अंदर भी थे, बट चिकन डिनर नहीं आ पाया था क्योंकि पिछले मैच के अंदर बूम ई स्पोर्ट्स के पास में 4 प्लेयर्स जिंदा थे. बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम ए साइट ई स्पोर्ट्स के पास में 4, टीम T2 के ई स्पोर्ट्स के पास में 4 एंड बूम ई स्पोर्ट्स दे आर ऑल्सो हियर. सो एच जो टीम्स यहाँ पर फर्स्ट पेज में या फिर टॉप 5 या टॉप 6 के अंदर है वही टीम्स यहाँ पर टॉप में आ रही है हर एक गेम के अंदर. सो कंसिस्टेंसी अगर आप यहाँ पर पहली टीम से देखना चाह रहे हो तो देखिए वही हम लोग को देखने को मिल रही है. और जो कंसिस्टेंसी होती है इट्स नॉट अ वर्ड एनी मोर, इट्स नॉट अ टर्म, इट्स नॉट अ फैक्टर. अभी एक 8 बन चुकी है, ये पेशेंस रहनी चाहिए. बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम फोर्स ड्राइव्स सिर्फ एक ही उनका प्लेयर दाव पे लगा था, उन्हीं एक प्लेयर का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा था जो थे नॉक. उसके बाद में यहाँ पर टीम फोर्स ड्राइव्स इन 3 प्लेयर्स के साथ में आगे कैसे बढ़ती है, कैसे एलिमिनेट करती है अपने यहाँ पर एनिमीज को एंड ओपोनेंट्स को. देखिए जोन के अंदर भी यहाँ पर अपनी स्पेस बनानी पड़ेगी. ये जो जोन है सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख सकते हैं डीआरएस के पास में एक डेड सेंटर रहेगा. सो दे आर आल्सो एंजॉयिंग, बट शायद से कुछ शॉट्स टीटो के ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी आते हुए बूम ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, if I'm not wrong, या फिर actually yeah that is oh no that's actually team fourth drives यहाँ पे कुछ शॉट्स लिए थे T2 के ई-स्पोर्ट्स के ऊपर. बट जोन के अंदर कौन पहले जाएगा एज, बिकॉज हम लोग जोन के अंदर सिर्फ एक टीम देख सकते हैं जो रहेगी DRS. It's going to be a most I mean DRS is the only single team into the zone right now. That is true. The only team that is going to be feeling really confident at the moment is DRS, and they're holding on to their ground. They have full control over this region. It's a stage 7 circle as well, and now in the next minute it will come into close. So a lot of these teams will be losing. Some of the players might lose all of them too. You never really know. T2K, they have to come out in the open. This is looking very scary. Same thing could be said for the side of Fourth Tribe. This is a fight between these 2 teams before they actually head on into that circle. Both of them have to come out in the open. Those vehicles will be coming into play now any second. That's 45 seconds before stage 7 circle comes to a close, and stage 8 circle will be on our screen. We'll have to wait and see if the circle will be favoring the DRS and Boom anymore. Because I believe even Kibo is in the circle right now as ASI8 also comes back in. T2K now closing in the distance between them and 4th Drive. This is going to be a fight. 4th Drive, T24 gets one. Kibo with the grenade on the other hand will be dropping down on the players inside of ASI8. T24 still alive, still clicking strong with the SWLK. SWLK, is it enough? No! It's a Jada who comes out on top, barely surviving by the skin of his teeth. He will be the one taking down 4 Tribes. I mean, T24 tried his heart out, but just wasn't enough. The DBS reigned supreme over S12K. The recall there, the spread was just too much. As we're down to the top 4 now, DRS, ASI, Boom, and T2K might be up to 3 players, but they are in a tough spot still. Exactly, they are in a tough spot, that is for sure. And now we can see the fight is happening. And ASI esports and DRS Boom esports सभी लोग यहाँ पर आसपास में आते हुए. And now we can see DRS यहाँ पर हाथ में रहेंगे ग्रेनेड, M416 रहेगी हाथ में, सब प्लेयर्स यहाँ पे तैनात. T2K esports, DRS Boom esports and ASI esports. 2 नेपाली टीम्स, एक इंडोनेशियन टीम और एक पाकिस्तानी टीम. देखते हैं किसका झंडा लहराएगा लास्ट के अंदर. एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं DRS 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन लोगों के पास में रहेंगे एज. But the thing is, Nepali teams, finally they are here.
देखिए इससे पहले वाले दिन में ग्रैंड फाइनल्स 1 के अंदर, डे नंबर 1 के अंदर, या फिर इससे पहले के मैचेस में हम लोगों ने किसी भी नेपाली टीम को एंड तक ना आते हुए देखा, नहीं चिकन डिनर ले पाया। एंड तक तो देखा, बट जो चिकन डिनर है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया था। बट देखिए डीआर स्पोर्ट यहाँ पे किया जाएगा T2K esports को नेपाल वर्सेस नेपाल, किलर वाइट यहाँ पर लेते हुए डोमिनेशन का खिताब। SI8 might just be the one coming on top with those 4 players standing. It is looking really good for them. I mean, DRS with 3, T2K with 2, Boom with 3. Clear advantage for the SI8, but once again, we've seen teams, even with the disadvantage, turn the game around, turn the tide in their favor. And if that's going to be the case, then I mean, anyone can come out on top. But if ASI can capitalize here on the players inside of DRS and Boom at the same time, things might be looking good. It's a Sage 9 circle coming into play now. In the next few seconds, there will be no more circles. Everyone will have to come out into play. And Boom, with this only compound here that they're going to be using for their cover at the moment, Kibo has to be careful. He might be the first one going down as the grenades are going to be raining in. ASI8, they're together, all 4. जी हाँ बिल्कुल, टॉप 4 टीम्स। और यहाँ पे जो दरकार चल रही है SIT esports के अगेंस्ट, सब लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स कवर अप करने के लिए। बट यहाँ पर अजय को सपोर्ट किया, शॉट्स यहाँ पर जाएंगे बट नहीं, सामने से जो रिटेलिएशन शॉट्स थे वो ज्यादा बेटर। बट प्रीतम यहाँ पर डाउन होंगे, वो जो ग्रेनेड उनके ऊपर गया, प्रीतम को यहाँ पर दोबारा से डाउन किया जाएगा। दिस इज नॉट गुड। SIT esports यहाँ पर लीड कर गया, बट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर शॉट। बट शायद से SIT esports स्टार प्लेयर का जो एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होता हुआ, एंड दे आर गॉन। TRS गेमिंग, सोलोमन स्टैंडिंग, बूम esports, क्या यहाँ पे दूसरा चिकन डिनर आ रहा है या फिर नहीं? दो नेपाली टीम और एक इंडोनेशियन टीम। इट्स लुकिंग इनसेन, बट नो स्पोर्ट यहाँ पे फ्रैग को किया जाएगा, एंड इट्स एक्चुअली T2K वर्सेस टीम बूम esports. The second chicken dinner is loading in for the day. Oh my god, looks like that is gonna be the case, but T2K can actually capitalize. And as you said, you know, they might just be the one coming out on top this time around. Let's see. Diaz is already gone, which means the counterpart is all over here. Now it's all up to them, and one grenade is all it took. Boom will be denied of that chicken dinner. T2K. WWCD, they will get that chicken dinner, but one grenade, oh, that's gonna haunt Boom. That is definitely gonna haunt the side of Boom esports. But congratulations, T2K esports. They deserved it with the way things have been going on for them, with the way they have improved, and with the way they've shown up today. It was about time they got themselves a chicken dinner, and well, there you have it. There we have it. What an insane level of freaking grenade we have seen. An insane performance, and we are done with 3 matches. And after this, we'll repeat the cycle. Man, Edge, thanks for wearing that hat, man. Finally, we can see the intense matches and battles incoming. Yeah, I mean, I was having a really good hair day today as well, but I was like, you know what? We need some action. Or masaladar matches, as you say. That's what we needed. So I was like, you know what, we go on with the hat, we hope for the best, see if it works, and well, it is working. Great start to the day here. I mean, 3 matches, 3 amazing matches. It did start off a little slower, to be really honest. It was a little slower than what we would have liked. But damn, what an end. I mean, what an insane end it was. But Alter Egos, I'd say, I mean, that was a good start. And कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि Alter Egos यहाँ पे जीत सकती थी, but they are fragged from the backends. यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन कवर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको एलिमिनेशन आता हुआ. बट अभी हम लोगों ने देखा यार, I mean this fight, I was talking about this one, Krypton पीछे से यहाँ पे फ्रैग की एक सिंगल गोली टच करती हुई जाएगी और उसको यहाँ से एलिमिनेट करते हुए. Team BTR, that was also an insane fight coming in, but Team BTR, man, the defending champions, they are struggling. Edge, can they actually pull up a great win in Asia Bible Chapter 3rd Phase 2nd Grand Finals? So, and Huzaifa, man, I have to say the tracing here, it was just on point.
strategy, all these teams. I mean, if you take a look at the timer, right? It started off slower than expected on the map of Miramar. But then as time went by, pace was picked up by everyone, as a matter of fact. Everyone did show up and everyone tried their best towards the end as well. I mean, unfortunately for Team Flash, they didn't really get a lot of points going into this one, but they'll be happy with the 6th place finish. But DRS, they had a chance. ASI 8, unfortunate turn of events towards the end, but then the Maharani nade. So good. That was so good. Why did you tag it like Maharani grenade? I mean, it was Maharani who threw it, so might as well, right? Okay, no mind. Let's just have a look on the team stats, the winning team stats, because T2K Esports, I mean, they were in the non-void, but still, they made it happen and they will be taking this winner chicken dinner. So, good performance, 9 in total elimination points they are having. I'd say it was a decent number, Edge. It is actually a pretty decent number coming in. It's a good number if you ask me, going into the map of Miramar, especially as Frag on the side of DRS will be the overall, I mean, will be the MVP of the match. 4 eliminations, 659 damage, 1 assist, 29 minutes and 52 seconds of survival time, 2 knocks and 338 heal. That's what he that's what he performed. That's how he performed into the match. 75% damage distribution towards the legs, lower body, that is 25% body. He didn't really aim for the head this time. But regardless, he is the MVP. There are other top players there for sure. I'm guessing there should be someone on the side of the winning team, right? There should be. I mean, that's true, and we'll be having a look on the overall, I mean, not actually overall MVP, but top 4 MVPs from the previous game. I mean, not MVP, but top players. I'm so sorry. But these are the top 4 players, and Edge, DRS Frag, he will be taking that MVP. And Killer Whitey from the side of DRS, I mean, that was insane. And 2 of the players of ASI Esports. So, 2 teams, 2 players. It's just insane, man. And all the 4 players, they're looking good. And especially Preetham and Krypton. Good performance, man. A huge round of applause for playing an insane level of 1, but the chicken dinner is still lacking behind. That is true indeed. I mean, ASI, they've been performing really well. They're picking up the pace as well towards the end. I mean, this game, it did feel like they might be, on the verge of getting a chicken dinner, but that wasn't the case. But it does keep them, on one of the spots for the teams to watch for. ASI 8, 7 eliminations, 2000 plus damage, insane amount of damage. They're the top damage dealers out there. 9 eliminations for DRS. Unfortunately, did come out short too. BTR, we were talking about them, how they could get the chicken dinner into this one and maybe pick up the pace towards phase 2 grand finals, because chapter 2, they were the winners. Phase 1, unfortunately, they didn't even come through with to the grand finals. And T2K, well, this is a good game for them. 9 eliminations, not a lot of damage to show for, but they'll be happy with the 9, and the chicken dinner as well. So 19 points there. They will have a jump on the overall. As we take a look at the match summary, we have 69 total eliminations, 10 grenade eliminations, 3 airdrops looted, no vehicle elimination this time around, 9,629 healing done, and longest elimination, well, GenForce, I believe, was it the Mini 14? I'm not really sure if it was a Mini 14 that came into play, but 373 meters, regardless, the longest elimination coming in from him. That's true. I mean, this is the typical match summary for you all on the screen right now, just to have a look. And there we go. I mean, great matchup. And GenForce, we will be taking that longest elimination, which is just insane. But overall MVP, match rankings, which will be making a huge, I'd say, a storyline for us, and especially a huge move. But for Thrives, I just want to have a look because I guess they're on the first spot if I'm not wrong. But T2K Esports, I just want to have their positioning, but they will be having 19 points. DRS will be taking 14. Team Boom Esports will be taking 12. SIT Esports will be taking 11. 4 Thrives will be taking 6. PTR 6. PANDUM. Till Team 52 Esports, they got eliminated way too early. They did try their level best to make that chicken dinner happen.
but it wasn't for them. I guess into the upcoming one, they will try their level best to pick some chicken dinners. But let's just have a look on the overall rankings because Team 4 Threat still just thriving on the first spot of the overall ranking. Team Boom Esports, they did exchange their spots against Team Secrets, if I'm not wrong. Team Secrets, they are at the fifth spot edge. Oh no, that's bad. I mean, not exactly bad. I mean, I think it's decent. I think they're picking up the pace, slow and steady wins the race, and I think the consistency is what's important. And you can see 9 points into first game, 11 into this one, into the previous one as well. So I think ASI is on the word of greatness there. 2K, 65 points, 60 for TTK, DRS and 58, along with PANDUM 55. Decent numbers, and once again, pretty close competition if you ask me, between all of these teams. As we head down to last the second page of the overall, we have BLUG on 48 points, 47 for VOIN, 52 Alliance, so WARGAYE, there's RRQ there towards the end. Unfortunate situation for a lot of these teams. So let's see if these teams can pick up pace in the next upcoming matches, the next cycle of matches, as we still have VOIN on top of the overall MVP. A couple of changes up and down. Rosemary pushed down. Lelebo, I believe, did step up to second position, but that's about it. Nothing to really worry about there on the overall, and nothing to really worry about for the fan favorite teams as well. Because once again, no real advantage. It is just to show some support and love, and we know you guys are cheering for all of your favorite teams. Both tribes, I mean, your fans are always there, are always showing up, and they're also performing well today and day before. I mean, yesterday as well, they performed out of their mind. DRS, on the other hand, they are still yet to pick up the pace, but their fans are already here with the pace. That's right. The fans, they always keep on supporting the teams and the players. So that's really good. But let's just have a look on the giveaway winner, if I'm not wrong, Edge, because हर मैच में हम लोग giveaway कर रहे हैं एंड giveaway के अंदर क्या है, if you guys are wondering, it is an elite royal pass आप लोगों के लिए. अगर आप लोगों ने अभी तक giveaway के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाइए जल्दी से आके पार्टिसिपेट करिए एंड हम लोग आप लोगों को गिव अवे के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके एक बारी स्टेप्स बताना चाहेंगे. हाउ टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे आप लोगों को पिन कमेंट दिख जाएगा चैट के अंदर, या फिर आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिख सकते हो चैट सेक्शन के अंदर. सो आई एम टेलिंग यू गाइस टू डू इट राइट नाउ. एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे लिखिए, वहां पे आप लोगों को नाइटबॉट एक लिंक देगा, टैप ऑन द लिंक, आप लोगों को एक वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट करोगे एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द विनर. लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द विनर एज वेल. थैंक्स फॉर दैट एंड देयर वी हैव इट. सो हम लोग जो स्टेप्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर आप लोगों को एक इमेज दिखेगी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, उस इमेज के ऊपर टैप करना एंड आप लोग वहां पे अपना आंसर, अपना रियल नेम और उसके साथ में अपनी PUBG मोबाइल की कैरेक्टर आईडी सबमिट कर देना. एंड दैट्स हाउ यू जस्ट got yourself participated into the giveaway. Really easy simple steps. ज्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने नहीं किया है. सो एक दफा जल्दी से जाके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए. And there we have it, Edge. This is going to be our giveaway winner of our third match of Miramar. 3 more maps left. 3 more of you fellas will be getting a free Royal Pass. Well, how do you do that? Well, it's pretty simple. You type in exclamation giveaway in the chat, get yourself the link, follow the instructions, and, well, type in your real name, answer the question, of course, first. And if you get it right, you will have a chance to win. And for that, you need to make sure you enter the proper real name and the correct PUBG Mobile character ID. So do not hesitate while doing that. Make sure you type that in a little cautiously, as we are now entering the map of Rondo with a little caution, as we have 3 teams from 3 different regions coming out on top here in the first 3 maps. Rondo, Angle, Miramar. Well, here we go. Rondo, Angle, Miramar again. And Flash pulled out a beautiful chicken dinner last time. It was one of the best, if you ask me, in recent times. In terms of picking up the pace from a disadvantage. In terms of eliminations and everything else, I still think yesterday's Team Secret 39-pointer was the best Rondo we've seen in terms of any team just absolutely dominating and making a mark for themselves. As we are now headed to the second round of the day, ladies and gentlemen. This is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3, day number 2 of Phase 2, Playoffs, second cycle. As we have 2
flight paths here. The multi-flight coming in. One of them starting off towards Jarena City, ending towards the western side. Once again, pretty basic. We're starting off at the up north, ending down south towards Rinjan. A lot of these teams will have a lot of opportunities to pick up all the loot, go for any part of the map. As a matter of fact, I mean, the only real intersection there is Shuanshan, Danching, maybe Yulin and Lanpo. Really, I mean, Rinjiang is also a good intersection there. But you can see Wargaye dropping down pretty early. 52 esports towards Ryan yet again. They don't really want to go for the fights. This is kind of awkward. I thought maybe we'll see them pick up the pace because we know how good they are, and we kind of want to see them get those points. And Rondo is the one map where you can go berserk, be a little more dominant, be a little more aggressive, do something stupid, and if it works, it works. If it doesn't, well, you always have that recall to play for. And I think that's how you guys, I think that's how you should play on the map of Rondo, because everyone's expecting you to perform in a certain way. But then you pull out something out of the blue that even you don't know is going to work or not. And if it works, well, you know what to do the next time. If it doesn't, well, you always have a recall to work with, and you always have your previous stat to go for. And here we have Dancheng, once again, the second favorite spot for the side of 4th Tribes, as they will lose a player. Zayfa right now in a tough spot. Will he be able to go for the knock here on towards the players inside of Flash? We're already very, very low. 2 players now surviving on side of Flash. They've already lost a player thanks to Wargaye, who are also in the vicinity. Now these Pakistani teams are diverting their attention from New York's factory towards Danching, which is kind of interesting to watch, because I really didn't expect them to let go of that area, as Flash will be losing 1. Wargaye will be up to 3 now. Flash once again lost 1 more. I'm sorry. They're losing more and more. BTR this time are putting the screws to them. So everyone, it just feels like everyone's taking down the players inside of Flash. It's not turning out to be a great start for them. But 4 Tribes, with all four players back up, they are surviving with no eliminations, unfortunately. They'll be happy with the damage dealt already and the dominance that they asserted. जी बिल्कुल यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स के अंदर इजाफा नहीं है. यहाँ पे जो फाइट्स आ रही है एवीएस के अगेंस्ट एसआईटी स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं. सो 3 टीम्स का यहाँ पे जो क्लस्टर है बन चुका है. कौन सी टीम यहाँ पर टॉप के ऊपर आएगी, लेके जाएगी इस एरिया को अपने नाम. टीम 4 ट्राइब्स देखिए हुजैफा बहुत ज्यादा लो हुए थे एंड अपने आप को यहाँ पे शायद से पैच भी कर लेंगे. सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो हुजैफा गुड डिसीजन इन कमिंग. टीम 4 ट्राइब्स के T24 ओपी बैक एंड्स पे यहाँ पर अभी तक जिंदा, और शायद से K2 को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. किल फीड यहाँ पर टीम 4 स्ट्राइप्स के प्लेयर्स ने बिल्कुल पड़ी होगी और उन लोगों को पता है ASIT स्पोर्ट्स को शायद से या फिर उनका एक अपोनेंट टीम का एक प्लेयर डाउन हुआ है. बट द जेवियर्स के खिलाड़ी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए बड़ी जो क्लस्टर बन चुका है यहाँ पे जो फाइट्स चल रही हैं ये बहुत ज्यादा इंसेन और शायद से बहुत ही ज्यादा अच्छी ओपनिंग मिली थी वो साइड्स के प्लेयर्स को, द जेवियर्स के कुछ प्लेयर्स को और खिलाड़ी को डाउन करने के. बिल्कुल हुजैफा अपने अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर स्ट्राइकिंग करेंगे. ड्रेसिल पीछे से आएंगे, एक रिटेलिएशन नॉकआउट लेंगे, बट हुजैफा ओपन के अंदर ही गॉट कॉट ऑफ गार्ड. How did this happen? How did the tide turn around? 4 Tribes now might be on the verge of getting eliminated as well. They gotta be careful. They lost 1 already. T24 hits a deadly Xavier. It's a great start for them. 4 eliminations already. And I kind of want to take a look at Flash. Can we please take a look at Flash? Because they just keep losing. They're going for those recalls immediately, but they're immediately losing players as well as PANDUM. Beautiful movements coming in from both of these players here. From WARGAYE and PANDUM. And Rage. My god. Oh my god. What a play coming in from HORAA Cypher. Oh my. Oh, the movements, man. The movements. Oh my. Insane. Oh my god. टीम वॉर्गे अभी भी यहाँ पर लाइव है. हम लोग इस सेक्शन के ऊपर जरूर बात करेंगे क्या यहाँ पर हुआ, क्योंकि AUGs, S12Ks
और यहाँ पर हर एक बुलेट ट्रेन सुप्रीम कर रही थी। टीम वॉरगे वर्सेस टीम 52 ई-स्पोर्ट्स। ये जो रिवेंज है, ये जो राइवलरी है, कभी रुकने का नाम नहीं रहेंगी। शाका जो सोलोमन स्टैंडिंग, क्या यहाँ पर एक 1v3 कर पाएंगे या फिर नहीं? टीम 52 अपने उस आखिरी खिलाड़ी को यहाँ पर रिकॉल भी कर लिया जाएगा। पर टीम 52 एंड टीम वॉरगे, दिस इज जस्ट एन इमेंस लेवल फाइट जो हमेशा हम लोग को देखने को मिलती है। ग्रेनेड यहाँ पर जाएगा, कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनेगा। शाका को सपोर्ट किया, ही इज रियली लो इनटू द एचपी। डाउन यहाँ पर करेंगे टीम वॉरगे। इसी के साथ में का एक और प्लेयर डाउन होता हुआ। बट मैन ओ मैन, हर जगह पर हम लोगों ने देखा, वहां पर M416, एस्ट्रल केस, AUG गूंज रही थी वो गन्स और उन लोगों की वहां पे बुलेट्स। दैट वाज एन इनसेन फाइट। I absolutely love the movement coming in. It's kind of unfortunate to see them get taken down, but that was a beautiful showcase of skills there for a second. We will get to witness that again with during the match highlights, but for now we will be down to 16 teams, 58 players as RIQ. Zenforce is going to get taken down. VOIN are in the vicinity and they might be going out as well. They will lose one more. Potato gets taken down. RIQ will go for that trade immediately. They will be waiting to see for those to go for that recall later on. But for now, they're looking out for any more eliminations that they can get. Team Flash getting eliminated pretty early is unfortunate too, especially on the map of Rondo. We were expecting them to do something incredible, but it's just not going to be the case. Last Rondo, they did get the chicken in. This one, well, unfortunately, they're out pretty early. That's unfortunate. VOIN esports यहाँ पर 18 टीम्स के साथ में हम लोग ने स्टार्ट किया था ये मैच एंड 16 टीम्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। VOIN esports यहाँ पर 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर इजाफा करते हुए इस गेम के अंदर। पर 5 शायद से डाउन हो चुके हैं, उनका रिकॉल है या फिर नहीं वो देखने वाली चीज़ रहेगी। टीम 4 ट्राइब्स यहाँ पे अपने पैरों पे और कदमों पे दोबारा से खड़ी हुई थी क्योंकि कुछ प्लेयर्स डाउन होते हैं, स्पेशली यहाँ पर हुजैफा भी डाउन हुए थे। बट वो जो प्लेयर है 2K esports का स्पॉट उसको यहाँ पे किया जाएगा एंड टीम 4 ट्राइब्स रुकेगी। बहुत ज़्यादा लो हो चुका है वो प्लेयर, शायद से डाउन भी किया जाएगा बिल्कुल। एंड टीम 4 ट्राइब्स को यहाँ पर अपना पहला elimination point मिलता हुआ। So Edge, we are heading towards to a very calm section of Rondo. So इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर हमारे ऑडियंस को एक बार दोबारा बता देंगे कि यहाँ पर अभी तक एक चैट में गिव अवे चल रहा है, अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। So make sure to participate in the giveaway and there's a link into the comment section. Just tap on it. वहाँ पर आप लोगों के पास में एक इमेज होगी, उसी इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन होगा and all you have to do is just उस क्वेश्चन का आंसर करना है, अपना रियल नेम एंड PUBG मोबाइल कैरेक्टर ID डाल देनी है and then submit it and that's all you have to do to participate yourself into the giveaway. So जाइए जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करिए। देखिए मैच अभी जो है अभी ज़्यादा मैं बोलूँगा स्लो पेस मोड पर चलेगा। रोमांचक मोड इस मैच का बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, so कहीं जाइएगा मत। बट टीम द सेवियर्स, Edge, do you want to make a prediction or do you want to just make a guess which team might actually win this match of Rondo? On the safer side, to be on the safer side, I refuse to answer that question. Just to, just not to cast discuss anyone, but I feel like Xavier has this in the bag. So there you go. I mean, I'm still gonna be going in for that prediction. You think I'm scared? You think I'm scared of the cast discuss? No, definitely no. It's gonna be Xavier. It will be Xavier. But for now, it's a good grenade coming in from Kent, actually. He will go for that knock immediately. T2K, the chicken skirts actually is still coming into play. They did get that chicken in the last time. And looks like this one, it is turning out to be an unfortunate turn of events as the last player standing right now is going to be Mimi. For how long is the question? As Maharani is down and bleeding. Mimi, the last one standing. I think BTR might be able to go for the squad wipe. Team BTR, BIGETRON by Vitality, we always keep on emphasizing on one phrase that this team is the champions from Asia Bangladesh chapter 2nd and कब तक यहाँ पर अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे वो देखने वाली चीज़ रहेगी। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम T2K esports यहाँ से होती हुई एलिमिनेट एंड एक बार हम लोग ज़रा मिनी मैप देखेंगे। जोन देखिए आप मैन, आई गेस अभी के लिए यहाँ पर इन इवन इफ यू आर प्लेइंग क्लासिक,
पबजी मोबाइल के अंदर सेंटर में उतरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग जाइए बिल्कुल एंड्स में, या तो साउथ साइड जाइए या तो नॉर्थ साइड जाइए, क्योंकि जोन वहीं पे जाके एंड हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो जोन है पूरा साउथ साइड शिफ्ट हो गया है, ये डंप कर चुका है पूरा जोन। एंड एक बार ही देखिए जो रोटेशंस आ रही है यहाँ पे टीम्स की तरफ से, टीम सीक्रेट्स वर्सेस टीम 52 esports कभी भी स्टार्ट हो सकती है। टीम अलायंस यहाँ पे पास में रहेगी, टीम बीटीआर भी यहाँ पर आ चुकी है, बैकेंड से यहाँ पे टीम सीक्रेट्स के जेरस बहुत ज्यादा दूर, द डीआरएस की टीम एक बार मिनी मैप पे देखिए कितना ज्यादा दूर है, कब तक अपनी रोटेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको साउथ साइड बिल्कुल डाउनटाउन में जाना है इस मैप पे। सो एज दिस इज लुकिंग इनसेन बिकॉज द जोन्स they are not going to favor any of the team. IGLs, they will be having a huge headache in the matches now. That's just something that these IGLs are pretty much used to at this point. I think we have seen enough drifting of these zones that these IGLs have already learned and adapted to such situations. And these Xavier, on the other hand, might be looking to take down the players inside of all three Guerreros. They've got to be careful, though. It's not going to be an easy fight there, as Alliance now, on the other hand, will be putting the screws to the players inside of 52. They get themselves another point. They're up to 48 now on the overall. There will be some retaliation, though. Buddy 95, gotta be careful. There are only two more players standing, and I think the confirmations will be coming in immediately. There's only one last player on side of 52. Will he survive this, or will he also be taken down by the players inside of Alliance? Alliances, the rotation clashes, जिस तरीके से मैं इम्प्रेस कर रहा था उस चीज़ के ऊपर, वही यहाँ पर हो रहा है। डिमोरलाइज नहीं होगी यहाँ पर टीम अलायंसेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उनका एक प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुका है एंड 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर लोगों को मिल चुके हैं। क्या यहाँ पर रिकॉल किया जाएगा उस प्लेयर को, या फिर क्या उस प्लेयर का रिकॉल इन लोगों के पास में रहेगा या फिर नहीं। अलायंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर प्लेऑफ्स के अंदर, सिर्फ 3 दिन का यहाँ पर इन लोगों ने खेला था पिछले प्लेऑफ्स के अंदर, एंड उसी के साथ में यहाँ पर टॉप 18 के अंदर आया। अच्छी यहाँ पर उन लोगों ने डोमिनेशन दिखाई है एंड अलायंसेस अभी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए सेकंड पेज पे ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर। एंड एक बार हम लोग यहाँ पे देखें 2K esports को, सो कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं, अल्ट्रा को कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं। देखिए दिस इज जस्ट अ काम बिफोर द स्टॉर्म। रोंडो के मुकाबले के ऊपर बहुत ही जल्द हम लोग को फाइट्स इनिशिएट होती हुई देखने को मिलती है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारी 4 टीम्स एलिमिनेट हुई हैं, दैट्स ऑल। ज़्यादा एलिमिनेशन नहीं है, मजीद प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर लॉबी के अंदर जिंदा क्या इजाफा करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बरकत करते हैं इस वाली मैच के अंदर, वो देखने वाली चीज़ रहेगी। एंड चलिए ऑडियंस से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है इस मैच के अंदर कौन सी टीम ऐसी रहेगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी। देखिए हम लोग तो प्रेडिक्शंस करते रहते हैं, क्यों ना हम एक बार अपनी ऑडियंस से भी पूछे और देखते हैं कितने लोगों की प्रेडिक्शन सही रहती है। सो मेरा सवाल है आप लोगों से, अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि कौन सी टीम ऐसी रहेगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी इस वाली मैच की। चलते हैं एक बार मैच के ऊपर दोबारा से। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से आके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करिए। डू मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो लेट्स जस्ट कम बैक टू द मैच। 2K esports यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगी, कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं है इन लोग पास में, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ आई से ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि ओपन के अंदर है, कोई भी कंपाउंड नहीं रहेगा। शॉट्स यहाँ पर आते हुए कंपाउंड, जैसी मैं बात कर रहा था, कंपाउंड को होल्ड करेंगे, रिपोजिशन किया जाएगा अपने आप को, विच इज रियली रियली गुड। टीम सीक्रेट्स, शेखी एमजे, टीम सीक्रेट्स, क्या ये एक वो दोबारा से मैच, एक वो डेजा वू वाली मोमेंट यहाँ पर हम लोगों को फील आ सकती है, क्योंकि कल के दिन के अंदर हम लोगों ने देखा था टीम सीक्रेट्स पहले राउंडों के मुकाबले पर तो नहीं, वो दूसरे राउंडों के मुकाबले पे 29 एलिमिनेशन पॉइंट लेके गई थी। क्या अपने ही रिकॉर्ड को वो दोबारा से तोड़ पाएगी, क्या एक नया रिकॉर्ड एशिया बैटल चैप्टर 3 के अंदर सेट कर पाएगी, या फिर नहीं। बट टॉप 3 टीम्स हमारी स्क्रीन के ऊपर जिन्होंने अभी तक हाईएस्ट डैमेज लिया है, जो रहेंगे नॉकी, विन एंड टीम सीक्रेट्स का एक और खिलाड़ी। बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन एयर साइड esports। पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके, देखिए पाकिस्तानी टीम्स एंड स्पेशली मैं बोलूंगा ए साइड esports बहुत ज्यादा फास्ट निकली है। टॉप 2 आ जाते हैं, टॉप 5 आ जाते हैं, बट लास्ट के अंदर जाके देखिए मैं बोलूंगा ये टीम प्रिपेयर्ड है, इनकी स्ट्रैटेजी सही है, सिनर्जी अच्छी है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है। वो जो लक फैक्टर है, वो जो लक फैक्टर कभी कभार खटकता है ना, वो बहुत ज्यादा बेकार है। सो लक फैक्टर आज के लिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ए साइड esports के हाथ में नहीं। बट देखिए आज भले लक खराब हो, बट वो जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो ओपनिंग जो होती है उसके ऊपर बहुत ही शार्पली और एक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर कैपिटलाइज करती है टीम एसाइड esports हमारी। सो ऑल पाकिस्तानी टीम्स स्पेशली मैं बोलूँगा 4 ट्राइब्स एंड एसाइड esports बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। बट देखिए आउटशाइन अभी के लिए यहाँ पर टीम इंडोनेशियन करती है, जितनी भी इंडोनेशियन टीम है वो आउटशाइन करती है। बट टीम बीट यार शॉट्स यहाँ पर आते हुए टीम 4 ट्राइब्स यहाँ पर नॉके डाउन हो जाएंगे। टीम ऑल्ट्रीगो एरीज
एक एलिमिनेशन पॉइंट्स, पहला एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा टीम फोर ट्राइब्स का। एक खिलाड़ी यहाँ पर डाउन, दो खिलाड़ी यहाँ पर डाउन, एंड हुज़ैफा एंड IQQ being the duo man standing. Alliances का एक बेहतरीन ग्रेनेड आ रहा है क्योंकि ऊपर, एंड ड्रीम BTR द डिफेंडिंग चैंपियंस आर बैक। एक बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पे दोबारा से जाता हुआ केंट, एक और ग्रेनेड की यहाँ पे पिन जो है उसको अनपिन किया जाएगा, और जो ग्रेनेड है शायद से लास्ट लाफ रह सकता है। बिल्कुल बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर आते हुए, एंड द यूटिलिटीज आर गुड बट नो, क्योंकि he just turned the emotions like that. Team BTR, उन लोगों के पास में 10 एलिमिनेशंस थे, बट कैन वी हैव सम जो के ओपी इन द स्टार्ट, बिकॉज जिस तरीके से वो जो ग्रेनेड था BTR के ऊपर जाएगा और सीधा वहां पे उनको एलिमिनेट करेगा। I was just talking about that one, but this is just absolute cinema here. This is not just a game anymore. This is emotion. This is a movie happening here. Team RRQ, Paragraphs being the full standing against Team Alliances. 1v1 की fight. He might actually get more points though. Ragos now holding on. That 1v1, that grenade is very good. But a counter grenade might be enough, might not be enough, but he will get taken down regardless. He actually did believe. I mean, it was similar situation to last time, the last Molotov coming in from the player on the side of Flash towards D Xavier, right? He thought that maybe that grenade will give him enough time to actually go for that play, go for that revival, but that wasn't the case. He's going to get taken down immediately as he will be pushing up. And the revival never came in. Regardless, he's gone, and now feels like Alliance might also be getting taken down here thanks to the play zone now being a menace towards them as D Xaviers, we diverted attention towards them. 8 eliminations now for 1, 3, and Zantara is the only one with no elimination points for themselves at the moment. 4 tribes with 1 elimination, 2 players still standing. Alliance, well, there you go, I told you, probably going to get taken down. And 11th position finish for them, 9 eliminations total. That's a decent number. They're up to 11 on the overall. They'll be happy with this start. They will be happy with the start indeed. I mean, इतना अच्छा start हो, इतना ज़्यादा अच्छा initiation हो match का, so every team needs that, right? But team 52 देखिए 7 elimination लेने के बाद में एक बहुत ही ज़्यादा slow pace game की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोग जो सामने कुछ टीम जिंदा है, gatekeeping scenarios की यहाँ पर बन सकते हैं, मजीद प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी लॉबी के अंदर जिंदा, एंड टीम 52 ध्यान देना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, एक भी गलती और शायद से इस मैच से बाहर जाने की दरकार और लॉबी तक का रास्ता दिखाया जा सकता है इस टीम 52। शायद से गलती तो नहीं करेंगे, बट टीम सीक्रेट्स की टीम ओपन के अंदर पकड़ी गई है। आयु के कुछ प्रेज आते हुए 2 ही एलिमिनेशन यहाँ पर टीम सीक्रेट्स को अभी मिले हैं। टीम सीक्रेट्स होती हुई यहाँ पे एलिमिनेट, एंड हुज़ैफा डाउन हुए, देखिए दूर दराज से यहाँ पे ये शॉट्स आते हुए, एंड आई गेस यहाँ पे एज रिवाइव भी बहुत इजीली कर दिया जाएगा। आईक्यू शायद से कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, अपने आके स्मोक्स किया है, उनको पता है ओपन से जाएंगे, सो प्लेयर्स इनके ऊपर यहाँ पे नजर गाड़ के बैठे हुए हैं, अपने शील्ड की निगाहों से उन AUGs के शॉट्स लेंगे और शायद से दिक्कत बन सकती है। हुज़ैफा का यहाँ पर रिवाइवल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जोन 250 मीटर जोन के अंदर भी जाना है, ये दिक्कत यहाँ पे लोगों को बन सकती है। टीम 4 ट्राइब्स कैसे जोन के अंदर रोटेट करते हैं, तो देखिए बड़ी चीज रहेगी, रोटेशन विल बी रियली क्रूशियल। It's so important. How do they make their way back in the circle? I mean, it's a question that everyone's asking at the moment. 30 seconds on the clock there. Yemi, he's gonna get taken down. Zentara with a beautiful grenade, and Yemi is gonna be on his knees bleeding as Xavier. They will get themselves another point here. They're looking like the favorites have to be 9 points for themselves as they are still alive with 4 players. Boom. They wanted to survive with 4 once again. Unfortunately, their plans are ruined. They're down to 3. Can they capitalize? But wait, what was your prediction again, Inferno? Who did you say that was going to be the ones coming out on top? Man, it's really hard, but I just don't want to give castigos. But Team 52 esports is looking strong, to be honest. 52 is also looking good. You're definitely right about that. Things are going to get spicy later on because 8 eliminations of them, 9 on the side of DX. Both of these teams are looking really good to actually survive towards the end and go for a finish clash. We'll wait to see how things turn out here towards the end of the game as Boom are still feeling the heat. D Xavier not going to stop anytime soon. They're putting the screws to the players. They will get another point for themselves. That's up to 10 now. D Xavier, Boom on the verge of getting eliminated. But for now, I think they will survive
Or maybe not, actually. VOIN and Boom will go against each other. Boom will lose one, but I think VOIN have lost everyone. Team 52. 9 elimination. I did pick up this team, so hopefully they take that winner in the chicken dinner. But I mean, anything is possible. But let's just have a look at Boom Esports. यहाँ पर शायद से इनको भी down किया जाएगा, and there we have it. Boom Esports, they are gone. And Glue, the surviving here too, and now we can see they are now having a lot of players to work with. And देखिए यहाँ पर अभी तक हम देख सकते हैं Team 4 Strikes. यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, शायद से 2 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स लोग मिलेंगे. 2 प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा, पीछे से यहाँ पर टीम अल्ट्रा ईगोज आती हुई है, यहाँ पे अप्रोच इन लोगों को कर सकते हैं. बट जोन का यहाँ पे शायद से एक अच्छा चंक है. और एज जो रोटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रोटेशन बहुत ज्यादा प्यारी यहाँ पर अभी तक टीम 4 स्ट्राइक्स ने करी. Both have 2 players and 2 eliminations. They're looking decent. But is it enough? Will this be enough to, I mean, at the moment, they will have, that number 1 spot for themselves. Boom, Flash, Team Secret, all of them are gone. ASI, they're 15 points away, which is pretty much not going to be an easy jump for them. If they can, they probably need like 4 eliminations and 5 eliminations and the chicken dinner here. But in the meanwhile, Iron actually is bleeding. So ASI might lose that player. So now down to 2 players. It's going to be even harder. Both tribes, they're still surviving here. So they will also be getting few more points going into this one. So it's not going to be easy for sure. Yeah, Alter Ego Aries. 4 players और 4 players यहाँ पे अभी तक लीड जिंदा. आई गेस यहाँ से शायद से दिक्कतें नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आपके पास में 4 प्लेयर्स हो तो चिकन डिनर की किताब आप लोग बिल्कुल लेके आ सकते हो. बट कुछ और भी टीम्स हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. टीम 52 esports, वो लोग भी यहाँ पर 4 प्लेयर्स के साथ में जिंदा रहेंगे. सो टीम ASI स्पोर्ट्स, इन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इजाफा करना पड़ेगा. बट शायद से ग्रेनेड यहाँ पर टीम 4 स्ट्राइक्स के ऊपर जाएगा, एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन करेंगे. बट यहाँ पर ASI स्पोर्ट्स की टीम क्रिप्टो और प्रीतम सर्वाइव करते हुए IQ को यहाँ पर डाउन करेंगे. कुल किल फीड के अंदर यहाँ पर एक्टिवेशन आता हुआ, एंड टीम 4 स्ट्राइक्स के हुज़ैफा भी सोलोमन स्टैंडिंग नाउ. शायद से उनको भी डाउन करेंगे. जी बिल्कुल. एंड यहाँ से टीम 4 स्ट्राइक्स होती हुई एलिमिनेट. 6 teams, 18 players, 22 minutes. Stage 6 circle. Have to see if 52 esports can make it to the top. The Xavier with 14 right now. Both of them have to be the favorites with 4 players standing. Everyone else, they do have a man disadvantage going into this one against these 2 teams. And as I say that, Akio is going to get dropped. Lumatic with a beautiful grenade, and Arkra is going to get dropped as well to his knees on as side of Alter Ego Ares. Will now pick up the fight against 2K. They are trading blows left, right, and center, and 2K, well, they're going to be the first one to get taken down. Alter Ego will survive with 1 player. And Glue, I think they might just get taken down here. But Team 52 Esports, they are feeling the heat. That's true. Team 52 Esports. The grenade is good. शायद से कार्बू के ऊपर कनेक्शन बिल्कुल लेके जा सकता है. एंड शायद से ASI स्पोर्ट्स के क्रिप्टो यहाँ पर फाइट के अंदर आते हुए. एंड क्रिप्टो इज लुकिंग गुड टुडे. ASI स्पोर्ट्स की पूरी टीम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट लेवल ऑफ गेम प्ले दिखाती हुई. एंड टॉप 5 के अंदर तो शायद से ऐसे ही चुटकी बजा के स्पॉट अपना बना लेते हैं. ग्लू esports को किया जाएगा एलिमिनेट. अल्ट्रा ईगोज, टीम 52 esports, टीम अल्ट्रा ईगोज एंड द सेवियर्स, ये रहेंगी हमारी कुछ टॉप 4 टीम्स. एंड देखते हैं कौन सी टीम लेके जाएगी सेकंड डिनर के किताब को. बट यहाँ पे कवर फ्लेयर्स को ओपन के अंदर यूज किया जा रहा है. एंड यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे अल्ट्रा ईगोज के. स्ने भी इज रियली लो टू द HP. ग्रेनेड जैसे कनेक्ट करेगा या नहीं. ग्रेनेड्स का यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं आएगा. एच टीम द जेवियर्स शायद से रन डाउन करेंगे उस आखिरी प्लेयर के ऊपर. एंड टीम द अल्ट्रा ईगोज का यहाँ पे एलिमिनेशन बहुत ही जल्द आता हुआ. Alter Ego Ares, they are gonna get taken down too, and there you have it. The top 3 teams now surviving here on the map of Rondo. On the verge of getting that chicken dinner here will be D Xavier, but just as I talk about that, there will be a knock and a counter knock coming in. 52 Yamozina, and he will be dropping down Crypto immediately. Sign still and deliver. He's gone out of the picture. ASI8 barely surviving now. The heal will be coming in. That's 52 Esports, IM, and Z9. Both these players are really good, and they definitely are gonna be
looking to get that chicken dinner from the hands of the Xavier, who at the moment built that revival, will be up to 4 players once again. Russell spotted out, will be compromising his position here, will be Yamil Zine, and a State 7 circle comes into play in the next 40 minutes. They will have to go for a play here, as I am outside the zone is going to be knocked. Unfortunate situation there, play zone be the culprit. But will they be able to capitalize? The last surviving player inside of ASI 8, where are you? Preetham, that is, I mean, he does have an IQ that's higher than most of them at the moment. But the players on the side of D-Xavier, the numbers advantage, they will put it to good use, and they will take 52 Esports down, and Preetham also gets dropped the freaking Xavier with an insane amount of eliminations, and will be the one coming out on top. So they have accumulated an insane amount of points overall, but with the winner chicken dinner, it not only gives them points, it also gives them immense confidence. Immense confidence and immense hope as well. The Xaviers, they played amazing, and this was a match indeed. Near in the pockets, great elimination points, great total points they will be having, and taking that chicken dinner with 10 positional points as well. We'll be having a look and the match rankings and the overall rankings. What is the case scenario for all these teams? That is true, but what a game this has been. Again, the Rondo, the twists and turns here towards the end has been amazing. We've seen teams, crumble under pressure. We've seen teams with 4 players standing just all of a sudden just get taken down by the teams. Just third partying, fourth partying. That's exactly what happened here again. We've had a really good chance. Flash once again did not really turn up going into this one. Unfortunate turn of events for them. DRS didn't really have any chance. T2K with the chicken curse there. Unfortunate. All of these teams, they got taken on pretty early, but Xavier, they'll be happy with this performance along with 50 Esports. Still a very good performance coming in from them. Insane amount of eliminations along with the 3rd place finish. Yep, absolutely. We'll be having a look on the match highlights now, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से The Xaviers vs Team 4 Tribes यहाँ पर देखा था, and इस जगह पर 3 teams का यहाँ पे जो cluster बना था वो बहुत ही ज़्यादा insane था, and then we have a team PANDUM. यहाँ पे इन लोगों की performance बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, but कहीं ना कहीं यहाँ पर इजाफा नहीं कर पाए थे, and then we have a team 52. I mean, they were really close to make it happen, but they weren't able to manage to take that chicken dinner. And Team 4 Tribes, इन लोगों का यहाँ पर ये पहला elimination points यहाँ पर मिलता है. Yeah, it started out, not towards New Factory, which is kind of, once again, unfortunate. We didn't really see a lot of New Factory today coming in on any of the rondos, as a matter of fact. So, things were looking good here for the side of 4 Tribes as well, up until a point. None of these top teams were really able to accumulate, but this play coming in from Alliance was really good. Eliminating Pragos there, even though he was very low. He did manage to get that elimination, which was important. And this was the end for Boom as well. The 4-man squad getting taken on by D-Xavier. Those 4 points were very important for D-Xavier. Not just gave them hope, but also gave them the confidence that they needed. And look at this. These 2 players just... it felt like they were chest bumping, but with cars, towards the end. And Preetham, well, he was going to get taken down. That was inevitable, unfortunately. But yeah, regardless... Xavier, a great performance coming in terms of eliminations as well. They have what, 14, 10, 19 eliminations, almost a 30 bomber. This will help them on the overall for sure. And Xavier are definitely going to be one of the contenders to get to that top 3 by the end of the day. Talking about the MVP, well, we all know who it is. It is gonna be the player on the side of D-Xavier. Shumui will be the one coming on top. No real headshot percentage. 8% is decent, but the body is impressive. 56%, 36% on the lower body. 8 eliminations, 1,026 damage. 2 assists, 25 minutes of survival time, 7 knocks, and 221 heal. This is a brilliant performance, and well, he has always been one of the key players for the side. A war machine, as Inferno likes to call it. But yes, not just him. It's Russell as well in top 4. So both of these players are helping D-Xavier, rile through
the overall standings there. Exactly. I mean, they are the war machines. And let's just have a look on the top four players. I mean, they were also war machines. Drasil, Worry 95, and Daku. Amazing, amazing performance to the previous one. Let's see. They actually maintain the same level of patience and consistency? It's a huge question. But we know the players are feeling good. The players are here to dominate and they will keep on dominating. That is for sure, Edge. But after this, overall, I mean, rankings and match rankings are looking interesting. Yeah, definitely waiting to see the match standings and the overall standings for sure. As we will be taking a look at the teams to watch. The Xavier has to be there, of course, but yeah, we probably will not be taking a look at that. But the Xavier is definitely going to be one of the teams to watch as we move forward. Total eliminations 98, 8 grand eliminations, 1 a drop looted. We have 0 eliminations, 9,227 healing done. And the longest elimination, 332 meters, coming in from Iron on the side of ASI 8. That's true. I mean, good performance it was, and this is the typical level of mass summary and a short and small brief for all the audience watching and joining right now. So, 98 total elimination on the map of Rondo. I'd say it was a decent number, not so much high, not so much less, and it was a recent game indeed. But Edge, the next thing it's gonna be the match rankings because we know that the level of performance we have seen in the previous one, a lot of I'd say elimination points and a lot of chaos we have seen. It was a chaotic one, that was for sure. बट देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर वो रैंकिंग्स के अंदर किस टीम के पास में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे. क्या वो टीम रहेगी जिसने चिकन डिनर लिया या फिर कोई ऐसी और टीम जिन्होंने ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स लिए हैं. I don't think so. I don't think it's been a battle between 52 Esports and Xavier in terms of eliminations. I don't think anyone else have even touched or even are going to be coming in close to both of these teams. I think on an average 6, 7, but apart from that, everyone else. I mean, apart from 52 and Xavier, which I believe are going to be looking somewhere around. I mean, we already calculated Xavier's score. It was around 29 on the side of 52. What are we looking at? 5 points coming in along with 12, 13. So 18 to 20 points for the side of 52 esports, and of for the side of Xavier, they'll be happy with just one under 30. And you can take a look at T2K. Unfortunately, 0 points. DRS with just one. And 52 Esports, actually, yeah, there you go. 17 points. DX with 29. 11 for SIA. 10 for all three you go, along with BTR. 9 for Alliance. Team Secret with 7. WARGAYE with 7 as well. BLUG on 5 with RQ. 2K Esports with 4. Anna with 4, 3 for Boom, and 4 Tribes. Although they were alive for a really long time, they could only accumulate 3 points, which is kind of surprising. I didn't really see that one coming. 3 for VOIN Flash, unfortunately, once again, a bad game for them. DRS, terrible performance coming into day 2. I gotta say, it is not the DRS we were hoping for. I mean, exactly, this is not the DRS we were hoping for, and no change. There's actually a huge change coming in. Boom Esports, Team Flash, they are holding their spot, but ASI Esports from 5th to 4th, and now we can see that one team, Team Secrets, they are going to get dethroned from their spot, and they're losing the consistency edge. They were able to capitalize a good level of matches, but slowly and steadily, it's not looking good for Team Secrets. But all these teams on the second page, they're struggling, and they kept on struggling. Pandum on 10th position, DRS on 11th, BLUG on 12th, Alliance on 13th, BTR on 14th, L3 on 15th, 16th, WARGAYE, VOIN, 17, RQ. Now pushed down to the very, very bottom. The only team that has not hit 50-point marker. 2 more games and we will be done with half of the games in the grand finals. And not hitting a 50 marker right now is kinda scary. You probably do want to have that momentum going in your favor. You want to have that the confidence, obviously, and the lead. Well, now it is building up. Things are just looking scary here for the teams at the bottom. That's right. I mean, things are looking scary, and
It's all about the performance, but let's just have a look on the overall MVP, because all of them, they are just performing out of their minds right now, because Flash, when he's just insane, the Xavier's Russell, he's also insane level of players, and Rosemary, he's just constantly there, and he's just very, very great with his gun power, and we can see the great example of him in the overall rankings. And as at eSports Crypto and 4Thrives Noki will be joining the squad as well in top 5 players. Yeah, no changes here. Just Russell coming up, and Noki now pushed down to 5th as WIN. Is already still sitting on top. It's not going to be easy to move him, but I think Rosemary and Russell might just be on a roll here at the moment. Noki, I mean, he had a really good chance here on the map of Rondo to actually turn things around, but that wasn't the case in Crypto on the side of ASI 8. He is performing consistently well, so I want to say there is a chance, but at the same time, every time he has a chance, when Rosemary, Russell, Noki also have a chance. So technically, everyone does have a chance. As we will head back to overall ranking, just to once again give you guys a quick look before we head down to one of the last matches into the grand finals. We will be taking a look at the fan favorite teams, and 4Thrives once again will be the ones on top. That's true. They are on top right now, and they're just totally dominating. I mean, the fans are totally dominating, to be honest. So good, I'd say, support coming in from the side of fans, and this support is indeed needed, because if the team is not able to perform good, so the votes will give them confidence. But congratulations on the player of PUBG Mobile on winning that Royal Pass. If you guys are wondering कि आप लोग कैसे Royal Pass giveaway इसके अंदर participate कर सकते हो, all you have to do is just type !giveaway into the comment section. अगर आप लोगों को वो भी नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. There will be a link into the comment section. सो उसके ऊपर जाइए, उस लिंक के ऊपर टैप करिए, एंड वहां पर आप लोगों के सामने एक इमेज होगी. उस इमेज के ऊपर टैप करेंगे एंड उसी इमेज के ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन भी होगा. सो जाइए एंड उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है, एंड आंसर के बाद में यू हैव टू राइट योर रियल नेम एंड PUBG मोबाइल कैरेक्टर ID. सब कुछ यहाँ पे जो स्टेप्स है बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना है एंड सबमिट कर देना आपका आंसर्स, एंड दैट्स इट. बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स है, एंड यू जस्ट मेड योरसेल्फ to get participated in the Royal Pass giveaway. And if you guys are enough lucky, so maybe हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर giveaway भी जीते. 4 matches done, 4 winners already have gotten away with Royal Pass. So I mean, 2 more matches left, guys. You guys do have a really good chance to get your hands on a free Royal Pass. All you need to do is follow what Inferno just said. Easy peasy, lemon squeezy. That's all I'm gonna say. Erangel, Miramar, that's all that is left now of day number 2 here in the grand finals. Before we end the day, before we look back tomorrow, before we come back tomorrow, that is. It's a pattern. Do we call this a pattern? Both Rondos going to Vietnamese powerhouses. Erangel, now will it be another Indo dominant? We'll see. We'll see how things are gonna unfold here going into this one, as we will be witnessing once again a little slow of a map here on Erangel and Miramar. As a matter of fact, I think both of these teams, both these games, are probably gonna be a little passive, more point centric games now. Accumulating points are probably gonna be their main priority. Something in my eye there for a second. Ooh. Anyway. Flash, first one. Boom, second one. TTK, third. Xavier, now here. Now, Boom, being an Indonesian team, Erangel, once again, if anyone's being as superstitious as I am sometimes, you will probably be expecting maybe an Indonesian. Do we have Alter Ego coming up? RIQ, they will love some points here going into this one. RIQ desperately needs it though. They're the very bottom of the score of the overall standing, so they desperately need it. Will it be 2K? PANDUM? I mean, yeah, anything could be possible here, because we have seen 4 matches and 4 different विजेता हम लोग को अभी तक देखने को मिले हैं, एंड ग्रेट परफॉर्मेंस. बट जो Erangel रहेगा यहाँ पर पेस डिसाइड करेगा कल के दिन के अंदर.
आज मैं बोलूंगा टुडे इज गोइंग टू बी द डे ऑफ कमबैक. अगर आज आप लोग कमबैक कर लेते हो, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सेकंड पेज पे जो टीम्स यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है ओवरऑल एमवीपी, आई मीन सॉरी ओवरऑल मैच रैंकिंग्स के अंदर. सो अगर आज वो आज के दिन के अंदर एक कमबैक दिखा देते हैं एज, सो दैट इज इट. कल तो यहाँ पर आप लोगों को मैचेस खेलने हैं. सो कल तो कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी. बट द थिंग इज कि टुडे is the day to make the comeback happen. कल यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा chances नहीं मिलेंगे क्योंकि the teams they will keep on bouncing, right? So this is going to be Asia Balbu's chapter 3rd. It is going to be match number 11 and let's see कौन सी टीम यहाँ पर इस मैच के अंदर अपना खिताब लेके जाएगी. एंड मिलिट्री बेस से स्टार्ट करेंगे एंड जॉर्ज पूल के आसपास वाले रीजन पे हम लोग खत्म करेंगे. मिलिट्री बेस, नोवोडेपनोय, फेनिफेर, क्वेरी, प्रिमोस्क, पोशिंकी एंड जॉर्ज पूल कंटेनर कुछ ऐसी जगह रहेंगी जो फ्लाइट पाथ के बिल्कुल आसपास. Military base has been, I mean, every time we see similar, flight paths, military base has been where the circle leans towards. And I think that's exactly why we see more than one team this time jumping in towards military base. I think 52 would love Novorepnoy. Sosnovka towards the center. I believe VOIN are going to be dropping in. Pandum, are they going towards farm? Okay, that is towards farm and Milta. I actually thought they were also going towards military bay, but that's not going to be the case. And we are still waiting for the circle to see where they actually drop in. This is going to be interesting to see how the teams are going to be adapting to the circle. And where does it go? If it goes up north, is it going to be ridiculous? And well, it does have a little bit of water, but that circle coming in to play, which means Voin and 52, they have to be worried about 4 tribes bridge camp. Ooh, the circle. I mean, I'll take that. It's a good circle क्योंकि majority of the teams जो है वो zone के अंदर ही रहेंगे. एंड देखिए यहाँ पर हम लोग को 4v4 battles एंड शुरुआती phases के अंदर यहाँ पर फाइट्स देखने को मिलेंगी. अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं oh man, they found the pistol, team WARGAYE यहाँ पर प्रिमोस पे उतरते हुए डीआरएस के अगेंस्ट. एंड यहाँ पर ये जो फाइट स्टार्ट की रेज यहाँ पर पास में रहेंगे. इस ट्रिपल स्टोरी मैन यहाँ पर ये जो फाइट है चलती हुई बहुत ही ज्यादा इंसेन. साइक्लोन के हाथ में रहेगी एक सिंगल पिस्टल. और यहाँ पर एसआईटी स्पोर्ट्स वर्सेस T2 के स्पोर्ट्स एक और लेजेंडरी फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है स्टेल बार के 70 के रीजन में. एंड डीआरएस गेमिंग, they were able to capitalize one against their enemies. Can they actually find more and more edge? Oh, T2K, SIT Sports won that fight, Edge. Immediately. We dropped in, 1 minute? And our top two teams are Pakistani teams. Look at that. They are now, I mean, ASI just surpassed both Flash and Boom. And now 4 tribes, guess what? They are going to be, starting to feel the pressure. Not from Boom, not from Flash, but from their brothers from the same region. ASI 8 on the verge of getting that #1 spot for themselves. They would love to hold on to that if they get it. But for now, we'll have to wait and watch. DRS and WARGAYE are in the situation where they, both of them can't really afford to get taken down. DRS having a very bad day. WARGAYE can't really afford to get dropped pretty early as well because they are on a tough spot on the overall rankings right now with only 50 points. ASI feeling the heat on the other part of the map thanks to Team Secret, as DRS might be the ones coming out on top. It's a 2v4 situation here. WARGAYE, let's see if they can get any points, let alone survive. That's right, it's not going to be easy, but DRS 2 elimination points लेने के बाद में Rage and Daku रहेंगे duo man standing यहाँ पर टीम WARGAYE की तरफ से. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. एंड शायद से डाकू को स्पॉट कर लिया गया. इनकी जो पोजीशनिंग है वो भी शायद से लीक हो चुकी है. एंड दे डू हैव द इंटेल कि वो जो प्लेयर है, वो जो आखिरी प्लेयर है टीम, आई मीन एक्चुअली एक जो प्लेयर है टीम WARGAYE का कहाँ पर है. एंड आई गेस कभी भी यहाँ पर जो फाइट स्टार्ट हो सकती है. दिस इज लुकिंग गुड, बट टीम WARGAYE दे गॉट बी केयरफुल डीआरएस, क्योंकि यहाँ से आई डोंट थिंक सो दे विल लेट देम गो अवे. You're definitely right about that. We are not leaving this area without a team elimination here.
we will definitely see DRS going down or WARGAYE going down. At the moment, it feels like it's WARGAYE, but you never really know. Beautiful jump coming in, and DRS killer by team. Was that a bad decision? Was that a bad move? It feels like it could be, because now the retaliation is coming in. Cycling already get taken down. Rage will be able to make another play here. The shotgun comes out in the open now. Fry has to be careful as Team Secret on the other part of the map will get eliminated. XMPL will take down Daku. But 4 Tribes, out of nowhere, comes in towards Primorsk's area and will help the side of WARGAYE to take down DRS. There's only XMPL now. All of a sudden, a 4v2 turned to a 1 versus everyone for the side of DRS, which is unfortunate. That's true, which is unfortunate. And now the fights are looking insane. Edge, everything is coming all together. And now we can see Team 4 Tribes यहाँ पर एक एलिमिनेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए DRS यहाँ पर और प्रिमोस के रीजन में फेरी फेयर पे लूट किया फाइट और शॉट्स का जैसे ही साउंड आया तो पाकिस्तान के चारों खिलाड़ी यहाँ पर आए एंड यहाँ पर शायद से एक प्यारी सी थर्ड पार्टी हम लोग को देखने को मिल सकती है पर टीम 4 ट्राइब्स ग्रेनेड्स का यहाँ पर यूज करते हुए दूसरा से कोई भी प्लेयर्स नहीं आएंगे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रेनेड आज ज़ाइफा लेके जाएंगे टैग द मैन विद द गोल्डन आर्म एंड जेट से फिनिश भी किया जाएगा टीम 4 ट्राइब्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थर्ड पार्टी गुड डिसीजन इनकमिंग great level of IGLing IQQ being the backbone of Team 4 Tribes right now Huzaifa insane level of grenades man and जिस तरीके से यहाँ पर ये चारों प्लेयर्स सिंक में काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टीम ओट्री को कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स उन लोगों के पास में नहीं रहेंगे नो एलिमिनेशन पॉइंट्स व्हाटसोएवर बट द थिंग इज ब्लू esports उन लोगों के यहाँ पे ये जो फाइट है जो टकराव है कभी भी स्टार्ट हो सकती है मुश्किलात यहाँ पे किसी भी टीम्स के लिए बहुत जल्द बनती हुई है 4 players, SI 3, 4 tries, 4. 3 eliminations though, they're up to 90. This is a really good chance for them to actually capitalize and maybe get themselves over the 100-point marker there. We'll see if that is going to be the case here. We will be looking at PANDUM firing some shots. Will they be able to take them down? Is the question as the players on the side of VOIN are actually just going back. I actually thought for a second they actually stopped the vehicle. They might go for the retaliation, but that's not the case. Towards the hospital hill, we do have all 3 Ego areas trying to take down the players on the side of BLUG. It's a 4v3 situation at the moment. All 3 Ego not having a good game, not having a good day here as well. So they will love to get a really early advantage here onto some of the teams, some of the elimination points as well would be lovely for them. But can they capitalize is the question. BLUG. They are feeling the heat, and it's Rosemary actually in a good position. And now I think they might capitalize. They might actually close in the distance because now they understand it's a 4v2. Okay, 3v2 with 3 players here on the side of all 3 Ego areas. The grenades are going to be cooked up. The Molotov is not available, so the grenades are going to be the only thing in play. As Rin will be taking a bit of damage. We'll have to go for that heal immediately. Snape will be taking a bit of damage too. Leon is going to be dropped. Karbu is dropped. It all comes down to the last surviving player. Glumatic, as good as he is just going to be overwhelmed there too as Snape drops. But Alter Ego drops the entirety of the squad on the side of Gru. They are gone. Ultra Egos, amazing performance it was, and it was an insane level of performance. Ultra Egos, they are feeling good, and I guess यहाँ से हम लोग देखेंगे एक बारी the Xaviers के ऊपर नजर डालेंगे, and हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं Grenadier का किताब लेते हुए Snape. So Edge, the consistency, the domination, everything is just all together. And this is Asia Wireless Chapter 3 for you all. And आप सभी लोगों को दोबारा से हम लोग एक बार रिमाइंड कर रहे हैं गिव अवे का विनर यहाँ पर आएगा. सो आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर पिन कमेंट नहीं देखा एंड गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया. सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर? गो एंड पार्टिसिपेट इन द गिव अवे नाउ. बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स रहेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आंसर द क्वेश्चन and you'll be just there into the giveaway. But let's just have a look on Team BTR right now, Edge. क्योंकि BTR यहाँ पर defending champions हैं Asia Wireless Chapter 2 के, but struggle कर रहे हैं. यहाँ पे जो टीम है थोड़ा बहुत struggle करती हुई देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इजाफा करेंगे इस गेम के अंदर, and it's all going to be working in sync. But what do you think, Edge? क्या BTR यहाँ पर चिकन डिनर ले पाएगी?
it's possible. I mean, it's still pretty early to tell anything, to be honest. So, given the benefit of the doubt, they do clearly. I mean, they clearly have an advantage in terms of manpower when it comes to some of the teams. So all they need to do is keep those numbers up towards the end. As Rosemary right now are are forced to fight off against the players on the side of Flash, who are now closing in the distance between them and the players. They do have a man disadvantage, and Vika, Rosemary, how do you read this every single time so perfectly? He probably will be looking out for more, but he will be making sure that Vika bleeds first. Alter Ego now have equalized the playing field. It's a 3-3 situation once again. Tops going in for the revival, but let's see if this grenade is good enough. It will not deal any damage actually, but Ghost, he will be standing strong as he does have his teammate to go for the retaliation. Zeus will be there, save the day. We'll get one more win. We'll make sure to drop one flash now, feeling the heat as they might just get Oh no. the entirety of the squad on the side of Alter Ego Ares. Krypton's the only one standing, but the grenade will be dealing a lot of damage. There's no eliminations through still for Krypton, with 2 actually in their name. And Flash, they will eliminate Alter Ego Ares, but they already have lost 1. Bose has hit the deck, and Tops will get back to his feet. But Flash, now there's another squad here, and now it's a perfect opportunity for BTR to get some free eliminations. They should act quick though. They cannot give the side of Flash any time, and that's exactly what they're doing. Federals drops a grenade on the face, and Tops hits the deck once again. Vika and Zeus now the only one standing. Will they decide to maybe regroup and retreat, or do they go for the retaliation? That is the question, as ASIA taking it on the other part of the map. Zeus now standing tall against the players inside of BTR. They got to be careful. What is the decision? I still see him in the vehicle, still waiting for the perfect opportunity. Flash with 3 players yet again. Never mind. Tops once again will be dropped. Those grenades are raining in supreme, and Zeus, he finally abandons his teammates, and Vika, well, all he can do is just do nothing. I mean, he's done for. It was not even betrayal. It was just that he understood the assignment. Zeus could do nothing in that situation. He had to escape, and escape he did. Yeah, and Team Flash यहाँ से अभी भी सर्वाइव तो कर रही है, बट कितनी देर तक, क्योंकि वो जो आखिरी प्लेयर है उनका कभी भी खात्मा हो सकता है. एक बारी हम लोग जरूर नजर डालेंगे एक दफा टीम आरआरक्यू के ऊपर. ग्रेनेडिया का खिताब यहाँ पे बीटीआर के फेरल इसके ऊपर जाता हुआ, एंड टीम 52 का वो जो प्लेयर है अपने खुद के ही व्हीकल से उतर के नॉकआउट हो चुके से रिवाइव हो जाए तो बेटर रहेगा. बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक बार नजर डालते हैं पॉइंट टेबल्स के अंदर. देखिए यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स, ASI एस्पोर्ट्स, टीम फ्लैश, टीम बूम एस्पोर्ट्स एंड टीम सीक्रेट्स आर द टॉप 5 टीम्स. एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम ASI एस्पोर्ट्स सेकंड स्पॉट लेके गई ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, उसके बाद में एलिमिनेट हो चुकी है. सो टीम फ्लैश एंड बूम एस्पोर्ट्स, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स का फासला रहेगा इन दोनों ही टीम्स के बीच में. सो फ्लैश एंड बूम एस्पोर्ट्स, दिस इज टाइम टू स्ट्राइक इन अगेंस्ट दैट टीम. बट देखिए द ज़ेवियर्स के एक प्लेयर को यहाँ पर नॉकआउट करेंगे, डाउन भी यहाँ पर किया जाएगा. बिगेट्रॉन बाय विटालिटी क्या यहाँ पर ग्रेनेड स्पैमिंग करेंगे? बिल्कुल. एंड आई गेस द ज़ेवियर्स का वो जो आखिरी खिलाड़ी है टीम बीटीआर के अगेंस्ट, कैन ही स्टैंड टॉल नाउ? वॉन्ग योंग डाउन उनको किया जाएगा. द ज़ेवियर्स की टीम ऐसे एलिमिनेट हो चुकी. 35 प्लेयर्स और 10 टीम्स यहाँ पर जिंदा. ग्रेनेडियर का खिताब भी फेडरलेस को, डोमिनेशन के खिताब एंड टाइटल भी यहाँ पर मिलेगा इस मैच के अंदर. अलायंसेस की टीम यहाँ पर आ चुकी है बूम एस्पोर्ट्स के अगेंस्ट. बूम एस्पोर्ट्स, very crucial match, very freaking crucial match. You guys cannot mess up even a single moment. But let's see Edge, Boom Esports दागते हुए यहाँ पर शॉट्स एंड शायद से दूर दराज से जो शॉट्स आ रहे हैं अलायंसेस के ऊपर, एंड वो यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जाके होल्ड कर लेंगे. बट बूम एस्पोर्ट्स वर्सेस टीम बीटीआर, ये फाइट कभी भी स्टार्ट हो सकती है. Boom and BTR, this is a fight. This is basically like a pressure cooker now, ready to explode any moment. And Boom holding on to their ground as point might be third partying. Will they be able to do so? This is a perfect opportunity for them, but I feel like they don't want to risk it. They understand the high ground advantage that they have right now is a little too good, and Boom also realizes that, and that is why they will be holding on to this ground for as long as possible, and they cannot let BTR come up close to them. Not in terms of position placement, not in terms of position placement on the overall. Boom on 4th right now. BTR, they're on 11th. It's almost a 30-point difference. No, 20-point difference actually. 22.
BTR looking good right now with 6 eliminations. Boom, no eliminations whatsoever. But once again, we all know how good and scary they are towards the end circles. And that probably is going to be their go-to play again. Surviving with 4 players, as they will have 4 at the moment, no eliminations. Let's see if they can capitalize. That's true. Let's see if they can capitalize this one. RRQ. 8 elimination points and यहाँ पे एलिमिनेशन पॉइंट्स तो देखिए इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो रैंगल का मुकाबला है थोड़ा सा स्लो पेस के ऊपर जाता हुआ। बट बूम ई स्पोर्ट्स, देखिए ये जो मैच है ना बूम ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच मैं बोलूँगा रहेगा। स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया एंड BTR एंड बूम ई स्पोर्ट्स दोनों को यहाँ पर इंटेल और इन्फॉर्मेशन है कि देखिए आसपास कोई ना कोई प्लेयर है और मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर जिंदा। सो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाजमी एलिमिनेशन पॉइंट्स ले पाएंगे या फिर नहीं। और देखिए बूम ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पे कुछ और भी प्लेयर्स को स्पॉट किया, कुछ व्हीकल पे यहाँ पे बर्स्ट इन करने का ट्राई कर रहे हैं। बट बूम ई स्पोर्ट्स मैं हमेशा देखता हूँ कि एक हायर ग्राउंड एडवांटेज का लेने का हमेशा ट्राई करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे फाइट्स लेते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज है कम पड़ सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लूट क्रेट नहीं रहेगी तो आसपास, तो मे भी मैं बोलूँगा बूम ई स्पोर्ट्स अपने रिसोर्सेज को बचा के चलिए। रैप शॉरी हाथ में रहेगी M416 मेरे को किया तो जा रहा है, बट मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर शॉट्स के कनेक्शन नहीं आएंगे। टीम फ्लैश, वो जो आखिरी खिलाड़ी, मैं एक बार टीम फ्लैश को जरूर देखना चाहूंगा। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना अटेंशन डाइवर्ट करें टीम फ्लैश के ऊपर भी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टीम फ्लैश कहाँ पर है, वो आखिरी खिलाड़ी कहाँ पर जिंदा है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना ही यहाँ पर मैप के ऊपर दिख रहे हैं। जॉशपुर हिल के आसपास सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 2 टीम्स देखने को मिल रही है और एक्चुअली हम लोग को मैप मिनी मैप पे भी टीम फ्लैश का वो आखिरी खिलाड़ी देखने को मिल रहा है। यूज ये जो सर्वाइविंग इन ओपन सिनेरियो, ना ही कोई कंपाउंड के अंदर होल्ड कर रहे हैं। सो देखते क्या होता है। बड़ी 95 देखते क्या सिनेरियो रहेंगे। टीम 52 के प्लेयर्स देखिए यहाँ पर 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने के बाद में इजाफा करते हुए वाइन ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट के अंदर आ जाएंगे। ये जो 4v4 की बैटल है बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी। वाइन ई-स्पोर्ट्स की शायद से 4 खिलाड़ी नहीं 2 ही खिलाड़ी जिंदा है। सो आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट गोना बी अ 4v4 लadies and gentlemen, it is going to be a 4v2। जेटा के ऊपर यहाँ पर आएगा ये ग्रेनेड कनेक्शन लेके जाएगा। ये ग्रेनेड बहुत प्यारा, बट शायद से थोड़ा सा, शायद से मैं बोलूंगा ओवरकुक, थोड़ा सा 5 या 6 मिलीसेकंड अंडर कुक रहता तो ग्रेनेड का कनेक्शन आ सकता था। एंड ही इज जस्ट एग्जॉस्टेड विद ऑल द ग्रेनेड्स। बट जेटा इनको यहाँ पे पिंच किया जा रहा है, जोन के बाहर मॉलिटॉव्स जा रही है, ग्रेनेड्स जा रहे हैं, कितने ज्यादा यूटिल। दिस इज लुकिंग गुड फॉर 52, but this is bad for VOIN esports. They are going to get demoralized anytime sooner. Zeta, what will be the case scenario? Zeta, what is going to be the retaliation? Team 52, 3 elimination points एंड आगे की तरफ हमें बढ़ते हुए। एंड देखिए जो जोन है, ये जोन लगता हुआ अच्छा टीम आ रहा है यहाँ पर फाइट के अगेंस्ट एंड आई गेस प्लेयर्स को स्पॉट किया जाएगा। ये रहेंगे टीम 4 ट्राइब्स के प्लेयर, 1 प्लेयर डाउन, 2 प्लेयर डाउन। टीम 4 ट्राइब्स दे आर नॉट लुकिंग गुड। T24 ओपी स्पॉट किए जाएंगे। उजाइफा यहाँ पर अपनी गाड़ी से आएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर स्लैम करेंगे इस कंपाउंड के ऊपर। वॉइन ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर हाल लेके एलिमिनेट होती हुई। जो फाइट है बहुत ज्यादा बेहतरीन, एक बहुत प्यारा नॉकआउट एंड टीम 4 ट्राइब्स का आखिरी खिलाड़ी। एंड क्या यहाँ पर T24 ओपी इस खिलाड़ी को यहाँ पर डाउन करेंगे। एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शॉट एंड टीम 4 ट्राइब्स रिटेलिएशन दिखाते हुए अपने यहाँ पर इस DBS को रिलोड कर रहे हैं। वो जो DBS है यहाँ पर एको करती हुई, वो जो DBS का रिलोड था, it wasn't a reload anymore, it was a personal thing and there we have it, T24 OP, team 4 tribes, a huge round of applause for that team. What a performance it was, दाद देनी पड़ेगी, मजा आ गया। T24 OP, क्या ये कि 1v4 था। एक और यहाँ पर स्लैम आता तो हुआ, वो यहाँ पर फ्लैश का आखिरी प्लेयर, यहाँ पर कयामत लेके आएगा 4 ट्राइब्स के ऊपर। बट दाद देनी पड़ेगी T24 OP, दिस wasn't just a fight, this was emotion. Whoa, man, that was hell of a 1v4. That was hell of a fight we just saw into the previous one. बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पे फाइट ली गई थी, बट यहाँ पर उनका एलिमिनेशन पॉइंट आएगा। 0 एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पर टीम 2 के ई-स्पोर्ट्स के लिए स्पॉट किया जाएगा टीम BTR को। एंड टीम BTR 1 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने के बाद में पहला एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पर इन लोगों को मिला है। आगे की तरफ यहाँ पे इजाफा करेंगे, मजीद प्लेयर्स यहाँ पर जिंदा, मजीद प्लेयर्स यहाँ पर टीम अभी भी
They are cooking. Don't let it stop. This is a wrangle for you all, ladies and gentlemen. अगर आप लोगों ने अभी तक like and subscribe नहीं किया है, so what you guys are waiting for? जाइए जल्दी से आके hit that like and subscribe button. क्योंकि भले ही 4 tribes ऐसे eliminate हुई, but T24 OP, that was a fight. That was an insane level of fight we just saw and witnessed into the previous one. But एक बारी हम लोग 2K esports के ऊपर अपना mind और कैमरास को डाइवर्ट करेंगे एंड अटेंशन करेंगे टीम 2 के esports के अगेंस्ट, क्योंकि टीम पैंडम पास ही में आ चुकी है और दोनों ही टीम्स चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा. टीम पैंडम उनके लिए भी ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बट ये जो 4v4 के टकराव है कभी भी स्टार्ट हो सकती है. 7 teams. Make it 6 now as BTR are gone. 20 players now surviving. Stage 5 circle, as you said, you know, this final battle can actually break out any second. And the way the circle is leaning towards the hill area, it's kind of scary as well. Because the ones coming at the top, you know, the ones that are actually on top of the hill with the high ground advantage are probably going to be the ones coming out on top towards the end. But boom, with still 4 players. And as you said, 52 esports are going to be one of the favorites for sure, with 4 players standing. Still a Panda before as well. Alliance with 3. Flash with only 1 player surviving. Zeus, as you said, out in the open. We'll see if he can accumulate any more points here. If he can make it to the top 4, that's a great position to be in. जी हाँ बिल्कुल. एंड वो जो डेजा वू वाले वाइब मेरे को आ रहा है अभी फ्लैश के ज़्यूस की तरफ से. आपको अगर वो याद हो वो मैच इरांगल के इसी जोन में हम लोगों ने देखा था, यही सेम जोन था, यही सेम पैटर्न था जहां पर फ्लैश के वीका ने वो चिकन डिनर निकाला था फेज 1 के एंड फाइनल्स के अंदर. शायद से वो जो डेजा वू हिट हो रहा है मेरे को अभी, वो फ्लैश का आखिरी प्लेयर जिंदा रहेगा और क्या यहाँ पर वो आखिरी प्लेयर सेकंड डिनर को निकाल पाता है या फिर नहीं. बूम esports यहाँ से होती हुई एलिमिनेट. टीम पैंडम 2 के esports के पास में रहेंगे 4 और 4 प्लेयर्स जिंदा. इजाफा इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, पर टीम पैंडम सबसे बड़ा यहाँ पे मैं बोलूंगा एक डिसएडवांटेज रहेगा वो गेट कीपिंग सिनेरियोस. एंड देखिए टीम 52 esports भी होती हुई एलिमिनेट. टीम अलायंसेस के प्लेयर्स भी यहाँ पर जाते हुए 2 प्लेयर्स, एक्चुअली एक प्लेयर तो जा चुका है, लॉबी का रास्ता उनको दिखाया गया. एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट है, 2 प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा एंड रिवाइवल भी यहाँ पे शायद से हो जाएगा. बट देखिए अभी के लिए टीम पैंडम एंड टीम 2 के esports, ये जो फाइट है एज, ये जो पर्टिकुलर फाइट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी टीम फ्लैश एंड टीम अलायंसेस के लिए, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी ले रहेगा उन लोगों के लिए. जैसे ये दोनों टीम्स फाइट के अंदर आएगी वही अपॉर्चुनिटी रहेगा टीम फ्लैश या फिर टीम अलायंसेस के लिए थर्ड पार्टी करने के लिए, राइट एज. सो देखते हैं कब यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं. जोन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, 2 मिनट का और समय है टीम पैंडम के पास में. या तो फाइट ले या तो अपने व्हीकल्स लेके जोन के अंदर जाने का ट्राई करे या फिर कैसे भी रोटेट करे. अगर जोन के अंदर जाएंगे भी एज तो उन लोगों के पास में एक लोअर रिस्क का डिसएडवांटेज रहेगा. सो टीम फ्लैश दे हैव नो ऑप्शंस जस्ट टू फाइट. They're already here in the top 4, and as you said, it is looking like deja vu might be coming into play. The nostalgic situation, I mean, not that long ago, so can't really call it a nostalgic moment, but regardless, we've seen this movie before. Let's see if this one's if this one has a better ending for any of the other teams at the moment. Okay, is gonna be the only one with okay. I mean, they will also lose 1 now on the knees, but not out yet. But they still have the man advantage in terms of players holding on to their ground. Pandum now closing in the distance. It looks like it is going to be one of the Indonesian teams surviving, and one of the Indonesian teams going down here as Brenky and Sekam takes down 2K and Leleboy. Both of them are gone now. I mean, all this is doing is giving Zeus more hope and giving him more time to work with as well. He's going to be holding on to his ground as he does not want to give away his position, but he does. He actually does. He will take down one of the players on the side of Pandum, and Zeus will get Sondara 2K. Interesting. On the side of 2K, that is, not Pandum. But now 2K, the only one standing is going to be Arco. In a tough position that he is, Sekam will get dropped as well. And down to 2, 2K1, Flash 1, Alliance 3. Alliance with the man advantage clearly. And they should be, you know, probably they will be focusing on the player
on the side of Flash, that is. But these grenades are reigning supreme. Gotta be careful. He's out in the open. Zeus will not be able to pull off the incredible this time around. He will be spotted and taken down. One elimination point he will steal, but he will be getting a couple more position points towards the end. जी हम बिल्कुल टीम पैंडम एंड अलायंसेस और टीम 2K esports वो जो आखिरी प्लेयर था टीम फ्लैश का उनको यहाँ पे एलिमिनेट करके खत्म किया गया एंड यहाँ पे जो खेल है अब यहाँ पर रॉ पावर का रहेगा ये जो गन पावर है यहाँ पे स्टार्ट रहेगी और ये जो खेल है इट्स नॉट ओनली PUBG एनीमोर ये जो शतरंज का भी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो दिमाग है आईजीएल्स का ये जो फाइट लेने का तरीका रहेगा वो यहाँ से चेंज हो जाएगा इट्स ऑल अबाउट that consistency. It's all about the gun power and the raw power into the last one. But वो जो आखिरी प्लेयर है 2K esports का जैसा कि मैं आपको बोला है जो खेल है अब शतरंज में शायद से बदल चुका है क्या वो पे आधा 2K esports का लास्ट तक बचकर चिकन डिनर निकाल पाएगा पैंडम अलायंसेस एंड 2K esports टॉप 3 टीम्स देखिए जो गेम है अलायंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सेकंड पेज पे ओवरऑल रैंकिंग्स में स्ट्रगल कर रहे हैं 2K esports एंड टीम पैंडम हालांकि इन लोगों के पास में यहाँ पर अच्छी ओवरऑल स्टैंडिंग्स रहेगी बट अलायंसेस दे नीड दिस सेकंड इन देयर दे डू हैव अ ग्रेट वन दे डू हैव अ ग्रेट एडवांटेज इन दिस वन बट यहाँ से क्या इजाफा कर पाएंगे या फिर नहीं दूर दराज से शायद से कुछ शॉट्स आ सकते हैं 2K esports का ये जो आखिरी प्लेयर है क्या यहाँ पर चिकन डिनर निकाल पाएगा एज Not going to be easy, but Arkle does have a chance though. That is for sure. He is closing in the distance, using the smoke grenades to screen his movements at the moment. Using it as guard, not to give away his movements as HORAA Saipa, the only one standing on the side of Panda, might get taken down. He is very, very low. Arkle 2K is spotted as well. It's going to get taken down. Now Alliance on the verge of getting that chicken dinner as Panda. There's going to be only just one player standing out tall, but he does retaliate, trying his heart out to maybe take him down. He has been spotted. Gore is also in a good position now. He is going to be sandwiched between both these players, and the high ground advantage could actually be coming into play. Nara, if he goes in right now, they could be at an advantage, but at the moment, the revival will come in, which means it's equal. Yet again, a 2v2. Yep, Alliances and Team Platinum. Alliances के लिए जो मैच है शायद से थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ इजाफा लेता हुआ स्पॉट किया जाएगा प्लेयर को गोल स्काई के हाथ में रहेगी यूएमपी बहुत ज्यादा लो एंड आई गेस पैंडम का आखिरी खिलाड़ी बचा रहेगा अलायंसेस एक 1v2 के अंदर आती हुई 1v2 situation. Do you really think Alliance has any chance of losing this? Nah, they don't, man. There we go. Well, that is the answer, ladies and gentlemen. They don't. It is a 1v2 towards the end. 2K esports tried their heart out, but just wasn't enough. Team Alliance will be the one coming on top. Well, this is gonna be an important one. Chicken dinner was crucial, as Inferno said. This will help them on the overall, and the overall confidence is gonna be high too. Well played, 2K esports. Well played, Flash. But it just wasn't enough. It's all about Alliance coming in, and we did see some really good games coming in from them the other day as well. Even in playoffs, they were really good. They even qualified to the grand finals, not playing 6 games. They didn't show up for 6 games, and they still made it to the grand final. That tells you something. The other team that didn't show up for 6 games was Alpha Gaming, and well, guess what? They're not here. Which tells you this team is scary. And if they pick up the pace, anyone at the top, this is not gonna be an easy one. Well, we will wait and see how things are gonna be turning out for them in the last match of the day. Miramar will be coming to a play. Only a passive one, I feel like. But anyway, as we take a look at the match highlights once again, this was Primorsk once again. We were witnessing DRS versus WARGAYE for a while, but then both tribes joined in, third partied, and well, they stole the cake in the 82. They are still the ones at the top, ASI 8. They started off really strong, getting up to that number 2 spot.
and that's where they will hold on to their position at the moment. Alter Ego Ares here, they did get timed by the side of Team Flash there, if you ask me. But BTR, they also had a really good chance coming in towards this fight, but Xavier joining in, and then Boom once again joining the mix. Things were just not looking good for them. VOIN, unfortunate situation, not enough points. Everybody esports are having decent games right now. It feels like they're finally gotten themselves used to the tougher situations that they are, born to be in at this point. And they're slowly picking up the pace. This was a great play coming in from T24. We would have loved to see more, but just couldn't, unfortunately. Both tribes also went out with not a lot of position placement points, and not a lot of elimination points as well. They've done decent. It's not a terrible game for T24 or for tribes. It was a decent position once again, but towards the end, the man advantage once again reigning supreme, and Alliance, they'll be happy with this. 6 eliminations in total, but 10 position placement points. This is Erangel once again. Keep that in mind, ladies and gentlemen. This is Erangel, and 16 points is very good on the map. So that is the match highlights for you, and this is the winner chicken dinner team. As we take a look at the MVP, there's so many contenders here, so it's probably going to be a tough spot. I mean, Gore is 3 points. It's 3 eliminations for him, but only 300 damage, and I'm pretty sure the other people that have dealt way more damage than that, probably 600-700. There you go, 600. It is Zeus on the side of Flash coming up with the MVP of the match. There was a point of time where we actually did feel like maybe he was going to be the one coming out on top. With the chicken dinner, with a sneaky beaky play, 1v4, 1v5, maybe, but 4 eliminations, 652 damage, 1 assist, 24 minutes and 32 seconds of survival time, 2 knocks, and 57 here. He is going to be the MVP for the match here on the map of Erangel, as we will also be taking a look at other players who have also dealt in amazing damage and also played out of their minds. T24, of course, as we were talking about him on the side of 4 tribes, with 4 eliminations, 432 damage. We also have a Pritham on the side of ASI8, 735 damage. Now, those numbers are scary. Federals, on the other hand, he has always been one of the key players for the side of BTR, 550 damage dealt. 3 eliminations for themselves. And for himself, they're all by himself. And BTR, they're going to be happy if he steps up. It's not over yet, and they don't have a really good position on the overall, but they don't have a insanely bad one either. Not that far away from number 1. So there's still hope for the side of BTR. They are also going to be one of the teams to watch for sure as we move forward. We definitely need to keep an eye out for BTR, as we talked about. 52 esports, 8 eliminations. ASI8, definitely keep an eye out for them. They got 2 quick squad wipes pretty early into the game, but after that they did get taken down. Boom, even though they only have 3 eliminations. As I said, the strategy of making sure that 4 players survive towards the end is always a good strategy, and that's I think that is what they're sticking to. As we take a look at the match summary, we had 70 eliminations, 6 grenade eliminations, 1 airdrops looted, no vehicle eliminations whatsoever, 6,865 healing done. Rosetta with the longest elimination there at 351 meters. Ridiculous long range elimination there coming in from him. As we are done with match number 5, let's take a quick look at the match standings as well before we head down to the overall standings to see if there are any jumps on the overall, because that's where the real action is, and that's the real anticipation for everyone. As Alliance, they will top the board right now with 16 points, 52 esports in 11, Pandum 10. Flash will be really happy with that finish on 10 points. 8 points for 2K, 4 tribes 8 along with ASI 8, BTR on 7, Boom with 5 along with Alter Ego, RQ on 3, VOIN on 3, DRS on 3 as well. 2 points for WARGAYE, BLUG, D Xavier, and T2K with 1 point, and Team Secret with none. That's true, and these are going to be the match ranking. Let's just have a look on the overall MVP as well, and we can see 4 tribes just totally dominating and doing the top, and which will be the first team maybe to cross the 100-point marker into the upcoming match. Team Flash, Team Boom Esports, S8 Esports, 2K Esports, Secrets, 52 the Xaviers and Alliances.
good match it was, and they are performing really decent in my opinion. But the teams on the second pitch, they are struggling more and more. So it's better to make a comeback, or else it's not looking good for that team. I mean, with the chicken dinner here into this match, Alliance have made it to the top 9. They're on 69 points. They're not that far away from number 1. 69 points for Pandum as well. They'll be happy with this. DRS, the third match was decent on the map of Miramar, so I'm expecting a decent position here on the next Miramar as well as the last match. But yeah, T2K, 61 points. 60 for BTR. All three go areas. On for 57, 54 for BLUG VOIN on 53, along with WARGAYE RQ on 52 points as well. This is gonna be a tough day for RQ, but let's see if they can get some numbers here. They just got these 50 marker. Yeah, they got 3 here, so they were 49 behind this before this, but we have Russell overtaking VOIN on the overall MVP. Yeah, Russell, he is just an insane player, and he is the overall MVP right now. And crazy, man. I mean, he is here. And Team Flash, SIT Sports, Ultra Ego, Rosemary, and 4 Stripes Noki, they also performed really good. And Edge. Now, after this, we'll be having a look on the votings, if I'm not wrong, and then the giveaway winner, and there we have it, 4 Thrives. They are having a lot of votes. The votes, it won't be working. I mean, of course, it's grand finals but the giveaway, it's going to be the main thing, Edge. गिवअवे के अंदर देखते हैं यहाँ पर आज के दिन के अंदर, आज के 5वें मैच के अंदर कौन सा विजेता हम लोगों को देखने को मिलेगा. Well, the fans, they have never disappointed us, and well, the teams have also never disappointed the fans, to be really honest. I mean, DRS right now, a little behind expectations, I might say. But apart from that, 4 Tribes, I mean, they're delivering, they're at the top. What else can you ask for? But DRS, on the other hand, it's gonna be it's gonna be the last game for the day for them, and their previous Miramar was decent, 14 points. If they can get 14 into this one, I think it's okay. So we'll see how things turn out as we have the giveaway winner here, Inferno. Exactly, this is going to be the giveaway winner. Congratulations to that fellow PUBG Mobile player. आपने अभी अपने लिए एक Elite Roll Pass giveaway जीता है. All you have to do is just take the screenshot of this screen and एक बारी 4 Stripes के Instagram पर आप लोग I mean जो भी विजेता है, that I mean सब लोग नहीं, जो भी विजेता है एक बारी टेक्स्ट जरूर करना वहाँ पर. बट गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स रहेंगे. ऑल यू हैव टू डू जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे टू द कमेंट सेक्शन. नहीं तो आप लोगों को एक पिन कमेंट के अंदर लिंक भी मिल जाएगा. उसके बाद में आप लोग जैसे उस लिंक के ऊपर जाओगे एंड यहाँ पर एक इमेज रहेगा उस वेबसाइट के ऊपर, देन यू हैव टू टैप ऑन दैट इमेज एंड स्क्रॉल डाउन. और उसके बाद में आप लोग के पास में एक क्वेश्चन रहेगा. उस क्वेश्चन का आप लोग सही तरीके से आंसर करना है, अपना रियल नेम एंड PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी को लिखना, एंड दैट्स ऑल. एंड जो भी विजेता है स्क्रीनशॉट लेके 141 esports के इंस्टाग्राम के ऊपर एक बार डीएम जरूर करना. सो वी विल प्रोवाइड यू द रॉयल पास राइट देयर. बट एच, दिस इज द गिवअवे विनर एंड दीज आर द गिवअवे स्टेप्स एंड वी आर डन with 5 matches, and last one is gonna be Miramar. Miramar is definitely gonna be an interesting matchup, because now I kind of am waiting to see how DRS performs. I'm waiting to see if they can pick up the pace. Can RRQ get some numbers? Will they be able to get more, because they're on 52 points. They need more. I mean, they're not that far away from the teams right above them, right? They're 53, 55, 57, I believe, somewhere around that. But the teams at the top, that is what you are probably, looking to take down, the ones at the top. And everyone will be hoping for that number 1 spot. It is the grand finals regardless. It's not about top 16, not about top 18 anymore. It's about getting that number 1 and staying number 1. That's what matters, and that is going to be the case here.
And it's been a long time since we've once again back on the desk here. I believe this is the second time the audience are probably looking at us. Oh, it's been a long time here. I mean, we were sitting here, but yeah, we were just sitting here. But the matches, man. I mean, keep. Okay, you have to wear this cap every day now, man. Whenever you're wearing this cap, the matches are just going insane. Insane level of performance, and especially into the previous one. I mean, 4th Tribe Street 24, man, a huge round of applause for that player. The way he played, and that, I mean, I have to just go for the recap because was that a 1v4 against VOIN esports? And if that was a 1v4, T24 OP, bow down, man. Hats off for that 1v4. It was insane. Every team, every player out there, they are putting up a show. And especially Edge, the teams on the top 5. I mean, it's hell of a match to just witness. And the map rotation on our screens, it's going to be day number 2 of finals. And it is going to be Miramar. This is the last one. Rondo, Erangel, Miramar, Rondo, Erangel. Flash, Boom, T2K, Xavier, Alliance. Can we see a different name? Will we see a repeated winner? A chicken dinner to someone else, or a chicken dinner to someone who's already had some chicken dinner today? That is gonna be the next question that I would love to have answered. Love to be answered, but anyway, we'll be hoping to see. I'm desperately waiting for RIQ to step up. Any of the teams that are very bottom, right? Them to step up. That is what I want to see. I mean, everyone needs to see the step up incoming, and alliances. I kept on phrasing that this team, they need the chicken dinner, right? And they got it. They got it. So they made a comeback, which was really good. So alliances, what is going to be the case in the overall rankings and everything? That is good. I mean, good for alliances, to be honest. But we need one more match. Edge, what do you think? We have witnessed 5 matches for today and 5 different winners. So, Miramar, can we see a repetitive winner or a different winner? What do you think? As I said, I think I'm looking forward to a new winner, of course. But repetitive winner, I mean, I'll take it as well. I mean, it's pretty important for all these teams to also maintain that lead. But as I've said, we want to see that cutthroat competition, but at the same time, if someone's walking away with the lead, then well, good for them, I guess. Yeah, that's true. And let's just head towards to a flight, ladies and gentlemen, because it is going to be Miramar. And it is the last day of a match, and it is going to be day number 2 and match number 12. Edge will be having a look on the fight path, and this is going to be the last one. Let's see which team is picking up this winner chicken dinner. And we'll be having a great full stop of day number 2. But Kempa Militar will be starting off with there and ending in the region of Chamasera Miladevar. Good positions that these teams can actually go for. WARGAYE once again pretty early drop there towards Campo Militar. Dorea Muda under the control of Boom now. VOIN are probably leaning towards water treatment. Lazar, Alter Egos. T2K, Minas Generalis is very feels like they're headed towards Creative Fields or Hacienda for DRS. Maybe even El Pozo. La Cabrera is empty this time around. You can see 4th Tribe going towards Picaro. That's where they've been, dropping these days, and they absolutely love it. BTR, Power Grid probably, Alliance coming in fresh off of a victory. A lot of eyes on them for sure. Lele Boy 2K on the side of 2K are dropping down towards Los Leones, Southern City. Is that Xavier? No. That is. As we take a look at the circle now coming in, we already do have a couple of knocks pretty early into the game. And the circle, well, it's centering a Mountain Webo. We'll see how it's gonna be affecting the
the rotations now coming up. WARGAYE will be the one farthest away. Partona under control of GenForce, Prison, Minas del Sur as well. So a lot of these loots, a lot of these areas already under control of them. They don't really need to worry about the rotation too. There will not be bridge camped. They do have a lot of space to get into that main island. There are a lot of ways to do that. But for now, we will see the first elimination coming in. One player gone. And at the moment, ASI8 putting the screws to the players on the side of D Xavier. D Xavier are gone. 2 players, maybe 3, maybe even 4, as ASI8 are not going to stop. Can we please switch to D Xavier maybe? I mean, T2K, there's no real action here. Yeah, there you have it. ASI8. They're looking really good. And Zantares might get taken down यहाँ पे. शायद ASI8 पूरा squad wipe कर सकते हैं यहाँ पे. D Xavier एक बहुत ही बेहतरीन चिकन डिनर देखने को मिला आज. क्या एक और देखने को मिल सकता है? ASI8 शायद ये अब इनका गेम होने वाला है. क्योंकि अभी ये टेक डाउन करेंगे डी Xavier को तो उनका ये जो मोमेंटम है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा. एंड K2 will he be able to get the first elimination there for himself? Was that a smoke? I think that was actually a stun grenade. So he gets the information, he understands where he is. K2 is out in the open, gotta be careful. I understand D Xavier is at a disadvantage, but you cannot give them space to work with. Right now, Zantares को spot कर लेंगे यहाँ पे. K2 distance को close in करते हुए shotgun हाथ में टेक डाउन कर देंगे एक और प्लेयर को यहाँ पे D Xavier का. ASI8 3 elimination. एक और मिल सकता है इनको एक्चुअली. शायद ये पूरा टीम वाइप कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये प्लेयर कहाँ पे मौजूद है अभी के लिए. Maybe the last one plans out of DRX. Oh, DX out of the other side of D Xavier, that is. They probably are gonna be surviving for now. It's been a while since I've seen that team too. As we have all 3 Go Ares here, T2K Maharani gets taken down. Team Secret with all 3 Go Ares. Rosemary once again. He is he is the IGL. He is the assaulter. He is the overall MVP. One of the contenders, of course. He is the man right now. Not just for all 3 Go Ares, but for the entirety of the Indo region, if you ask me. There's a lot of hope, a lot of expectation, and a lot of weight that he's carrying on his shoulder for sure. And I really love how they're mixing and matching these players that they're bringing in for each and every different map. Like we've seen Snape coming sometimes. We've seen Maona come in at times. Krypton has been there for a while now. We didn't really see Rosemary in phase 1, but phase 2, it's all him. It's been about him completely. And let's see if he can capitalize on that situation and if he can keep it going. At the moment, Minas Generals is where we are still headed towards. All 3 Go are here, T2K are here, Team Secret also here. 2 elimination for themselves already. ASI8 are probably bleeding, but they should be okay. Face is on. Team Secret now trying their best to see if they can maybe find Rosemary, who is a little isolated from the squad. And if he gets taken down this early, it's going to be really hard for the side of all 3 Go Ares to capitalize. And wait a minute, XMPL? Why are you out in the open and why are you testing all 3 Go Ares again? He's gonna get dropped immediately. And all 3 Go now taking fights on multiple ends. They're gonna take down one of the players on the side of Team Secret as well. All 3 Go Ares looks like they are in for a fight. And this game looks like all of them do want to get as many points as possible. Here as Rosemary will drop frag, DRS. Ooh, that bad day
it doesn't feel like it's gonna get better anytime soon. Xavier's last player now gets into safety. Snape, on the other hand, is gonna get taken down. Xavier, after that beautiful game, didn't really have a lot. I mean, apart from that beautiful game, they didn't really have a lot to show for this today in the grand finals. So, yeah, the consistency is lacking for sure, but the side of Team Flash and Fourth Drive still sitting on the top along with ASI 8, especially with these 3 eliminations. Any of these teams can end on that #1 spot towards the end of the day, which means they will have a good night's sleep, and not just that, they will come back being the top dogs tomorrow. But here's what happens when you're at the top. When you are someone at the top, everyone else that are under you are now trying to take you down. You might be a shark, but there are always bigger fish in the ocean. So that's all you need to worry about. If you're at the top, it's scary, but at the end, it's always about being at the top. Boom will be getting their player back up to their feet, but immediately they will lose another. Now with a beautiful grenade there onto Kibo. Will they be able to capitalize is the question? As Maul, he does manage to take one more down. There you go, immediately gets traded out though, regardless. So boom, they will be happy with the elimination coming in. FYD. He came for the rescue, but just wasn't in time. He's gonna get the trade though, regardless. And Rhapsody is there to immediately go for more plays. But boom, they're losing players left, right, and center. FYD is really low. Can he capitalize? Kibo's the only one standing up close and personal. He will be able to get that player down on the side of Alliance as Gore. Now in a 1v1, boom, Kibo will be going for that heal, but the revivals will not be coming in anytime soon. All of them are gone out of the server. As DRS on the other part of the map will get eliminated. Their unfortunate run is still running. As Kibo now trying to see if he can probably get an elimination or two here. With a good grenade throw. Will it be dealing any damage though? I would be surprised if it even deals chip damage. No, it won't, unfortunately. But the player is back on the feet, and now Boom Kibo, the only one standing, is on the verge of getting eliminated. Now in a 1v2, will be Gore will actually bait him out, and Kibo has now compromised his position. FYD still waiting for that revival, still hoping to see if any of his 2 teammates will come in and help him get back on his feet. Exactly, and alliances. There we have the spotted Boom Esports. यहाँ से होती हुई eliminate, and यहाँ से टाटा बाय बाय करते हुए Boom Esports 17वां पायदान के ऊपर, and they're gone. Team Flash यहाँ पर पिछले मैच के अंदर यहाँ पर सोलमैन वो जो प्लेयर था उन्होंने पूरा ट्राई किया था चिकन डिनर लेने के लिए. वीका को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. ज्यूस बहुत ज़्यादा लो एंड जोन के बाहर जाके नॉकआउट हो जाएंगे. बिल्कुल जोन के बाहर थे एंड वो यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे. इसी के साथ में बोज एंड टॉप्स रिवाइव करने का पूरा ट्राई करेंगे. एंड दे भी हैव इट. आई गेस रिवाइव भी यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाएगा. एंड ये जो प्रॉक्सिमिटी के अंदर टीम है टीम 52 यहाँ पर आएगी. टीम 4 ट्राइब्स की यहाँ पर फाइट हम लोग को देखने को मिल जाएगी. IQQ बीइंग द सोलो मैन स्टैंडिंग, एंड आई गेस इनके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज आता हुआ. रीसेट यहाँ पे करने तो बेटर हो सकता है. पहला नॉकआउट लेने की दरकार, बट नहीं. टीम 4 ट्राइब्स पिछला मैच यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिसेंट था, और ये वाले मैच के अंदर यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए. सो इट वाज वेल ट्राइड, आई से टीम 4 ट्राइब्स. बट अभी भी यहाँ पर अपना जो दिन है पहले ही पायदान के ऊपर शायद से खत्म करके जा सकते हैं, अगर यहाँ से एसआई टीम या फिर टीम फ्लैश ज्यादा कोई चिकन डिनर या फिर पॉइंट नहीं लेती है. देखते हैं क्या इजाफा रहता है. दो esports हाथ में रहेगी एक SKS, और यहाँ पर टीम 52 के ऊपर कुछ नॉकआउट्स आते हुए टीम पैंडम के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर फाइट्स चलती हुई. इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली. टीम ब्लू esports यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उन लोग के पास में इतने ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स तो नहीं है. आई मीन 0 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं. कोई एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों की तरफ से नहीं लिए गए हैं. सो सब कुछ यहाँ पर शांत. एंड ये जो मिरामार का मुकाबला है, तीसरे फेज पर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं. एंड टीम 52 वी कीप ऑन चेंजिंग द टीम्स रियली फास्ट एंड रैपिड, बिकॉज हम लोग को पता है कि कभी भी फाइट्स यहाँ पर हो सकती है.
टीम पैंडम यहाँ पे टीम 52 के अगेंस्ट टीम बीटीआर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के अंदर आ सकती है एंड कभी भी यहाँ पर ये जो फाइट इनिशिएट हो सकती है। टीम 52 के पास में यहाँ पे 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो आ चुके हैं बट 3 प्लेयर्स यहाँ पर एक्चुअली इनके जा चुके हैं। सो बरी 95 ये जो आखिरी प्लेयर है, इतना ज़्यादा खामियाजा भुगतने के बाद में क्या अपनी टीम को लास्ट में एक चिकन डिनर दिलवा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए चिकन डिनर तो मे भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है बट एक अच्छी पोजीशनिंग पॉइंट मिल जाए मैं कहूँगा तो शायद से वो बेटर रह सकता है। पोजीशनिंग पॉइंट मिलेगी तो आगे आने वाले दिन के अंदर इजाफा भी अच्छा रह सकता है। ए साइड ई स्पोर्ट्स का K2 यहाँ पर डाउन होते हुए एंड वो भी यहाँ पर जाएंगे। ए साइड ई स्पोर्ट्स उस टीम की भी दाद देनी पड़ेगी देखिए क्योंकि ए साइड ई स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही थी पहले दिन के अंदर। प्लेऑफ क्वालिफायर्स के अंदर उन लोगों का तो बस एक ही स्ट्रैटेजी था, सिर्फ टॉप 18 के अंदर आए और अपने आप को क्वालिफाई करें। बट ए साइड ई स्पोर्ट्स वो जो अब जिस तरीके से इन लोगों ने अब यहाँ पर अपने गेम प्ले और प्ले स्टाइल को यहाँ पर इवॉल्व किया है, जिस तरीके से अपनी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड मैं बोलूँगा तारीफ लायक है। बट बीटीआर डिफेंडिंग चैंपियंस हैं यहाँ पर एशिया बैटल वर्ल्ड चैप्टर 2 के डोमिनेशन यहाँ पर क्रिप्टॉन लेते हुए एंड डोमिनेशन की किताब यहाँ पर अल्ट्रा ईगोस के बहुत सारे प्लेयर्स लेते हैं, चाहे वो रोजमेरी हो, क्रिप्टॉन हो या बदरू हो। उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मतलब दाद देने लायक। एंड देखिए यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा टीम 52 के आखिरी प्लेयर को डाउन यहाँ पर किया जाएगा एंड यहाँ से खत्म भी कर दिया जाएगा। टीम 52 esports यहाँ से होती हुई एलिमिनेट। एंड द पीपल इन द ऑडियंस वाचिंग राइट देयर, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है और यू हैव टू डू इट्स जस्ट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को वहां पर एक नाइट बॉट के थ्रू लिंक मिलेगा, चाहे वो आप नाइट बॉट के थ्रू ना लें, आप लोगों को यहाँ पे पिन कमेंट के अंदर यहाँ पर एक कमेंट मिल जाएगा 141 esports की तरफ से, यहाँ पे वो पिन किया गया है। सो जाइए उस लिंक के ऊपर जाके टैप आप लोग जो जैसे ही करोगे तो आप लोगों के सामने एक रही पिक्चर, उस पिक्चर के ऊपर ही आप लोगों को एक सवाल रहेगा एंड उस पिक्चर के आप लोग को जैसे ही टैप करोगे सो एक नया यहाँ पर पेज आपके सामने पॉपअप होगा। वहां पर आपको अपना आंसर लिखना है उस क्वेश्चन का, उस esports रिलेटेड क्वेश्चन का। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना रियल नेम, मेक श्योर कि आप लोग अपना रियल नेम लिखें, ना कि अपनी इन गेम कैरेक्टर आईडी लिखें। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपनी PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी लिखें। देखिए PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी लिखने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। वो जो कैरेक्टर आईडी लिखे एक डिजिट ऊपर नीचे भी हुई ना तो मेरी बात समझिए, आपको यहाँ पर रॉयल पास गिव अवे जीता भी तो आपको मिलेगा नहीं, राइट। सो सही तरीके से यहाँ पर सभी स्टेप्स को फॉलो करिए एंड सबमिट कर दीजिए एंड देयर वी गो, राइट। आप इसी तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लोगे एक रॉयल पास गिव अवे के अंदर। सो जाइए जल्दी से आके पार्टिसिपेट करिए गिव अवे इसके अंदर क्योंकि इट्स फ्री मैन। एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन टीम फ्लैश। आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग रहेगा टीम फ्लैश का, किस तरीके से यहाँ पे इजाफा करते हैं वो देखने वाली चीज रहेगी। देखिए टीम फ्लैश यहाँ पर पिछले मैच के अंदर यहाँ पर T24 ओपी ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक 1v3 किया था वॉइन esports के अगेंस्ट। फिर फ्लैश का वो जो आखिरी प्लेयर था वहां पर उन्होंने लगाम लगाई थी 4 थ्राइव्स T24 ओपी के ऊपर। बट मैं चाहता था शायद से T24 ओपी वहां पर उस फ्लैश के आखिरी खिलाड़ी को भी फिनिश ऑफ करते तो हम लोगों को 4 थ्राइव्स थोड़ा और मैच के अंदर देखने को मिलती, क्योंकि इतने अच्छे मोमेंट के बाद में अगर वो टीम एलिमिनेट होती तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो अभी था यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स बहुत ही जल्द एलिमिनेट हो चुकी है इस गेम के अंदर। हालांकि मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा डिसेंट मैच भी नहीं था, देखते हैं कल के आने वाले दिन के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। बट टीम 4 थ्राइव्स आज के दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। देखिए डे नंबर 2 ही है, सो जितनी भी हमारी टॉप 3 टीम्स है इन लोगों को ट्राई करना है कंसिस्टेंट लेवल पे ऊपर अपना अपना गेम प्ले दिखाइए। अब आप एक चीज देख सकते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक इक्वलाइजर हो चुका है। 90 पॉइंट्स दोनों ही टीम्स के पास में रहेंगे, एक भी कोई पॉइंट ऊपर नीचे हुआ यहाँ पर टीम एसआई esports ऊपर आएगी, टीम फ्लैश नीचे आ जाएगी। आई गेस एसआई esports आई एम सो सॉरी बट वो एलिमिनेट हो चुके हैं एंड शायद से 90 पॉइंट्स उन लोगों के पास में रहेंगे अभी के लिए। एंड टीम फ्लैश का वो आखिरी खिलाड़ी भी एलिमिनेट हुआ तो इक्वलाइजर पे ये दिन एंड हो सकता है आज के लिए। सो कल के दिन के अंदर अगर इक्वलाइजर से ही स्टार्ट हुआ तो आप एक बार सोच के चलिए कि कितना ज्यादा मजा आएगा वो देखने में, क्योंकि सब टीम्स अपना पूरा परफॉर्मेंस देंगे, अपना पूरा 110% देंगे, क्योंकि स्पेशली एक भी गेम उनका खराब गया तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर गिरावट बहुत जल्द आती है। वॉइन esports के खिलाड़ी यहाँ पर एक
एलिमिनेशन लिया एंड जेटा का खामियाजा भुगतना पड़ा है एंड 4-man स्टैंडिंग टीम नहीं है अभी के लिए। 16 मिनट का मार्कर हम लोगों ने हिट जरूर किया है बट वोइन ई-स्पोर्ट्स के आगे खिलाड़ी रहेंगे ग्लू ई-स्पोर्ट्स के, सो ध्यान देना पड़ेगा ग्लू ई-स्पोर्ट्स को क्योंकि यहाँ पे जो गेट कीपिंग सिनेरियो कर रहे हैं ग्लू ई-स्पोर्ट्स अगेंस्ट वोइन ई-स्पोर्ट्स अच्छा हो सकता है बट अलायंस की भी टीम पीछे आ रही है। सो वोइन ई-स्पोर्ट्स ये बहुत ज्यादा खराब सैंडविच सिचुएशन के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं वोइन ई-स्पोर्ट्स। देखिए पोटैटो भी डाउन हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पे वोइन ई-स्पोर्ट्स के यहाँ पे जिंदा रहेंगे, उसके बाद में उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीम वोइन ई-स्पोर्ट्स they got to be really careful or else यहाँ से एलिमिनेशन आएगा। टीम BTR फाइट के अगेंस्ट आज हुई टीम वारगे के अगेंस्ट एंड टीम 2004 and too easy for man is going to the doom and survivor टीम BTR क्या यहाँ पर फेडरलेस को रिवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, एंड शायद से रिवाइवल थोड़ा बहुत इजी नहीं रहेगा। 2004 द सोलो मैन स्टैंडिंग एंड टीम वारगे आएगी एंड शायद से एलिमिनेशन करेगी। टीम वारगे ने शायद से लूट जो है वो जो ड्रॉप है वो भी लूट किया है। P90 मेरे को खिलाड़ियों के हाथ में देखने को मिल रही है। P90 मतलब एक बहुत ही ज्यादा इंसेन वेपन है मैं बोलूंगा। और देखिए जैसी वारगे टीम BTR को एलिमिनेट करेगी, मुझे पता है आप लोग चैट के अंदर AI स्पैम करोगे, सो बी रेडी टू स्पैम AI। 2004 It's just the Solomon standing and Dakulenge, last laugh, and there we have it. BTR, they are gone, and AI chants in the comment section is coming in for sure. और आप लोग एक बार जरूर बताइए आप लोग का दिन कैसा जा रहा है। मेरा दिन बहुत ज्यादा बेहतरीन क्योंकि आज के दिन के अंदर मैचेस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा भयंकर। So do let us know in the comment section how is your day today. It's a beautiful day and Asia Battle Chapter 3 के साथ में और भी ज्यादा दिन सुहाना होता हुआ। पर टीम सीक्रेट इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कल के दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंसेन, 30 से ज़्यादा पॉइंट्स, आई मीन 40 पॉइंट्स हो सकते थे बट शायद से वो नहीं हो पाया एंड उतने ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर टच नहीं कर पाए। ब्लू ई-स्पोर्ट्स अलायंसेस के अगेंस्ट आते हुए 2 प्लेयर्स को यहाँ पर डाउन करेंगे। अलायंसेस का आखिरी प्लेयर देखिए 8 अच्छे पॉइंट्स इन्होंने ले लिए। मैटर को स्पॉट किया या नहीं, या फिर पता है कि कहाँ से स्प्रेज आया है एक्चुअली। एंड आई गेस RRQ यहाँ पर किल चुराते हुए, बिल्कुल यहाँ पर RRQ अलायंसेस का एक किल चुराते हुए और एक एलिमिनेशन पॉइंट लेके जाएंगे अपने हित में। एंड वोइन ई-स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे एलिमिनेशन आता हुआ। यप, Edge you just popped out any from anywhere. I got scared for a moment. You. Oh no, but, I'm so sorry. Yeah, I tend to do that sometimes. But yes, we're down to top 9 now. 22 players still at the server. Stage 5 circle coming into play. Flash with just 1 player standing. And things are looking decent at the moment. 2K Esports. 1 elimination point for them. That's all. They do have 4 players standing though. And they're on top 6 now in the overall standing. They're having a really decent day. They're doing a good job keeping that spot for themselves at the moment. The Alliance on the verge of overtaking them, but with only 1 player standing, I don't think it's going to be possible, and it's not going to be possible at all whatsoever, as the player did get eliminated right now. And in 9th position with 9 eliminations. Alliance are gone. Top 8, 21, 20 minutes, stage 5 circle in the next minute closes up, which means these players will have to make a move, as Glumatic, on the other hand, is the last one standing, and he has to be careful. He is going to be spotted out, or he's going to be out of the zone if he doesn't get spotted. And Zeus also needs to be careful, as Sundara 2K is making his way towards that area. Yep. टीम वारगे 5 एलिमिनेशन लेने के बाद में यहाँ से आगे की तरफ इस मैच के अंदर इजाफा करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। टीम वारगे अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ और यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट्स रोटेशन क्लैशेस में या फिर आसपास से लेने का ट्राई जरूर करेंगे, बट यहाँ पर रिसोर्सेज थोड़े बहुत खर्च होते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पे 5 की एमोज यहाँ पे जाती हुई दागते हुए दूर दराज से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम सीक्रेट्स के भी प्लेयर आ सकते हैं एंड शायद से स्पॉट किया जाएगा प्लेयर्स को। टीम फ्लैश का वो आखिरी खिलाड़ी है, शायद से उनको भी स्पॉट कर लिया गया है। It's not gonna be easy for that last surviving player on the side of Flash, Zeus. And if he gets spotted, it's probably gonna be even harder for him. I mean, he once again will try his best to probably survive up until top 4, top 5. He's been really good at doing that situation. I mean, in this situations, it's not his first time, but
there you go. As you said, he was spotted and he's gone immediately. One elimination. Unfortunate performance for Team Flash and DRS as well. I was expecting them to, be decent, be great to be honest on the map of Miramar. Be decent at least, but both of the teams unfortunately got with just one elimination point each. So we're down to top 7 and 20 players now in the server. जी हाँ बिल्कुल एंड यहाँ से देखिए ये जो मैच है हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि इतना जल्दी ख़त्म हो सकता है राइट, क्योंकि आखिरी मैच रहेगा दिन का एंड हम लोग को पता है कि यहाँ पर इस मैच में टीम्स ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स ले पाए एंड कवर अप कर पाए, क्योंकि देखिए आखिरी मैच है, जो टीम्स रहेंगी सेकंड पेज पे दे हैव नथिंग टू लूज राइट, सो there's everything to gain. So क्यों ना अपना 110% नहीं 110% पूरा 200% ट्राई करे एंड RIQ वो टीम पैंडम इस फाइट स्टार्ट हो चुकी है. पैराग्रोस यहाँ पे डाउन होंगे, उनको यहाँ पे एलिमिनेशन पॉइंट भी कर लिया जाएगा. Moving on to his position right now, trying to take down players inside of RIQ, and it's a very important game for RIQ as we've already talked about it. But Byron, he's going to get taken down as well now. RIQ, unfortunate positions for them. 2 players down, 2 players to go as RIQ. They're down to 17th position. VOIN are down to 18. Domination indeed. But 2K, they've also lost 2 players and they are bleeding as well. They've got to be careful. They can get taken down at any second at this point. Glumatic is gone, which means that's BLUG gone out of the picture. 7th position finish for them. 3 eliminations. They'll be decently happy with that. The last player's performance. But overall, not a great place for Glue to be in still. वार्गे के मॉल को स्पॉट किया एंड शायद से एलिमिनेशन आ सकता था, बट अच्छे खासे मैं बोलूँगा हेडशॉट भी चेज हुए थे, कुछ रैंडम शॉट्स लिए जा रहे हैं. एमिनेशन देखिए 400 से ज़्यादा एमिनेशन है, एक और बार यहाँ पर रिलोड किया जाएगा, बट ही इज जस्ट पैक्ड विद दैट 5.5 एमिनेशन, इज जस्ट इनसेन. बट टीम वार्गे 5 एलिमिनेशन लेने के बाद में मौला के ऊपर कुछ शॉट्स ज़रूर आए थे एंड हेडशॉट्स आए थे. सो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत ये जो हेलमेट है उनका डैमेज रहेगा, कुछ और लेवल 2 का लेवल 3 का हेलमेट मिल जाए तो अच्छा रहेगा. ड्रॉप में ही मोस्टली मिलता है लेवल 3 का. सो देखते हैं टीम वार्गे यहाँ से क्या इजाफा करते हैं इस वाले गेम के अंदर. एज कुछ शॉट जरूर आए थे उन लोगों के ऊपर में. जेनफो सोलोमन स्टैंडिंग एंड देखते ही यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो 20 RIQ, they are gone. एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम वार्गे सर्वाइविंग विद 4 के esports के साथ में टीम ऑल्ट्री को सर्वाइविंग विद 1 एंड 2 टीम्स ऐसी रहेंगी जिनके पास में 3 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे. अपना यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलात के सिचुएशन में आ सकते हैं टीम ऑल्ट्री एंड टीम सीक्रेट्स एंड टीम पैंडम. 3-on-3 की फाइट जो है स्टार्ट होने वाली है. Five teams now surviving, 15 players. 25-minute mark. Alter Ego, the only team with 1 man standing. Everyone else they have decent numbers. So there's a really good chance this game can go either way. We'll see. We will see how things are going to turn out. And Team Secret, well, I believe are going to be the first one in line to lose a player. Zero assist attack. He's on the verge of getting eliminated as well. The revival is not going to be as easy. Krypton might be spotted by Rage. Rage, if he just waits for the perfect opportunity, he'll probably get a free B. But the revival, there you go. It is happening. It's scary, but it is happening. Stage 7 circle coming into play now in a minute. It will come to a close. Yep, and now we can see Team 2K esports on the screen. 2 ही elimination points and यहाँ से देखते हैं क्या दरकार रहती है. एज आगाज इस मैच का यहाँ पर 2K esports के लिए बेहतरीन, बट टीम वार्गे एक ऐसी बड़ी मैं बोलूँगा टीम या फिर एक ऐसा बड़ा ऑब्स्टिकल उन लोगों के जो सामने, सो मुश्किल हो सकती है उस टीम के लिए. अच्छे स्प्रेज यहाँ पे जाते हुए QBC से, बट कोई भी यहाँ पर मैं बोलूँगा नॉकआउट नहीं आता हुआ. टीम सीक्रेट्स एंड टीम वार्गे जो यहाँ पे फाइट इनिशिएट हो चुकी 4v3 की बैटल एंड टीम सीक्रेट्स सर्वाइविंग विद 1 एंड आई गेस आज तो AI ही है क्योंकि टीम वार्गे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड आज के दिन के अंदर ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम वार्गे दिखा रही है, इसके साथ में अगर चिकन डिनर ले तो यहाँ पर आगे बढ़ के
एक और बढ़िया ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर अपना खिताब ले सकते हैं और शुरुआती टियर 5 के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं 3 पाकिस्तानी टीम्स, बट वारगे दाद देनी पड़ेगी। एंड इस टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर इजाफा किया है, जिस तरीके से यहाँ पर हर एक 4 प्लेयर ने अपनी कोऑर्डिनेशन बनाई है, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। That is true indeed. It feels like it is gonna be WARGAYE, and they might just be the one coming out on top. And as you said, the AI spam will probably be, coming in anytime soon. But also, you got Krypton still surviving. That is scary. It is always scary to have the last surviving player here on any team, as a matter of fact, especially the side of alter ego eras. As WARGAYE, they are putting the screws to the players inside of PANDUM right now. 2K Esports. Another team with 4 players standing, so it's probably going to be a classic 4v4 situation towards the end. But what do you think, WARGAYE or PANDUM? Sorry, 2K. Man, I gotta stick with the boys of WARGAYE right now. They are performing insane. WARGAYE, देखिए grenades यहाँ पे आते हुए, and the grenades are looking so damn good. Lillywatch, okay, is the solo man standing. I guess आज WARGAYE mood में आ गया मेरा मारने चिकन डिनर लेने के लिए, और रेस का वो आएगा एक बेहतरीन ग्रेनेड डाउन उनको यहाँ पे किया जाएगा. Alter Egos is going to be the solo man standing. I guess that done. WARGAYE, the chicken dinner is loading and 15 elimination points के साथ. WARGAYE now on the verge of getting that chicken dinner. One player is all that chance between them and a chicken dinner, and then Krypton. How far can you drag this? How long can you take the heat for? The answer is not very long. We don't have to wait for it, ladies and gentlemen. It is WARGAYE with the winner chicken dinner, and they'll be so happy to end the day with the chicken dinner. It is the most, it's the best thing that can happen. Either start off strong or end off strong. And well, WARGAYE, this is going to help them boost their momentum, confidence, and their overall standings. That's true. We'll be having a look at the match highlights as well, and we are done with all the matches today. Good performance from all the teams, and especially today the Pakistani teams, they just rocked. Indonesian teams, उनका आज domination थोड़ा कम रहा था. Vietnamese teams, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा performance अच्छा दिया आज के दिन के अंदर, and especially alliances, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन खेला. So, Edge, this is a wrap with all the matches today. We are done with 6. We are done with 6, and guess what? That's 6 different winners, ladies and gentlemen. Absolute brilliant performance. I think apart from one game, apart from one region, actually, I think we've had 6 different winners. We had 6 different winners from 5 different regions. I think Vietnamese region is the only one that we actually have a duo winner from, but everyone else are from different regions. And this tells you how different this is when compared to Phase 1 Grand Finals. Yep. I mean, Phase 2nd, I'd say the competition is more. The intensity is more. And Edge, I mean, all the 6 matches, they were chaotic. Today, we have seen a great level of storyline. That is true indeed. I think winning the cap has helped us a lot in terms of chaotic matches, in terms of storyline as well. It's a great day for all of these teams as well. 4 tribes, they started off on number 1 position. I believe they are ending on number 1 position as well. This is a great day for them too, but a great day for the other teams as well. Alliance getting a chicken dinner was very important. 52 getting themselves a better position was very important, and the momentum that they built in when compared to day number 1 was very important. VOIN, they showed up. They've had their fights, but it's just that unfortunately they were not the ones coming out on top, which was quite unfortunate. But it is still good to see them. RIQ somehow struggling, which I did not expect, because if you remember the overall MVPs coming in towards the playoffs season, we did have 3 players. I believe Lapper, Genforce, and there was one more player on the side of RIQ. All of these players were the MVP. So we were expecting a lot of chaos coming in from this squad, but it's not the case. They're at the very bottom and they are struggling. And towards the end, Krypton did survive. Kudos to him. He got at least 4 to 5 extra points for the squad. That's very, very crucial. But in the end,
it was WARGAYE with the winner chicken dinner. And you can see 15, I was going to 16, but 15 total eliminations for them. And what a great game this has been coming in from the entirety of the squad. Exactly, what a great game it has been from the entire squad, and we are done. Let's just have a look on the MVP because it's gonna be Rage from the side of WARGAYE. 5 elimination and 3 knockouts with 28 minutes of survival time. And he was the damage dealer for the squad. He was on point with the aim, with the game today. And well, he deserves it. And apart from him, we will also be taking a look at the other other top 3 players, top 4, including him, of course. And I'm pretty sure there's going to be one more player at least on the side of WARGAYE, because they've dealt some damage. They've definitely dealt some ridiculous amount of damage there coming in. ASI 8, on the other hand, it felt like maybe this team would have been one of the players that would one of the teams that would actually come out and take the chicken dinner, but that wasn't the case. Anyway, talking about the top 4 players, we have Rage, of course, and Mola on the side of WARGAYE. You can see it. We also have PANDUM, whose movement has absolutely caught me off guard, and I'm absolutely loving his movement in all of the games now. Gore on the side of Alliance, 708 damage, 4 eliminations. He's been a key factor for the side of Alliance, and well, he is still turning out strong. This is turning out to be a decent performance for Alliance here today and tomorrow, and day after tomorrow, the last 2 days of the grand finals here in phase 2. Things are looking good for them, as they are going to be one of the teams to watch too. Yeah, these are the teams to watch out. WARGAYE, Alliances, Team Secrets, and Alter Ego Ares. That's got to be the teams to watch out tomorrow Edge, which is going to be our day number 3 of Grand Finals. But let's just have a look on match summary. 66 total elimination, 600 elimination, 1 airdrop was looted from the side of WARGAYE, if I remember. 12,000 plus healings were patched off, and BTR 2004 will be taking that longest elimination point. Talking about the match standings, we will have WARGAYE on the top, 25 total points. All 3 go on 13, PANDUM on 12, Alliance on 9, Team Secret on 7, 6 for 2K, RQ on 5, 4 points for BLUG for 3, ESPORTS SI 8, Flash on 2, BTR on 2, Boom, 4 Tribes, VOIN, Xavier and DRS. Unfortunately, were only able to get 1 point each, and T2K, none for them. Yep, these are going to be the overall rankings, and we can see ASI esports on 1 पॉइंट से यहाँ पर फासला पहले और दूसरे पायदान में रह गया, एंड उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं 4 ट्राइब्स विल बी टेकिंग द फर्स्ट स्पॉट. 2 पाकिस्तानी टीम, एक्चुअली WARGAYE भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी है ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर, फर्स्ट पेज के अंदर, एंड दे आर इन टॉप 9. सो वी कैन सी 2 of the Vietnamese teams, and बाकी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं Vietnamese teams, they are also dominating in the first match. Actually, sorry, Indonesian teams right there. And now we can see, and we'll be having a look on the second page of the overall rankings, where the teams are struggling the most. DRS, BTR, T2K, Glue, RRQ, and VOIN esports, they are dealing a tough time in phase 2nd. Yeah, phase 2 grand finals, it's turning out to be a disaster of a start, at least for RRQ. VOIN esports as well. I mean, VOIN esports had a really good run in playoffs and grand finals previously, and playoffs here in phase 2 as well. But here, phase 2 grand finals, it's just not going their way. But here's the thing: we are only done with half of the matches. We still have half of the matches here in the grand finals left, so they can still pick up the pace. 2 days of action left. So make sure you guys subscribe and hit the bell icon, by the way, guys, so you don't miss out on any of the action, right? So we don't want you, scrambling for all the efforts later on. And if you already missed on day 1's action, make sure to follow, 141 Esports Instagram, so you're up to date. Anyways, we do that. We'll take a look at the overall MVP. We have Rage out of nowhere now just popping up and taking the number 1 spot to himself. Rosemary down to 2, Crypto down to 3, Win up to 4. Russell down to 5th position. He was on top. He's now pushed down to 5th position. WARGAYE. This is a great confidence boost, and I'm pretty sure Rage will have the best sleep in days.
I mean, yes, that is going to be the case, and let's just have a look onto the head-to-head of a day, and it's gonna be Boom Yummy versus Alter Ego Rosemary, both of the Indonesian players on the screen right now. The damage has been dealt is more from the side of Alter Ego Rosemary, so +1 for him. Average survival time, it's gonna be Boom Yummy. 5 headshots coming in from the side of Rosemary. 37 throwables were used from the side of Rosemary, and 59 from the side of Yummy 799. So this was a close head-to-head, if you ask me. Indeed, I mean the difference is ridiculous in terms of damage, but in terms of utilities used, Yummy May is much more of a team player when compared to Rosemary at the moment. But daily MVP, I mean, come on, if it's not Flash, then who is it? It's Zeus coming in from the squad of Flash. That is 15 eliminations, 2,836 damage, 5 assists, 19 minutes and 8 seconds of average survival time, 12 knocks and 3 headshots. It has been a ridiculous day for the side of Flash. They are up to 2nd position. They're not on the top, which they would have loved to, but they still have a really good chance to make it there. As we take a look at the fan favorite teams, Flash probably not a fan favorite, but both Tribes and DRS, their fans are always there supporting, cheering, and well, for Tribes, they are at the top. DRS struggling, but I'm pretty sure they will also make it up to the fans moving on forward. That's true. Let's just have a look on the giveaway winner, if I'm not wrong, Edge. And there we have it. Congratulations to that fellow PUBG Mobile player on winning that PUBG Mobile Roll Pass, I mean Elite Roll Pass, that too. And अगर आप लोग यहाँ पर वंडर कर रहे हो कि आप लोग कैसे गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और कितने और गिव अवेज बाकी है, सो जो भी अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, I'm so sorry to say you all कि आज के दिन का ये आखिरी मैच था, सो हमारे पास में और कोई गिव अवेज बाकी नहीं है। बट कल के दिन के अंदर 6 मैचेस रहेंगे, तो कल के दिन के अंदर भी हमारे पास में गिव अवे रहेंगे। एंड गिव अवेज के अंदर पार्टिसिपेट करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ईजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल स्टेप नहीं है। एक लिंक है यहाँ पर आप लोग के जस्ट सामने, सो उस लिंक के ऊपर टैप करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क गिव अवे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में आप लोग रीडायरेक्ट कर ब्राउजर के ऊपर, देयर विल बी एन इमेज, उस इमेज के ऊपर टैप करना, वहां पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद में अपना रियल नेम एंड PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी वहां पर एक बार कमेंट कर देना, एंड दैट्स ऑल। दैट्स हाउ यू जस्ट पार्टिसिपेट विद दीज सिंपल स्टेप्स इन टू द गिव अवे। देखिए अभी आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, बट ये जो गिव अवे के विनर्स है अब हम लोग यहाँ पर कल यहाँ पर निकालेंगे। बट आई गेस वी आर डन विद द डे नाउ। Yeah, and that's exactly why we'll be having more winners for giveaway tomorrow. But it has been in the phase 2 grand finals. We have 2 more days of action left, so make sure you guys come back tomorrow. You know where to find us. My name's Ez, along with Inferno. We'll be seeing you again on day number 3 of the grand finals. Until then, good night, take care, and stay safe.
invincible.
Invincible. Invincible.
invincible.
go.
Invincible. Invincible.
Invincible. Invincible.
invincible.